Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और I hope यार, और rather Belgian जो golden generation, so called golden generation है, वो लोग होप कर रहे हैं कि भाई आज सब लोग देखे उन्हें, because it might be possibly the last time. हाँ, ये भी बोलना चाहूंगा, जो last loss था उनका, I believe that happened after quite a while in the group stages यार. तो you cannot just take it for granted. I know काफी सारी लड़ाई हुई है, but not just that, we have a fellow Canadian here because we have a match Canada का. I know they're already out, लेकिन उदय वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. क्या लग रहा है Thank यार you. भाई, कनाडा होस्टिंग नेक्स्ट टाइम एंड नाउ दैट लास्ट मैच है, विल दे अपसेट मोरक्को या यू आर लाइक नहीं मोरक्को जानी चाहिए, वी डोंट वांट द obvious ones to go as well as Belgium to get knocked out. What are you saying? See, the thing is, I'm actually rooting for Belgium and Uruguay and Canada, all three, because they are in a very critical situation. Obviously, Canada is out anyways, but Belgium and Uruguay, if they win this game and the other opponents lose it, so obviously they're going to get 4 points. So, and I I keep hear you. my guns with the ex-Liverpool legend and the current Liverpool legend, David Nunez and Suarez. So, उस सिलसिले में, I think, हाँ, definitely, I think, I am hoping कि Belgium निकले आगे. या यू नो व्हाट, अगेन यूरुग्वाई का तो देखेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेल्जियम, मतलब यहाँ पुतिन बोल रहे हैं, देखो बेल्जियम गोल्डन जनरेशन और इंग्लैंड जो गोल्डन जनरेशन को अपसेट यू द मोस्ट. भाई ऑनेस्टली मैं अपसेट तो नहीं बोलूंगा, ऑनेस्टली मैं बोलूंगा बिकॉज लाइक यू ऑल नो भाई, मैं नेदरलैंड्स obviously I have a very kind of say support, strong support for Netherlands. England और Belgium रहे काफी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि यार I didn't follow them at all, I follow them quite a bit actually, क्योंकि यार not just Chelsea, I think काफी सारे अच्छे players generally ना have been there in these two teams, so you tend to follow these teams because on paper you're like wow, that is a team and a half. Belgium का not only अभी मैं तो बोलता हूँ, I would argue 2014 2018 में they probably have had even stronger teams. England, they've had from I think after 2000 हमेशा there's been strong teams at all. I'm hardly remembering any England team, but I think जहां पर आप बोलते हैं ना golden generation, हम भूल रहे पुदिन एंड अगेन उदय भी और एवरीवन इन द चैट, भाई बिग अप टू डेरेन भी एब्सोल्युटली यार, सब लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिए जल्दी से, और हाँ डू सब्सक्राइब टू माय पैनल्स चैनल यार, एब्सोल्युटली इट मींस अ लॉट अगर आप करें. इट इज टैग्ड इन द टाइटल, प्लीज करिए, एब्सोल्युटली गुड कंटेंट है. ऑफ कोर्स आई एम होपिंग एवरीवन हैज हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन, हमारा भी. एंड आई नो डेरेन, थैंक्स अ लॉट, स्पेशल शाउट आउट आपको, क्योंकि यार डेरेन हेल्प मी आउट टू लेट मी नो कि यार नोटिफिकेशन आ रही कि नहीं. यूट्यूब भाई बहुत नॉटी हो गया आप लोग आजकल, वार्निंग अलग दे रहे हो जबरदस्ती का, लेकिन ऊपर से मेरा नोटिफिकेशन गायब कर दिए. तो मैंने क्या करा ना, आई रीशेड्यूल्ड इट फ्रॉम 8:10 टू 8:20, और फिर जानबूझ के नोटिफिकेशन लाया आप लोगों को, फिर भी नहीं आया आप लोग. आ जाओ सब लोग, आ जाओ, लाइक कर दीजिए सब लोग. और ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबली द लास्ट टाइम, नॉट जस्ट बेल्जियम, और मैं इसलिए, Yeah. आप देखो टाइटल क्यों है, मेरे ख्याल से क्रोएशिया का भी आर्ग्यूबली उदय, इट इज अ गोल्डन जनरेशन व्हिच माइट नॉट बी देयर इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, राइट? आप देखो, you have a Perisic, you have a Kovacic, you have a Modric. Kovacic probably will be there. Then you have a Brozovic. काफी सारे प्लेयर्स हैं, मतलब I would say that even Kramaric for to some reason, I'm not saying कि यार वो नहीं रहेगा, लेकिन these are guys who have not been there in the top form say other players for their respective clubs, लेकिन as a team they Yeah. perform. So somewhere down the line, I think Croatia being World Cup final last time, do you think they get less hype, or it's just that they reached the final, it was a shock? See, I think hype for both Belgium and Croatia has subsided massively. But the thing with Croatia is they are still playing better than what I saw them, even in the semi-finals that they entered in the World Cup and the finals in the Euros, whatever it was. Usme bhi they weren't consistent enough. In the two games that we've seen, what we've seen of them, what I have made of them is that they've improved massively, and they still are running a lot. Be it a 37-year-old Modric, yeah, Brozovic bhag raha hai, yeah. Obviously Kovacic is anyways, I think he's very mobile as a player. But if you see, Kramaric has been their main talisman. I think he's been making the runs in behind the defense. So usme, obviously he's been, he raised the stakes for Croatia, and Belgium have been just a rusted golden generation. As mentioned by De Bruyne, ki age is probably a factor, but still that doesn't give you an excuse to perform or underperform, right? I Yeah, mean, बिल्कुल. motivation to और
एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला एज का. आई नो वेयर पीपल नो दैट आई हैव अ kind of what do you say that emotional side of me when it comes to the age factor. It always comes out. People know it because I strongly believe the age is just a number, and especially by being a Chelsea fan also, and of course in Milan हम देखते हैं भाई Thiago Silva, Giroud are examples, but by De Bruyne has his thoughts. मतलब honestly, if you actually think about the age now, I know De Bruyne said it, but the reality is Belgium दे आर सीमिंग टू बी ज्यादा मतलब बूढ़े देन व्हाट दे आर एक्चुअली. आप अगर आप केयरफुली देखिए ना, ऑल्डरवेरेल्ड वर्तोंगन एक्चुअली नॉट 13 38 39 40. दे आर नॉट दैट. True, ठीक है, दे आर true. स्टिल इन देयर मिड 30s और लोअर 30s. तो आई थिंक इट्स जस्ट द फैक्ट दैट दे आर अर्ली ब्लूमर्स. आई रिमेंबर वर्तोंगन ऑल्डरवेरेल्ड स्पेशली आयाक्स में काफी ब्लूम हुए थे, और ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी यंग kind of duo, and they kind of came through. Then Alderweireld went to Atletico Madrid. Vertonghen obviously came to English football a lot. तो वहां पर आई थिंक इतना ज्यादा खेले तो लगता है हमें, और प्लस दे आर नॉट इन द टॉप लीग में नहीं खेल रहे आज के. इफ यू कैन आर्ग्यू दैट, राइट? सो मे बी बिकॉज De Bruyne is entitled or feels entitled being Man City fan. Sorry yaar. I think maybe I think he crossed the line. I know he has his point of view which is fine, but मेरे ख्याल से वो crossed the line. And again, आप लोग बोले, सब लोग जो देख रहे हैं, जो लड़ाई हुई ना, हमने कल बात किया था. I don't know if you saw my video by the way. आज दिन में everyone, we did speak to, I think Daksh was there, and Daksh और मैं वही बात कर रहे थे कि जो चकदे में हुआ था ना सीन, कि यार टीम लड़ रही थी आपस में. मैं गुजरात से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं कर्नाटक से हूँ, वहां से. तो वो सब हो रहा था ना, तो यार क्या किया था शाहरुख खान ने? सबको बिठा दिया, और कोई भी यार ऑपोजिशन में जो होता है वो लड़ लिए, तो सब लोग एकजुट हो गए. तो इट इज Yeah, लिटरली लाइक दैट. तो yeah, हो सकता है, जस्ट आई एम जस्ट सेइंग, क्रोएशिया अगर अर्ली ऑन इन द गेम, yeah. हो सकता है दे विल जस्ट एज इन टेस्ट बेल्जियंस नर्व्स, एंड दैट माइट Easily, एक्चुअली I think. एकजुट हो जाए यार बेल्जियम. क्या बोलते हो? Just like you've mentioned, I think aram se if you see the players, I think Alderweireld, Vertonghen, Witsel, and Moiner, these four players need to stay out. They need to deploy younger players. Then they're not given opportunities to other good players from Europe. They should be doing that. Plus, Trossard should have started the first game and also the second game, but he did not. Came on as a sub. That is not justified. So they need to deploy people who will be mobile. Even Eden Hazard couldn't dribble past though two defenders. So in that situation, agar aap dekho, Croatia is definitely much solid as a team, more industrious, and they will cover more ground than Belgium easily, as per the book. But you never know. आज शायद they might be motivated. Roberto Martinez ने उनको गाली दी होगी एक दो ड्रेसिंग रूम में, और ये लोग लौंडे बोल रहे होंगे उसका चलो लोग उसका भी जीते हैं आज. अंतिम वाला हो Let's सकता है win the मैच game. है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक इज गेटिंग द सैक ब्रो, इफ ही इज नॉट काइंड ऑफ गेटिंग दिस टीम For टू द sure, he ग्रुप should स्टेज. get the बट sack. He's a अगेन, very average manager. Average या manager. वही है डिफेंसिवली. इट्स ऑलमोस्ट लाइक, मैं बोलता हूँ लैम्पार्ड टाइप है ना. अटैकिंग वाइज ही डज प्ले गुड फुटबॉल एट टाइम्स, लेकिन डिफेंसिवली वेरी बैड. Defending, हाँ. वी एग्जैक्टली लाइक Many जेरार्ड lapses. लैम्पार्ड थे. तो बट आई डोंट नो यार, क्या बोलोगे यार उदय? प्रेडिक्शन हो जाए यार सब लोग. गोइंग बाय दिस अगेन, हमने डिटेल में बात नहीं किया है क्रोएशिया का, हमने कल बात ही किया था. भाई यू नो दैट ग्वार्डियोला इज समवन दैट आई एम स्काउटिंग because of obvious reasons. Right, right, right. Let's see how it goes. लेकिन अगेन ये जो बंदा है ना स्ट्राइकर लिवाजा, ये भी आई थिंक ही इज क्वाइट गुड एक्चुअली. ही इज क्वाइट Yeah, he शार्प. is. लेकिन मिडफील्ड यार, मतलब उदय, मैं तो बोलता हूँ दे हैव वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड. दे हैव, आई थिंक प्रोबब्ली द बेस्ट मिडफील्ड, मैं तो बोलता हूँ, along with Spain and maybe Germany. I think on paper, I think Brazil बोल सकते हैं, लेकिन I really feel that on paper भाई this is like wow, what a midfield यार, dominating. मतलब क्या स्कोर लाइन बोल बताते थे भाई, स्कोर लाइन उदय का क्या है? Let's go for यार it. मेरा स्कोर लाइन होगा, I'll go with 2-1 Belgium. I think Belgium will make a mark in this game because they have to. See, they are anyways going to 2-1. lose and get out of the competition. तो और कहीं से motivation Wow. मिलनी चाहिए नहीं. It should be a X factor should be going on in their heads is what I feel. यार पब्लिक क्या बोल रही है? पब्लिक क्या बोल रही है? लेट मी नो इन द चैट सब लोग. आई फील दैट इट विल बी क्लोज. आई कैन सी अ ड्रॉ कमिंग. ऑनेस्टली मैं देख रहा हूँ कि यार it is a draw. This is basically the golden generation. People remember the golden generation. Last time probably. Last time for them maybe or maybe not. केविन डी I ब्रुयने don't know. रहेगा, पर 35 साल में भी खेलेगा मेरे साथ. तो डेविड सिल्वा वाला Oh, रोल अच्छा बनेगा अच्छा. उसका. चलो चलो. Okay, so everyone in the chat, let me see. Trossard is playing. Yeah, Trossard. By honestly, it's a matter of them getting the best out of it. By Lukaku, please tell me यार, Lukaku आया क्यों था भाई? भाषण देने आया था वो? समझ में नहीं यार लुकाकू का क्या सीन है यार, मतलब बता दो यार यार लुकाकू. problem ये है कि if you are sitting outside for 6 months, right, inconsistently, you've not been playing for Inter Milan either in Serie A.
So I mean, for the national team, obviously, अगर तुम्हारी knee injury हुई थी, you sustained an injury, तो he's not fully fit, in the moment. तो उसके लिए, I think अभी हमें, he should be rested. And कोई फायदा नहीं है लुकाकू के साथ. एक informed striker चाहिए. Trossard is the one who's been firing 5-6 goals for Brighton. He's already done that this season, so he deserves to be at, starting ahead of them. And also Mertens, I think he's 35 years old, I know, but at least first half तो थोड़ा he's pacey, थोड़ा सा जितना भी इसकी पेस है अभी बच्ची भाई है. डोकू वोकू को भी थे ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना मर्टेंस भाई. चलो Patson ही Doku. वाज अ ग्रेट प्लेयर बट आई थॉट बैचुआई डिडंट डू टू बैडली यार अगेंस्ट कनाडा. इट वाज अ वेरी वेरी नाइस फिनिश. Batshuayi ने एक फिनिश किया बट पर 90 इम्पैक्ट जीरो था उसका. He had very bad touches. Only one single goal is what आई he गेट scored. इट व्हाट इज सेइंग. ओके But yeah, चलो it भाई was poor. देखते हैं. अभी तो इट्स टाइम फॉर देम टू डिलीवर. आई थिंक वही है. बहुत ही आयरॉनिकली है उदय, मैं देख रहा था यहाँ पर इंटरव्यू देख रहा था टीबो कोटवा का. यू लाइक एट द एंड ऑफ द डे वी नो दैट वी आर ऑल वन एंड वी आर गोना परफॉर्म टुगेदर. लाइक ओके Yeah. रियली Mhm. are you guys one? Exactly opposite bro, but You that's Tibo Kotoa for you. As Courtois much as made a he's steal great, at De Bruyne's वो तो शुरू हो girlfriend. गया. So I mean, obviously, that ओके there has to be some एवरीवन controversy. एवरीवन इन द चैट भाई सब लोग लाइक कर दीजिए. डू शेयर द स्ट्रीम इफ पॉसिबल. डू चेक आउट Oh लाउडमाउथ fuck! फुटबॉल Oh टैग्ड है fuck! एज वेल एज. Sorry, sorry. डू लेट मी नो हु आर जॉइनिंग लेट देयर स्कोर प्रेडिक्शंस. और हाँ, स्पोर्ट्स 18 एचडी में आ रहा है कनाडा मोरक्को. एंड भाई स्पोर्ट्स पुल 18 अभी पुल सच कह रहा हूँ. पहले से मारने वाला था एक गोल अभी. क्या चीज. पहले से was about to score a goal, bro. ओके मेरी टीम में दूसरा मैच लगा हुआ था. आई जस्ट चेंज इट नाउ टू क्रोएशिया बेल्जियम. चलो भाई दूसरा मैच मैंने दोनों लगा रखा हूँ. एक टैब लैपटॉप के टैब में लगा रखो, एक टीवी में लगा रखो. ठीक है, तो मैं मोस्टली फोकस करूंगा क्रोएशिया बेल्जियम. यार उदय, आर यू फोकसिंग ऑन कनाडा और आर यू आल्सो I'm on वांटिंग the टू Croatian Belgium only. क्रोएशिया? चलो वही वही मैंने रखते हैं. आई थिंक एवरीवन वांट्स दैट. 2-1 क्रोएशिया विन बोल रहे हैं. मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया है, मैंने बोला ड्रॉ, लेकिन आई थिंक 1-1 यहाँ पे गोल होने वाला लगता है. अरे भाई साहब ये क्या हो गया इतना जल्दी. गोल है, 100% गोल है. दिस शुड बी अ गोल, दिस शुड बी अ गोल. बहुत लेट हो गया यार, Late, बहुत लेट हो गया. very late. टाइम क्या होता है आपकी? मेरी टाइम स्टैम्प आपसे पीछे ही होगी. अभी दिखा नहीं रहा. अभी उसने क्रॉस मारा है अंदर राइट से. टाइम स्टैम्प नहीं दिखा रहा. ओके सो अब वो डालच आया है. मेरा 122 है. Is Dalic on the screen? Yeah, he must be. क्या क्या? अभी he is taking a throw in. I don't have the या time. एग्जैक्टली. 120, 130 हुआ है अब मेरा. हाँ तो जस्ट अबाउट 5 seconds No पीछे हो. problem, no कोई नहीं. problem. That's what a start for Croatia. यार इट्स अबाउट बेल्जियम यू नो. अभी यार क्रोएशिया थोड़ा अटैक मतलब टैकल वैकल नहीं किया ना. अभी तो टैकल होगा, फिर बेल्जियम की टीम सडन से एकजुट हो जाएगी. चक दे इंडिया यार बेल्जियम को. आज है ना टीम टॉक नहीं होगा. आज हुआ होगा कि दे वुड हैव शोन चक दे टू द टीम. बाय द वे बेल्जियम की हॉकी टीम काफी अच्छी है. तो वही हम बात करते कल दक्ष से. बट एवरीवन यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं आज. क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ना. लेट मी जस्ट, कल हमने डिस्कस किया था डिटेल में बाय द वे कल रात को, और मेरे वीडियो में भी. लेकिन लेट मी जस्ट पुल इट अप फॉर पीपल What हु a माइट link हैव up मिस्ड play इट. यार. क्या लिंक अप प्ले था भाई. या दैट इज व्हाट यू हैव. De Bruyne ने With ऑर्केस्ट्रेट किया वो. एक सेकंड, लेट मी जस्ट भाई पीपल एवरीवन इन द चैट ये देखिए. दिस इज व्हाट वी आर सीइंग यहाँ पर. ठीक है, तो वी आर इन ग्रुप एफ. ऑफ कोर्स आज रात को ग्रुप ई भी होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग. लेकिन क्रोएशिया अगर वो लोग बेसिकली गेट अ ड्रॉ, दे आर स्टिल ऑन टॉप प्रोवाइडेड दैट मोरक्को डजंट गेट द विन ओवर कनाडा. ठीक है, वेयर एज ऑन द अदर हैंड ये हो गया जो बेसिकली अगर बेल्जियम सरप्राइजेस क्रोएशिया they win. सरप्राइज क्या है बोलेंगे यार, बेल्जियम रैंक टू इन द वर्ल्ड. सरप्राइज बोल रहा हूँ, आई नो. बट if they get a win, they go to 6 points all of a sudden. Croatia are on 4 points, and then Morocco can afford a draw and they are second. And remember people, Right. भाई Morocco एक मैं बोलना चाहूंगा everyone watching the other game यार, by chance follow कर रहे हो ना सब लोग. MJ in the house, nice. SG2 लो क्वालिटी, हाँ यार क्या कर सकते हैं. लेकिन मोरक्को का मैं बोलता हूँ ना, अगर मोरक्को पीछे जाती है ना कनाडा से, आई डोंट थिंक दे हैव वन अ वर्ल्ड कप मैच आफ्टर गोइंग बिहाइंड. आई वाज रीडिंग. राइट. या एवर, सो दैट्स ब्रदर इंटरेस्टिंग. लाइक मैं आपको एक बात बोलता हूँ. देखो कनाडा 1 पॉइंट पे है, जर्मनी 1 पॉइंट पे है, बट इन दोनों टीम्स ने सबसे ज्यादा अटैकिंग डिस्प्ले दिखाया है, और तब भी इनको रिजल्ट मिला नहीं. तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप भाई उदय आपका बैस फिल्टर ऑन है क्या? नहीं.
और फिर नहीं यार, आई थिंक नेचुरल एमशे, आई थिंक गूंज रहा है क्या आवाज एमशे? कैन यू जस्ट गिव मी द फीडबैक, बिकॉज बास फॉर मी इट सीम्स ओके। फिल्टर बास फिल्टर क्या होता है? ओ अच्छा, दिस वाज जस्ट मतलब मजाक कर रहे हैं एमशे, ओके गॉट इट। अच्छा आपका ये एक्स्ट्रा बास इफेक्ट आता है ना साउंड में, अमिताभ बच्चन टाइप्स। फिल्टर, वही ना फिर, शायद मैं उसी का बेटा हूँ, क्या पता। गुड वन, मतलब दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट आई गेस। तो या नो वरीज। एग्जैक्टली, मेंटेन बुदिन इज गुड। आल्सो विश आई हैड दैट वॉइस। ये हमेशा दिखता है जब भी उदय आते तो ये भाई आप बढ़िया मैं है। आपके स्ट्रीम में आता हूँ ना, हमेशा होता है ब्रदर। हाँ ये भी होता है ना, मेरा वॉइस बहुत अलग है, मे बी दैट्स व्हाई इट स्टैंड्स आउट, बट यार वी इट्स नीड ग्रेट यार, मसाला ऑल्सो। एब्सोल्युटली। ओके सो यहाँ पर देखो, भाई मोरक्को ने स्कोर कर दिया क्या? पता नहीं, ये क्या हो गया? कर दिया। मोरक्को has scored people. ओ माय गॉड। मोरक्को हैज स्कोर्ड। कनाडा यार, कम ऑन यार, नेक्स्ट टाइम नाउ आई एम होस्ट कर रहे हैं। टेम्पटेड टू वॉच दैट गेम जियश, टू बी ऑनेस्ट। हकीम जियश द मैजिशियन यार, वाओ, मैजिशियन कैसे स्कोर्स। मारे गोल? कहाँ से मारा, राइट से? पता नहीं यार, मैं अभी रिप्ले मिस कर दिया मैं। अच्छा। दूसरा वाला लगा हुआ था मेरा भी मैच। देखते हैं, अभी रिप्लाई आएगा। इस गेम में अभी तक 19 गोल फॉर बेल्जियम वैसे मोरक्को। दे रही है। बेल्जियम इज ट्राइंग टू कीप पोजेशन, दे आर एक्चुअली वेरी एनर्जेटिक इन द गेम टिल नाउ, सो आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड कि चलो स्टार्ट तो अच्छा रहा है बेल्जियम नहीं तो का। वही ना, बेल्जियम एक्चुअली वही वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन किया पहले 3-4 मिनट के लिए, देन आई हम्म। थिंक एंड दे हैव दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स राइट। या फॉर How श्योर। much do you rate? How much do you guys rate Yannick Carrasco? I'll ask Uday first. Uday, क्लब लेवल आई वुड रेट हिम 7.5 आउट ऑफ 10। नेशनल लेवल इन दिस वर्ल्ड कप, इफ यू आस्क मी, उसकी परफॉर्मेंस तो 5.5 रही है, बट he has enough to punch till 7.5 in this also. But ये ना, you have such a narrow scope of performing in the World Cup. इतने कम फिक्चर्स हैं खेलने के लिए। 2 मैच में क्या yeah. असेस किया जाता है? लीग में लोग 10-10 गेम हारती है मेरी टीम जैसे लिवरपूल। सो you need to give some leeway to these people. Mhm. अरे बिल्कुल ठीक है यार, अभी बिल्कुल ठीक तो नहीं बोलूंगा, मतलब दैट इज द, क्या बोलते हैं, मतलब यू नीड टू कीप दैट स्पिरिट अनोनिमस, दैट्स व्हाट आई वुड से। आई हैव द बैंडेजेस ऑन, आई एम ऑन मेडिकेशन एंड आई एम डेफिनेटली हैव दैट लेग ब्रेस ऑन। 2 हफ्ते तक रहेगा यार, ऐसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत इसलिए मैं ना, आई एम नॉट डूइंग लाइक 3 लाइव स्ट्रीम्स अ डे नहीं कर रहा हूँ जैसे व्हाट आई यूज्ड टू डू इन द पास्ट। आई एम जस्ट हम्म। डूइंग वन एंड एक वीडियो निकाल रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग फॉर द टाइमिंग, but राइट। hopefully that is great as well. Arey, Nathan in the house, hope you're feeling better. Nathan, better for sure. Along with you guys, even better. Nathan, as always, if you are free, just let me know, bro. I have my phone back, by the way, Nathan. You can definitely message me. I'm available on my DMs on Insta as well. Timestamp is 6:46, 6:47, 6:48. Andy, nice to see you as well. I'm sure, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन people हकीम जी है शब, आई डोंट नो, ये बात हम कर चुके हैं पहले, आई नो, लेकिन काफी टाइम हो गया उदय को आए हुए, but उदय, Hakim जब Ziyech, man, as in the guy was awesome in Ajax, and you can see in Morocco भी he kind of balls यार, मतलब पता नहीं, is it Hakimi making him work, क्योंकि you have a overlap who's more attacking, लेकिन जब अगेन चेल्सी में भी रीस जेम्स है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी इंजर्ड है, नो, बट what do you think, is this just a formation or just a free role that he wants like Nozil, क्या है? see, the problem is the system that Chelsea follows is all about pace on the flanks. Every player who has played for Chelsea, Shevchenko और Malouda, ये सब, इन सब में पेस थी। अब इसमें पेस है नहीं बंदे में, बट दे वांटेड हिम टू ब्रिंग सम क्रिएटिव इंडेक्स, जैसे टुकेल गिव हिम लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट ही हैज ओनली क्रॉसेस इन हिम, ही हैज ओनली प्रिसिशन इन हिम, ही डजंट हैव दैट स्प्रिंट और ये टू ओवरलैप एंड ऑल दैट स्टफ। प्लस ही इज नॉट अ पर 90। इन माय ओपिनियन ही डू बेटर एज अ इम्पैक्ट सब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि चेल्सी में उसका फॉर्म खराब हो चुका है। आयाक्स में ही वाज ऑन अनदर लेवल बिकॉज टेन हाग ने उसको डिप्लॉय किया होता सिस्टम में। So I think, yeah, obviously, Bichara, I mean, he's unlucky that he's not able to, he wasn't able to make a mark. नहीं नहीं, I hear you, मतलब you know who he reminds me of, like basically a person who's basically, he does well for the national team but not does well for the club. It's almost like I would say, in a strange way, I know it was for a short while, lekin Daniel Sturridge, being a Liverpool fan, you will say that Daniel Sturridge actually was a great player. Problem in Chelsea was, जो आप बोल रहे हो ना impact player, Chelsea tried to use him as that. I know he's a different player, was a striker, but left-footed striker at that, right? तो the guy, मतलब जब भी बॉल मिलती थी, उससे शूट, he was so anxious, चेल्सी में। लेकिन Hmm. वही चीज आप देखते थे एज अ यूथ इंटरनेशनल, जब वो था मैन सिटी में और लेटर ऑन लिवरपूल, he was far better. Not that he was bad in Chelsea, but I'm just saying he was there actually. By people forget, Daniel Sturridge was actually into 2012,
Champions League winning squad of Chelsea. People don't know Yeah. that. A lot of the trivia question हो सकता है. He was actually there. Watch Chelsea players forget football when they enter the United Kingdom. Oh, that's a Chelsea thing, yeah. But anyway, we'll keep it to See, Belgium, Croatia we for have now. a loudmouth Pandit Advait. He's in the chat. Could you highlight his comment? Advait, how are Yeah. you, bro? So, I mean, yeah, bro. Abhi tak to Belgium is still, like they're keeping on possession on the ball. So I think let's see what happens. I mean, Yeah, Addy is also Belgium supporter. So okay, interesting. हाँ मतलब बोलना चाह मतलब तो उदय you support Belgium is right? yeah, I support Belgium, Uruguay, wherever I have my, Liverpool boys and हाँ, so Belgium. basically I've you been have a soft supporting them for corner a long for time. Belgium See, and Uruguay. just Good in support. just in India aega, when India comes on the map, right? I think that is the time we'll be supporting our own nation. But as of now, Yeah. it's just a moral support sort of a thing हाँ which we are मतलब मेरा providing, तो right? नेदरलैंड्स था और इट्स मोर लाइक इंडिया ऑब्वियसली लेकिन इंग्लैंड बिकॉज वी आर ईपीएल फैंस वी फॉलो फॉर सो लॉन्ग हमेशा बहुत ज्यादा क्लोजली फॉलो किया है तो आई एम लाइक आई एटलीस्ट फॉलो देम इफ नॉट सपोर्ट देम बट हाँ नेदरलैंड्स डेफिनेटली और कनाडा इस बार थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था बट डिसअपॉइंटेड यार विद द डिफेंस बिकॉज No, I've ऑब्वियसली been प्लेइंग pretty happy यूरोपियन with प्लेयर्स Canada's performances, to be honest. जो भी है, at least they play open, हाँ free football, like मतलब पीपल हैव बीन इम्प्रेस्ड दे आर नॉट let them play raw football. They are going to host next year. At least they'll be better hosts than Qatar, for sure. अनिकेत का बहुत अच्छा पॉइंट है यार जियेश इज एक्चुअली हेल्पिंग चेल्सी इन अ वे दैट हिज प्राइस विल गो अप फेयर इनफ और I फिर don't think so. Price नहीं ऊपर जाएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं जाएगा, क्योंकि जब अगर तक अगर उसको मोरक्को करती है ना कुछ बवाल नेक्स्ट राउंड में एज थिंग्स स्टैंड दे आर गोइंग राइट सो यू नेवर नो नॉकआउट्स में अरे गोल होने वाला है कम ऑन दैट शुड बी अ गोल यार Monda. दैट शुड बी अ गोल नो वे दैट बेल्जियम मिस दैट कम ऑन ब्रो करास्को यार मतलब मैं एक्चुअली रेट करता So हूँ at least you क्वेश्चन got a आता है ना corner. पहले Come Yeah, on. he's got a corner, but I actually rate the guy. The guy's work rate is underrated. सच में बोलूं, Carrasco's work rate is underrated. It's not easy यार. मतलब he कैसे मैं And बोलूं? it's an offside. He's like a thankless job करता है. He's like a villain on the left flank, if I may say so. Yeah. So and Willian was one of my favorite players, and yes, people might be surprised with that. Like he was one of my favorite players in his prime, of course. Not talking about in the Arsenal days. I'm pretty sure. Belgium Yeah, jersey sleeve looks. but that was quite a narrow angle. I think goalkeeper did a good job. हाँ काफी अच्छा था shot stopping. वही है लेकिन एट द सेम टाइम ही वुड बी डिसअपॉइंटेड टू बी बीटन एट नियर पोस्ट वाला चीज है ना तो फेयर इनफ बेल्जियम जर्सी ये हॉट व्हील्स इंद्रानील मैं यही सोच रहा था एक्चुअली भाई आज मैं थंबनेल बना रहा था मैं बोला यार ये फोटो यार नई वाली तो नहीं लगी फिर मैं नई वाली यार तो हॉट व्हील्स वाला सच में एक्चुअली यार इट इज लाइक दैट मैं सोचा इज इट अ एक्चुअल ऑफिशियल जर्सी और इज द ट्रेडिंग जर्सी लेकिन आई डोंट नो मैन उदय आई एक्चुअली लाइक द जर्सीज यार इस बार काफी अच्छे टीम्स के डिजाइन अच्छे My हुए favorite is Cameroon's the blue jersey that they have. It looks like some a tribe from Wakanda or something like that. It's symbolic of the African culture. So I think या अच्छा बाय द वे सब लोग भी देख रहे हैं ना आई डोंट नो इफ यू गाइस नोटिस यार देयर इज बेसिकली अ पोस्ट दैट आई मेड ऑन इंस्टाग्राम सब लोग ने नोटिस किया है तो अभी कर लीजिए मैं यहाँ पे दिखाने भी वाला हूँ क्विक शॉट आउट देने वाला हूँ दिस इज बेसिकली स्पोर्ट्स हब एंड इन कोलैबोरेशन विद देम वी आर गेटिंग और मैंने प्रॉमिस किया था आई एम कीपिंग माय प्रॉमिस पीपल एक गिव अवे हाँ वी डिड हैव अ स्पॉन्सर रिसेंटली व्हिच इज स्टिल अ स्पॉन्सर वहां पर यू आर हैविंग अ डिफरेंट प्रोसीजर वो एक डिफरेंट कंपटीशन है वहां पर यू विल गेट एन एक्स्ट्रा जर्सी बट यहाँ पर यूल गेट एन एब्सोल्युटली फ्री जर्सी व्हिच इज अ गिव अवे ठीक है द डिफरेंस तो हाँ लेकिन अगेन यहाँ पर एक प्रेडिक्टर कॉन्टेस्ट है सिंपल एज दैट तो भाई सिंपल है यू नीड टू गो टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी इंस्टाग्राम अकाउंट ठीक है वहां पर मेरा पोस्ट no. देखिए ये वाला यहाँ पर एक गोल आने वाला है बेल्जियम का लेकिन Come छक्का मार on. दिया यार मर्टन्स ने Come व्हाट on. रबिश इज दैट Oh, what the fuck, bro? What the दैट fuck? शुड This हैव was बीन he दैट pulled a शुड हैव बीन अ Darwin गोल Nunes. मैन दैट He शुड हैव pulled बीन अ a गोल Darwin Nunes. राइट तो या एवरीवन वाचिंग भाई ये है तो याद रखिएगा और अगेन इफ यू कैन लाइक शेयर एंड Good सब्सक्राइब counter न्यू attack. पीपल कम लेट मी टेल यू अगेन इट इज एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली फ्री नो कॉस्ट नो प्रोसेस एट ऑल व्हाट यू हैव टू डू जाके इंस्टाग्राम फॉलो करो ये एक पोस्ट को लाइक करो इस पोस्ट को बेसिकली आपकी स्टोरी में डालो और अपने प्रेडिक्शंस बताओ और कुछ नहीं आपको करना है सिंपल एज दैट आई हैव माई सेल्फ पुट इट एज वेल लेट मी जस्ट शो व्हाट आई हैव पुट लेट मी सी इफ आई कैन हाईलाइट माय ओन कर सकते हैं ना अपना हाईलाइट कर सकते हैं शायद तो मैं यहाँ पे एक सेकंड दिखाता हूँ आप लोगों को भाई दिस इज व्हाट आई हैव पुट देखिए तो आप जब स्टोरी डालोगे ना
ये पोस्ट का बेसिकली सेकंड पिक है, 2 ही पिक है, तो सेकंड पिक इज योर प्रेडिक्शन, हु इज द विनर, हु इज द रनर अप एंड who's coming third. तो आप sports_hub.in एंड ऑलमाइटी ब्लूज एफसी ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम को टैग कर दीजिए, तो दैट everyone who's valid. I think this is only for people in India, but again आप अगर करना चाहते हो participate, definitely do, at least for the prediction. If not, everyone in India they are eligible for getting a prize. Or by the way, when I say everyone, obviously all the correct predictions will go into a draw and the winner gets one. ठीक है, that's how it is. So I hope that is a great news for everyone expecting a giveaway. और यहाँ पर क्रोएशिया का एक फ्री किक है यार उदय, that was, is it a penalty? Good Penalty यार, मिल गई, नहीं, why is it a penalty man? पेनल्टी अरे यार, come पेनल्टी on यार, पेनल्टी भाई, bullshit bro, ये क्या हो bullshit गया, fucking क्रामारिच विनिंग अ पेनल्टी. this is bullshit. And he was clearing the ball यार, मतलब वो बीच में है, he is the one who actually came in front. Fuck off, I'm sorry. लेकिन कल वाले डिस्टेंस से तो बेटर ही होगा. अरे रुको यार, एक मिनट देखने दो क्या सीन है. ऑफसाइड है भाई, fucking he's also offside. फर्स्ट आई थिंक What इट the वाज hell? ऑफसाइड, या यू आर राइट, इट बी This प्रॉब्ली. fucking, and it's not his fault man, उसका मतलब he did stamp the foot, लेकिन the reason he's नहीं given a यार, penalty, this is a VR will dive not man. Look, overturn unless it's an offside. Offside exaggeration. नहीं लग रही यार. क्या यार भाई, what is happening? Easy chance था, Carrasco should have scored. Yeah, exactly. Story behind Loudmouth channel name quite unique. ये पेनल्टी की बात समझाएंगे आपको बिल्कुल. भाई पेनल्टी है, एंड मॉड्रिच अगेंस्ट कोटुआ. भाई द कोटुआ जो बोला था, at the end of the day we are all one and we know what we Bro, can do. So एक that is what मिनट, Mr. don't Kotua kill the said. moment for me अभी. Just don't tell me okay क्या होता है, बस देखने दो मुझे. Okay, so let's hold on people. भाई सब लोग, आप लोग ये बताइए कहाँ देख रहे हो. मैं तो टीवी में देख रहा हूँ, स्पोर्ट्स 18. जियो सिनेमा में शायद बेटर हो गया एवरीवन चैट क्वालिटी, मेरा तो बेटर हो गया, लेकिन देखते हैं. ऑफसाइड, रिमेंबर वैन डाइक एंड एवर्टन गोली एलओएल. हाँ मतलब नेकेड है, इससे तो मुझे लगा था ऑफसाइड. It's वीआर not चेक a, कर रही है, भाई it's वीआर not अभी a तक चेक कर penalty. रही है, जस्ट Fuck. टू लेट यू नो. That was a fucking dive man, fucking clear dive. हाँ लेकिन यार कोई भी स्ट्राइकर करता, और टेक्निकली ही डिड स्टैम्प द फुट ना, ऐसा नहीं है कि जस्ट टच किया. चलो देखते हैं, अगर मैसी होता दे देता है कल जैसे या कंट्रोवर्शियल पीपल. अरे देख रहे भाई, देख रहे हैं, ये तो बता सकते हैं. ही इज वॉचिंग मिस्टर एंटनी टेलर, दी एंथनी टेलर इज लुकिंग एट द स्क्रीन. तो देखते हैं क्या होता है. बट उत्कर्ष पूछ रहे, कैन समवन प्लीज एक्सप्लेन हाउ बेल्जियम इज नंबर 1 नंबर 2 सिंस एजेस. भाई बेल्जियम एक्चुअली आप देखो ना, व्हेन इट कम्स टू क्वालिफायर्स, व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडलीज, व्हेन इट कम्स टू नेशंस लीग, their record has ऑफसाइड, been pretty impressive. They are always fucking there in the group, idiots. first or second. But apart from that, मेजर टूर्नामेंट्स में हकते, तो क्या होता है ना, बिकॉज मेजर टूर्नामेंट्स में एट द एंड ऑफ द डे, देखो आप ध्यान से उत्कर्ष, दैट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस, हाँ रैंकिंग सिस्टम गलत है, वो मैं अग्री करता हूँ, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस में वर्ल्ड कप कंप्राइजेस व्हाट 7 मैचेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4-7 मैचेस या यार मैक्सिमम. तो वेयर एज द नंबर 1 क्वालिफायर्स और 2 में, मैं आंसर करता हूँ आपको, एक बात बताता हूँ. देखो मेजर टूर्नामेंट्स में बेल्जियम हैज बीन इन क्वार्टर फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स. देयर एक्सजी, चेक देयर चांस क्रिएशन आउट, इट इज at a very high rate. They're in top 2 chance creation, amongst teams ऑफसाइड. in the world ranking. ऑफसाइड So भाई, Uday was right, and yes, fuck Uday man, this is is nahi, happy that about foul it. was also not a foul man. That was nothing. It was uske he हाँ that was मतलब आई basically a अग्री विद defensive दैट, action. लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे एवरी स्ट्राइकर वुड हैव डन द सेम थिंग. हाँ मतलब अगर वो नहीं, if he wouldn't have dived तो वो नहीं देता penalty. तो it's just अरे that he मॉडरिच played कोच well. इज बहुत नाखुश है इससे. भाई दिस इज, डज इट चेंज थिंग्स, आई डोंट नो. पेनल्टी disallowed, yes absolutely Good. संजय. Anthony Taylor greatest Chelsea man, no way. No See, way, far from it. I'll tell you, the moral support is also coming from Ankit because he is a fan of Courtois. So that has to work in Belgium's favor. ठीक है? Oh, So I hear you, I hear you. Oh my God, a fan of Courtois. As much as yeah, I rate him as a goalkeeper, but fan, okay, nowhere close. Anyway, but I must say, यार, I'm envious about him being in Real Madrid. वो तो बोलना चाहूंगा yeah. मैं. Because the guy is actually good in terms of his, I know last match में हुआ था एक जो he missed that free kick, but that Yeah. happens यार, come on, that happens with all seriousness. But I don't know यार, मतलब देखते क्या सीन चल रहा है, वही चल रहा है ना, साथ साथ में मैचेस, तो मजा आता है कभी कभी. Yeah. This is what we are talking यार people. भाई मोरक्को
as things stand, are going through as group toppers. I know it's Come on, very early Canada. days. I think all And Canadians are watching the game. It's 7:19 a.m. in the morning यहाँ पे. So mhm, kudos to every Canadian in the chat if there are Canadians in the chat. या और हम लोग खाली 3:18 AM तक देखते हैं. Mhm. लेकिन आई रिमेम्बर दोज आर इक्वली टफ यार, स्पेशली व्हेन यू आर एट वर्क ना. मुझे याद है यार, इट वाज रियली डिफिकल्ट Fuck, bro. Exactly, I द have to चैंपियंस लीग go to मैचेस. work at 1 p.m., bro. I sleep for 2-3 hours every day. This is my story every day. Same here. First half again, 7 to 8 minutes will be added hopefully. They'll let's see यार, अभी देखते हैं. By the way, Morocco अगर say whoever wins Group F, right? So they will Yeah. potentially meet Germany or Japan. I feel. I know Spain अभी तक हुई नहीं है. लेकिन आपका क्या prediction है यार? ग्रुप ई में क्या prediction है यार, उदय? देखो, I स्पेन. think if Japan defeat Spain, which I don't think is possible, I think Spain will go through in that group. But I feel Germany deserves to go through, man. Ek, they've scored 2 goals, they've conceded 3, I understand, but they've just been unlucky. Musiala has had such a tremendous performance near the final third. He's created a lot, but they couldn't finish it. They are missing Timo Werner out of the system. They need someone who's a traditional striker. Havertz wasn't working well in the role. Mueller has been, again, he's been shitting at that role as well. So I think it's just that they are lacking that final delivery and that final touch. So either Gundogan and Kimmich and Musiala were running riot in the second half always, even against Spain, man. Creativity index, which was more towards was more inclined towards Germany, you know. So ओके ओके भाई, अगेन Spain भाई में जो भी भी यही देख लगता है रहा मुझे. है. स्पेन में भी यही है. मोराटा इज कैन बी अ गुड फिनिशर, बन गया वो गुड फिनिशर, बट ही इज नॉट अगेन इम्पैक्ट नहीं है उसका. जैसे आई थिंक people are नहीं, missing people like थोड़ा Suarez सा and मतलब he looked more confident, let me put it this way, yeah. whenever he comes on. ओ माय गॉड. मतलब आई नो बारसा वाला बाय मारा तो चलते ही रहता है यार, लेकिन ऑनेस्टली, इन ऑल ऑनेस्टी, पीपल फॉरगेट यार, लास्ट चांस है. आई नो द गोट्स, लेकिन काफी लोगों का लास्ट चांस है. हार्ड फॉर मी इज अ बायन फैन, बट मुलर शुड बी ड्रॉप्ड और ओनली प्ले कैम. उत्कर्ष, Not even Cam, आई थिंक bro. फुलक्रुग हैज टू बी द Fulkrug has आंसर. to start. Yeah, but Who's I that? doubt if he can play for well for 90 minutes. I asked Advait, he says he can because he follows him. I can't hear But you there. What did you say? Who should start? Fulkrug, हाँ, exactly. Fulkrug is definitely. I think Miroslav Klose has come out and said, that he's more of a natural striker. When we need a must-win situation, you need to play a natural striker. Simple as that. I think it makes sense there. Absolutely. yeah. उत्कर्ष, मैंने देखा था आपको कमेंट. भाई हजार बहुत ही मजाकिया इंसान है यार. कम ऑन, भावना को समझो यार. लेकिन आई नो यू शुडंट हैव डन दैट मे बी. बट यार अगेन, बेल्जियम, could they kind of change something अगर नहीं मिलता है say a goal? And remember people, Belgium, if I'm not wrong, you would say Uday that Belgium needs to win this game, right? As in They have for to. them to come. And it looks like this might be a snooze fest. But you never know. एक दो गोल, मैं No, वही कह that's रहा था, what I'm saying. single That goal margin होगा. they cannot It'll let it be a snooze fest, yeah. Because Croatia have that thing that they have a lot of firepower and they can score that one goal. So if they are true. taking so much risk, I think it's not fair. And Roberto Martinez, I think he's not that kind of a manager anyway. So But you know, they yeah. have a lot of people on the bench. I would like to name here Charles D. Kettler, Michi Batshuayi, Eden Hazard, of course, Romelu Lukaku is still there. Jeremy Doku in this World Cup, I think he has not been seen much. So I think I know he's not lit the Yeah, he's not flames in or form something, but either. So. फिर But the भी thing यार is, बनता है. this every game has been a tale of two halves. First half has been very boring for all teams. Second half has been explosive. But I still feel दोनों टीम्स ने ड्रॉ भी किया है. इन्होंने एक क्रोएशिया ड्रू देयर फर्स्ट गेम. They were okay in that game, but second game was bombastic. So yeah, 4-1 they won against Canada. But they really haven't played against tougher oppositions, right? हमें वो भी देखना पड़ेगा. They've played against Morocco, they've played against Canada, and now they're playing against an out of form Belgium. They need to face people like France, so Germans, like good teams. Even Senegal are a brilliant team without Mane. They're doing so well. So Yeah, Senegal, to be very honest, people, while Mane obviously the talisman, मैं तो बोलता हूँ even in the African nations, if you watch now, people like they were not a high scoring team as such, right? So they always had that
as in the team spirit going, that well knit team जैसे perform करती थी, just like maybe in a strange way like Croatia does, you know, over the years. So I think कहीं ना कहीं मुझे लगता है Senegal it'll not be easy यार for England, but again भाई जो भी देख रहे हैं ना, again do not forget to hit that like button. It means a lot. अगर आप share करो और definitely follow our panel as well यार. It is tagged in the title as well as हमारे दोनों channels. और अगेन मैं बोल रहा हूँ यार, मैंने पोस्ट शायद गलत समय पर कर दिया. मैं पोस्ट किया था 1 घंटे पहले मैच के. मैं सोचा था मे बी पीपल बी ऑनलाइन, बट प्रॉब्ली आई रीपोस्टेड. लेकिन हैविंग सेड दैट, मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया यार. भाई सब लोग 6 महीने से पूछ रहे हैं गिव अवे फाइनली गिव अवे लाया हूँ. एंड दिस इज अ प्रॉपर गिव अवे, जस्ट एक प्रॉपर गिव अवे. इट्स ऑब्वियसली जैसे गिव अवेज होते हैं, इट इज अ लकी ड्रॉ, यस, बट ओनली फॉर दोज हु प्रेडिक्ट राइटली. तो डू चेक आउट माय इंस्टाग्राम पोस्ट ऑन ऑलमैटिक ब्लूज एफसी. आपको खाली एक स्टोरी डालना है, मुझे टैग करना है, sportshub.in को टैग करना है, एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर अ फ्री जर्सी ऑफ योर चॉइस. तो और हाँ, हैविंग सेड दैट, जो आप पीछे देख रहे हो नेदरलैंड्स का जर्सी, उनसे ही है यार, sportshub.in से ही है. बहुत अच्छा क्वालिटी है, ट्रस्ट मी ऑन दैट. मैंने पहना भी था नेदरलैंड्स गेम में, एंड मे बी इसलिए जीती नेदरलैंड्स, हु नोस. बेल्जियम ड्रेसिंग रूम यार, अगेन लॉट ऑफ स्टोरीज. उत्कर्ष शमशा यार, क्या सच है क्या नहीं है पता नहीं है, बट हैंसी फ्लिक यार, उदय क्या बोलते हो यार? मतलब आई डोंट थिंक इज गेटिंग सैक्ड either ways. I know Belgium, sorry, Germany is anyway. I think they have that team to beat Costa Rica for sure on paper, just about at least. But Hansi Flick either ways, क्या लगता है? मतलब is he really in that pressure to get sacked? No, I don't think I mean, the authorities will sack a manager because Germany is known to retain their managers. He is definitely a proven manager. Look at the way he ran riot with Bayern Munich. So I think he's Given a proven time, yeah, manager. given time, he's that kind of a manager who needs to instill that philosophy. Why would you sack a manager who's been creating so many chances for the team? They're not scoring doesn't mean that they're not playing well as a team, you know. So you cannot just say that, oh, Yeah. let's sack And them. even Japan game maybe, I know, like, to be honest, even Nations League was इतना अच्छा नहीं किए थे, but you're right, as in they do create a lot of chances. क्योंकि मुझे याद है there was a game 3-3 against England quite recently. वहां पर they took their chances for a change, and वो दिख रहा था. जापान के गेम में first 60 minutes they dominated. People forget that, right? Yeah. They really dominated. गुंडोगन बहुत अच्छा पॉइंट है इंद्रानील का. प्रॉब्लम यहाँ पर ये है ना, I would not say just गुंडोगन. He takes off Gundogan and Muller at the same time. He should take one or the other. I think first match में उसको निकाल दिया था जल्दी क्योंकि he wasn't being that you know, he added a lot of pressure. He did definitely. He was becoming a hybrid 8 as well. वैसे he was playing in a 6. But now in the second game, again, he played really well, right? In the second half against Spain. In the last 30 minutes, Germany were dominating that game. So I think, yeah, it's just that obviously you need freshness, you need fresh legs in the game, you need more mobility. So obviously that substitution was made. Yep. Okay, so यहाँ पर let me just send out a quick tweet as well. Okay, Uday, if you can just, I don't know if you have, did I tag you on? Yes, people, I've just dropped a tweet as well. If you can just retweet people, it'll be brilliant. We'll have more people. I'll ज़्यादा go मजा right आएगा. away. So let's do that. I've just tagged you, I guess. That's brilliant. So I don't know, yaar, Munir. मतलब, do you think Castania is a better player or Munir? I think Munir is attacking wise better, right? That's why maybe that he's playing. Both are at the same level right now. I think Munir has losses. He's regressing from his peak. नीचे जा रहा है वो. And Castania भी मतलब age काफी हो गई है, but he's still a very fluidic player. I like Castania better than Munir personally. Actually, yeah, Castania is like. Or by the way, people would remember, yeah, Castania last Euros में I think he got badly injured. So somewhere down the line, he had something pending, you know. So I don't know. I'm surprised that it's Munir that has been picked and Carrasco along with that. I didn't understand that partly थे. Canada play exciting, but they need someone to score like Kane or Leva. यार on loan ले नहीं सकते ना country में. You have to change your nationality. That's the only thing that one has to do. But उसको निकाल दिया David. क्या नाम है? David उसका नाम. I don't know why they didn't feature him. He's a good Jonathan player. I don't know David. why they're not playing with him. I think it's about them building for the next World Cup and trying things, and along with यार जो 2 game में नहीं चला है, it's about form as well. Like how Lautaro didn't start for Argentina. Put it that way. True, but he added pressure. I think so. You know, they और कोई better option है नहीं मेरे हिसाब से. Just the personal opinion. हाँ, with Canada you can say that. लेकिन वो ये ना, lot of unknown commodities यार Canada में, like you never know what comes out, and they are just trying. Honestly, I think Canada का main issue is not the
striking. They don't finish as good as what they probably can do or should do. लेकिन मैं बोलता हूँ डिफेंस इज एक्चुअली द मेजर कंसर्न. डिफेंस यार, टोमोरी नॉट पिकिंग कनाडा इज अ कंसर्न. he could have been eligible to be playing for Canada. तो अब देखो ना, मोइनर ने क्या फालतू पास दिया है. What is he doing? Right, so that's why I don't like Thomas Moiner that much. He was such a brilliant player 4 or 5 years back. Look at him now. But anyway, I agree with you on that point that you made about Canada. I think, yeah, they're just raw as a team right now. They just need to practice what they preach, right? So या चार्ल्स डी केटलर यार, आप तो जानते हो एसी मिलान में मैं बहुत गुण गाता हूँ उसका. प्रॉब्लम ये है कि ही इज नॉट द फिनिश्ड आर्टिकल. ही इज एन इंप्रूविंग प्लेयर. ही हैज लॉट ऑफ स्किल्स. आई थिंक ही नीड्स टू मसल अप थोड़ा बहुत. आई थिंक दैट्स समथिंग दैट ही रियली नीड्स. I'm very disappointed that, yeah, I agree with you on that. Totally. But I'm really disappointed कि Australia. I mean, okay, they were very rigorous and sturdy, and they backed their team properly. The 12th man was there for them. They were very again industrious as well in both the fixtures that they've played. But Australia and Poland are getting knocked out for sure. Poland are getting knocked out. They're getting crunched by France for sure. There's no doubt about it. Yeah. लेट्स सी यार. मतलब हाँ, मतलब वो पोलैंड का बेस्ट केस यही होगा ना, दैट दे हैव टू कीप इट nil-nil as much as possible and then that nick that one goal, which वही cannot वही happen ना, against France. Lewandowski wasn't getting supported by the second striker. That was the problem. They अरे they're made not a playing. Milik is not starting. I don't know what's happened. इंजर्ड था कि क्या था, मुझे तो अभी तक मालूम नहीं. पता नहीं, किसी ने पढ़ा था कल 3:30 बजे सुबह तक मैं ना लाइव था यार, और मैं बोल रहा था यार मिलिक कहाँ है यार, क्यों नहीं आ रहा था वो. लेकिन हाँ, यूएसए ऑस्ट्रेलिया, भाई क्या बोलते हो, मैं तो बायस्ड रहूंगा इसमें. यूएसए वर्सेस नेदरलैंड्स में. आई नो पुलिसिक है यूएसए में, बट स्टिल नेदरलैंड्स मैन, यू नो दैट. लेकिन व्हाट डू यू थिंक, यूएसए नेदरलैंड्स विल बी एक्चुअली अ गुड मैच, राइट? It should be a good match because both teams have been. I mean, US have been little more flary in, if you see overall comparatively. Pulisic and Thomas Weah have made Timothy Weah. I think they Timothy made Weah. the team look good, but I still feel Netherlands have a slight edge with De Jong and Van Dijk है, Gakpo है सबसे पहले. So obviously, I think मतलब they've been स्टार more क्वालिटी ज्यादा लग रही है नेदरलैंड्स में फुल, Netherlands में. जस्ट अबाउट. हाँ. I know knockouts when it matters, that moment, that moments player, you need that in knockouts. In groups, you can do with just your team spirit, etc. But See, again, Pulisic also, whether he's 100% fit, let's see, time will tell. अभी कल देखते हैं what happens. But भैया, everyone again, do not forget to like the stream. साथ में like कर दियो, और like कितने हो यार, देख लेते हैं अभी. और यहाँ पे क्रोएशिया winning the ball finally when Belgian midfield was dominating the possession, but again they have lost it. Yeah, they have lost it. but both teams are playing crap now. They're playing end to end and they're losing balls near the final third. Yeah. भाई सब लोग लाइक्स काफी कम हो यार. सब लोग जो देख रहे हैं लाइक कर दिए ना स्ट्रीम को. डू लाइक द स्ट्रीम यार. अपना टारगेट बहुत कम है, डोंट वरी अबाउट इट. तो लेट्स गेट टू एटलीस्ट हाफ दैट टारगेट इन द फर्स्ट हाफ, ठीक है? तो लेट्स गेट टू दैट. एंड ऑफ कोर्स आप लोग भी बोलिए यार, मतलब रात वाला मैच मैं करूँ कि नहीं करूँ. मैं सोच रहा हूँ यार कल रिव्यू वीडियो करूंगा अच्छा सा. लेकिन रात वाला मैच, आई डोंट नो which match is the more that you look forward to यार. जापान स्पेन, राइट? No, I want to watch Germany play because they play more beautiful football. I want to watch Germany. As in that, Although I know you Japan mean वाला interesting होगा, that Spain वाला pressing भी. and all those things, like the heavy metal that you probably would associate, right, with Germany. I'm just wanting to watch Gundogan and Musiala. These two bring a lot of Musiala, creativity man, to the oh game. my god. भाई अगेन चेल्सी ने दिया था यार, रादर चेल्सी ने यूज नहीं किया उसको. You remember to Bayern. Okay, I don't expect any more upsets that Spain and Germany will go through. Costa Rica helped Germany by defeating Japan. Let's hope Germany don't hang them with 3 points. Andy, good one. Good one, Andy. यार बहुत अच्छा है. Would be exciting to see how far Italy would go. शे भाई. नाइस वन, नाइस वन. भाई इटालियन फैन फतेह के दो भाई, आ जाओ. बात करते फिर. फतेह भाई, नेक्स्ट वीक से फतेह भी फ्री होंगे थोड़े बहुत, तो होपफुली he'll also join us in some watch alongs यार. आई नो दैट इटली नहीं है वर्ल्ड कप में, थोड़ा सा बैंटर तो बनता ही है फतेह को. तो मजा आएगा थोड़ा. लेकिन या स्पेन का भी, आई थिंक इफ नॉट रॉन्ग, वेदांत इज अ स्पेन फैन, राइट? आज रात को बात करेंगे क्या होता है वहाँ. काफी मजे करेंगे वहाँ. बट स्पेन का या भी दैट्स हाउ कौन इट चल गोज. रहा है? डैनी ऑल्मो चल रहा है आगे.
हाँ यार. Spain is also missing a number 9, to be honest, to consistently आगे थोड़ा But Asensio is doing a clear job करे. in my opinion. हाँ, Asensio is doing a they're job. doing the job, no doubt. But that 7-0 was just again one spectacular Yeah, performance. have they वही been ना? tested? You know, even Germany, they don't have like a typical strike force now of German teams in the past. Yeah, So maybe you can say that. यार वही है, quarterfinals में they're expected to meet Brazil, by the way. So that will be difficult in assuming that they top the group and yeah, win their round of 16 match. World Cup is too much pressure. इंद्रानील बोल रहे हैं. Many players play safely. We need some more risks and fun players. भाई इसलिए मैं बोलता 2006 का वर्ल्ड कप देखिए यार. 2006 का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा था यार मेरे लिए. मतलब 2006 में देखे पहले ही मैच में 4-2 हो गया था भाई जर्मनी और कोस्टारिका बीच बीच में. मतलब इट वाज लाइक वाओ, जस्ट गो फॉर इट वाला चीज. और यर्गन क्लिंसमैन थे उस समय. वो उस जर्मन मतलब एज मच एज ही वाज क्रिटिसाइज्ड, आई एक्चुअली लाइक्ड हिम बेटर देन वाकिम लो. आई नो इट डजंट साउंड राइट, बट आई एक्चुअली लाइक्ड हिम मोर. He just played attacking football with Germany, and that was not a German thing, yeah, honestly. तो which was a fresh breath of air. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है they didn't have that steel, in that team. That probably yeah. in This is what we 2010 need, 14. right? I mean, yeah, you need that metal with you. CR37 MCI naughty naughty. I know 37 बोल रहे हो आप बार बार, लेकिन कोई नहीं. Aubameyang and Lukaku, Mr. Burley, don't ask, just play. पता नहीं है उदय यार, यहाँ पर स्काउटिंग क्या चल रही है लिवरपूल के लिए, बोलिए. आज मैं देखा था पोस्ट. क्या क्या हो रहा है, जूड बेलिंगहम और ट्रेंट की बहुत दोस्ती बढ़ रही है, मैं सुना. वो अच्छा मीम डाला था, I think Troll Football ने डाला था, but yeah, that was nice. I mean, Trent obviously he's not been given opportunities, so they've mocked him. He's trying to lick his ass and trying to persuade him to join Liverpool, which is never हाँ, going to happen. एटलीस्ट I think. क्लब क्लब के लिए काम कर रहा है मीनवाइल. Yeah, scouting कर But रहा है बढ़िया actually, वो. I think Southgate is a little bit unfair, a little bit harsh on Trent. I genuinely believe that. ये देखो ना, मैं As much बताता हूँ एक as चीज. Like I know you're a mature fan, but look at the fans who from every club, all Premier League clubs. Um, हाँ they pounce on Liverpool when one player is performing poor in one season. See, he's been giving मौके पे चौका continuous. बोलते He's भाई been giving उसको. continuous assists, नहीं, बैंटर तो continuous मैं भी करता creation. हूँ, आप तो देखते ही हो मुझे. बैंटर तो मैं भी करता हूँ, लेकिन एक ढंग होता है रे. नहीं बैंड लाइक हाँ यू नीड. बैंटर मानता हूँ मैं, लेकिन उसका जो बैंटर लेवल है वो मगवायर लेवल बन रहा हाँ है. He doesn't deserve that. नहीं, Maguire लेकिन deserves it. देखो He doesn't deserve ट्रेंट, it. आई एग्री दैट डिफेंसिवली ही इज नॉट अ डिफेंडर ऑन ऑलमोस्ट, Yeah. लेकिन व्हाट ही डज फ्रॉम दैट पोजीशन नो वन कैन डू एज वेल. तो True. 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 that is I don't know, very strange that Southgate is A like, few I know defensive Trippier is lapses, not many. good, A लेकिन few defensive lapses. See, it is very easy to run behind, नहीं मतलब उसका रोल defensive था ही line. नहीं It's ना not इस लिवरपूल टीम में वो रोल था ही नहीं. हेंडरसन वाज आल्सो आउट ऑफ फॉर्म, रिमेंबर, बिकॉज for ऑफ दैट sure, ही इज for नॉट. sure. Age has caught up. I think age has caught up for him. एंडी कुछ भी. कुछ भी. भाई पेरिसिच क्या लग रहा है, इंजर हो गए, क्या निकाला है उन्होंने. वही ये टॉटनहम की जो ओके, their व्हाट डू यू कॉल facilities दैट, ही aren't हैड good समथिंग ऑन हिज enough थाई. to keep their players fit. So you can see the repercussions playing बट for the national बट team. रियली यार, टॉक अबाउट अंडररेटेड ना, मुझे लगता है पेरिसिच इज वन ऑफ लाइक Giroud, Perisic, some players na, they're like really underrated, man. Really underrated. He is, but now he's 33, right? I still feel the Perisic you would have seen when Inter were in the finale for the Europa, and before that, he was Actually, more than a Bayern के लिए skip. जो था ना on loan, He arguably that came was the from best Bayern. He was in Perisic. Bayern also. He played really well for Bayern as a winger. Very well. जब No जीते doubt. थे चैंपियंस लीग, राइट. तो that was They a won with COVID season, Gnabry right? on the right and Perisic on the left, and then they हाँ. subbed him out. Coutinho was also there. We forget that, right? If I'm not wrong. Coutinho was also there. You're right. He scored 3 goals against Barcelona, I think. Yeah. Okay, देखते. CR7 to Jabardast Jetha confirmed. Here we go soon. New interview to Ravish Kumar tomorrow Cheta. 8 p.m. As South America, भाई पता नहीं कहाँ जा रहा है. Lot of reports coming up. As South America is famous for producing lethal strikers, which European nation has produced the best strikers, Germany or England? Very nice question, यार इंद्रानील. Let's go back in history थोड़ा. Germany. नहीं यार, I disagree. देखो, while अच्छा Miroslav एक बात Klose, बताओ, हैरी केन निकाला है. हैरी केन के सिवाय और बताओ जो क्लोजे एंड तो टीमो one वर्नर second, one और ये. second. So are you looking at only World Cups, Indranil? If you can just confirm that. Are you looking at only World Cups, or are you looking generally? As in In which? general also. यार Wayne Rooney, I think he's right up there. Alan Shearer, he was right up True. there. यार. I'm not saying Gary these. Lineker, Harry Kane,
इनफैक्ट इवन मैं तो बोलता हूँ लॉट ऑफ अदर्स हु डिड नॉट गेट चांसेस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट इवन No, you're absolutely right. Harry Kane, Alan शेरिंगहम वाज Shearer, Wayne अ Rooney, Ian इंग्लिशमैन, Wright, वाज ही? all these strikers, they are legends, no doubt. But it's just that more quality and more flair is what you'll see in other European nations. हाँ, Uh, लेकिन यू नो व्हाई, इन माय पर्सनल ओपिनियन, व्हाई दे डिड नॉट लाइक रीच द रोनाल्डो R9 लेवल्स, दीस स्ट्राइकर्स, आई नो दे आर नॉट एज गुड एज आल्सो, नॉट, डोंट गेट मी रॉन्ग पीपल, भाई यहाँ पर थोड़ा स्टेलमेट लग रहा है गेम में। मीनवाइल मेरा ये ओपिनियन है उदय, देखो द रीजन बीइंग दैट इंग्लैंड की मिडफील्ड ना बहुत ही फ्लैट मिडफील्ड खिलाते थे यार, मोस्ट ऑफ द कोचेस, दे कुड हैव यू नो ट्राइड समथिंग एक्स्ट्रा डिफरेंट, लाइक ओवन हार्रिस को खिलाओ, उसके आगे आप क्रिएटिव मिडफील्डर्स खिलाओ, बहुत कम हुआ वो, ठीक है। तो आई फील दैट बिकॉज ऑफ दैट द सप्लाई वाजंट एज गुड एज व्हाट इट शुड हैव बीन आल्सो, तो इट्स अ मिक्स ऑफ द टू। लेकिन मैं बोलूंगा, मैं तो जर्मनी इंग्लैंड दोनों का नाम नहीं लूंगा। जर्मनी अगेन, व्हाई नॉट, आई विल गिव यू रीजनिंग उदय, आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, भाई क्लोजा हैज बीन देयर अबाउट फॉरएवर, ठीक है। आई नो बिफोर क्लोजा वाला एरा में बहुत थे, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक व्हेन आई एम सेइंग, लाइक आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट ओनली पोस्ट 2000 यार, क्योंकि आई yeah. नो दैट मोस्ट वॉचर्स यू नो द पोस्ट 2000 ही देखे होंगे। तो क्लोजा स्टैंड्स आउट, मारियो गोमेज मे बी राइट, आई डोंट कंसीडर मुलर एज अ स्ट्राइकर एनीवे, मुलर इज मोर लाइक No, अ कैप Mario Gomez is फॉर मी। also amazing. Yeah, Mario Gomez, no doubt. तो अच्छा था वो भी. जनरली एक स्ट्राइकर का ब्रीड होता है ना, जो एक पूल ऑफ स्ट्राइकर जो किए, मतलब आई वुड लाइक टू से व्हाई नॉट यूरुग्वाई यार, यूरुग्वाई हैज सम फैंटास्टिक स्ट्राइकर्स मैन, They've मतलब got Diego Forlan. They've got plenty of strikers. Edison they had Cavani, Forlan, Suarez. Cavani and Suarez in 2010, and what a strike for that, उस वर्ल्ड कप में क्या थी यूरुग्वाई, याद है आपको? दैट वाज समथिंग Hath, ब्रो। Hath, hand of God. हाँ, लेकिन यूरोपियन नेशन क्वेश्चन है, तो यूरोपियन नेशन में पता नहीं यार, मे बी फ्रांस, ऑनरी, बेंजेमा, जिरू, They're also sturdy, but they don't have consistently over the years. They don't have, but in current times, if you're asking, for sure, France have a नहीं यार deadly थे, forward line. मतलब डुगरी, यू नो जोकाएफ, मतलब दे वर वेरी गुड यार। ट्रेजेगे वाज ऑसम, ट्रेजेगे ने बहुत अच्छा एक मारा था गोल्डन गोल, जहां तक मुझे याद है। मुझे तो रोबोटो पेरेस बहुत पसंद था, फ्रांस का लेफ्ट विंगर. रॉबर्ट पिरेस वाज अ क्लास प्लेयर, रॉबर्ट पिरेस, रॉबर्ट पेरेस. obviously फ्रांस का बर्गकैम्प ऑफ नेदरलैंड्स, ओवरमास ऑफ नेदरलैंड्स, यू नो दीस आर लाइक क्लास प्लेयर्स, बट दोस आर मोर विंग्स और विंगर्स राइट, और वाइड Yeah, प्लेयर्स। even Trezeguet was deadly, man. हाँ ट्रेजेगे, सो मैं तो फ्रांस बोलूंगा यार। अरे गोल हो गया, मिस, ओ व्हाट अ मिस मैन, व्हाई डिडंट ही गो फॉर Yeah, इट मर्टेंस, fuck. व्हाट वाज मर्टेंस वेटिंग फॉर क्रिसमस? No, he wrong touch, but Carrasco's position was wrong. Yeah, fucking Carrasco's been very pathetic. Morocco Yeah. deserves man, exactly। भाई कनाडा, आई डोंट नो पीपल व्हाट इज, वहां पे 1-2 हो गया यार, हम क्या देख रहे हैं यार, 1-2 हो गया वहां पे। सॉरी भाई, चैट हेल्प मी आउट यार थोड़ा बहुत, हम लोग क्रोएशिया वाले मैच में कर रहे हैं, वहां पे 1-2 हो गया, मैं यहाँ पे निकाल दिखाने वाला हूँ क्या एग्जैक्टली हुआ है। और यस, मोरक्को हैज स्कोर्ड 2 गोल्स एज थिंग्स स्टैंड। चलो लेट्स फोकस द मैच थोड़ा सा, भाई इनफैक्ट हाँ 1-2 ही हो गया, 1-2 है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर वाज अ डिसअलाउड गोल एज वेल। अरे बाप रे, वहां पर काफी चीजें हो रही है यार। Hmm. हकीम जियेश, एल नेसरी यार, Yusuf El Nesri scoring, Sevilla striker, Wow. and then you had Canada scoring the 41st minute. So it's Canada Nice. trying to come back. Who scored for Canada? Share, क्या चीज? Who Just scored for I'm Canada? just sharing the screen 1 second. भाई सब लोग बोलिए यार, कोई भी दूसरा मैच देख रहे हो तो कैसा चल रहा है वो मैच? मतलब looks like, at least on paper, it looks like it's going to definitely go down to the wire. This is how what's happened उस मैच में, of course. So it's interesting. Oh, Again, लेफ्ट बैक है उनका ये. हाँ, हाँ. डेविस बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलते हैं कनाडा के लिए। लारेन इज प्लेइंग टुडे, नॉट जॉनसन डेविड, यस, जैसे बोला था उदय ने, तो दैट्स इंटरेस्टिंग एज वेल। हकीमी गॉट द असिस्ट फॉर मोरक्को मीनवाइल, इंटरेस्टिंग लास्ट काफी। मैच में इसको बिठाया था, अब डेके हुएबे को. He didn't play in the last match. Now I'm glad that he played in this match because he's a good left back. सागनिक वो लोग फ्री खेल रहे हैं, पुलिसिक तो मुझे पता है, पुलिसिक वांट्स टू बी अ मेन मैन, पुलिसिक वांट्स टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ही इज दैट काइंड ऑफ गाय, अदरवाइज ही विल सल्क, वो पता लग गया। जियेश इज आल्सो ऑलमोस्ट द सेम, आई वुड से जियेश इज आल्सो दैट, वो आई थिंक मोरक्को कोच की लड़ाई हुई थी उससे, ही हैड टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम मोरक्को, लेकिन वो पता नहीं कैसे पैचअप हो गया, और अभी बोल रहे मोरक्को कोच दैट ही इज अ काइंड ऑफ गाय दैट इफ यू लव हिम
he'll give his life for you, that kind of a guy. So Yeah. I think both are similar. England have been producing some great forwards. Messi is good बोल रहे हैं. हाँ मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना. England have been producing great goal scorers. हाँ, when Wayne you Rooney. say okay, so you are meaning मतलब जहाँ यहाँ पे उदय probably wanted to kind of add that skill factor ना. तो skill factor में यार मैं तो बोलूंगा नेदरलैंड्स यार. दिन अगर तब तो बोल रहे हो तो नेदरलैंड्स 100%. Remember Van Nistelrooy, Van Persie, Van Basten, Bergkamp, Overmars ने already बोल दिया. I know थोड़ा white player थे Overmars, but I think Roy Mackay, you had Kluivert, ठीक है. मतलब I think Netherlands has to be there then in terms of कंप्लीट skill. फॉरवर्ड आप पूछोगे ना मेरे से कंप्लीट फॉरवर्ड इंग्लैंड के लिए, मैं बोलूंगा माइकल ओवन. Oh wow, yes. Wow, कंप्लीट फॉरवर्ड. in prime man, it was so difficult to catch him, bro. Chances of Liverpool finishing the top 7, यार अभी not sure यार if our mind is there, but anyway, उदय आप बोलो यार, अरे you आराम take से this. यार, क्या बातें कर रहे हो. 6 पे है. मैन यूनाइटेड के पीछे है बस. मैन यूनाइटेड में छक्का इतने मारा स्टार प्लेयर्स हैं, रोहित ने. कहाँ है मैन यूनाइटेड इज इन इज आउट ऑफ द टॉप 4 मैन. दे शुड बी इन द. मुझे थोड़ा क्लब फुटबॉल कम को ऑन थोड़ा यार. सा ब्रेक दे रहे हैं अभी, लेकिन हाँ आई हियर यू. आई ऑल्सो सी लिवरपूल या दैट लिवरपूल आर कमिंग अप, दे विल कम अप यार. दे वी विल शुड कम बाय अप. मुसियाला. दैट्स अ नो ब्रेनर. दैट्स अ ये नो देखो ब्रेनर. एंडी का भाई, ये तो टॉड बॉली के भी बाप निकले यार. एंडी एंडी बिग अप टू यू अंकित ब्रो. भाई, वी शुड बाय मुसियाला, बेलिंगम, पेड्री, अल्फोंसो डेविस, नुनो मेंडेस, हकीमी. नूनो मेंडेस इज नॉट अ बैड वन, क्योंकि नूनो मेंडेस अभी करेंटली Who's इंजर्ड है, तो प्राइस थोड़ी थोड़ी सी लो हो सकती है. Andy supports Chelsea or which club? Yeah, that's what I'm guessing. Andy, if you can confirm me that. 2010 Ghana वर्सेस यूरुग्वाई, वो तो कल होगा यार, बवाल मचेगा कल तो. डेफिनेटली हम होंगे वापस. इटली स्ट्राइकर्स क्वालिटी देखो, दे हैड अ लॉट ऑफ स्ट्राइकर्स. डेल पियरो वाओ, वियरी वाओ, Inzaghi. कसानो, क्या चीज, Inzaghi. इंजागी Felipe वाओ. Inzaghi. या एक्चुअली यार यू हैव अ पॉइंट यार, एब्सोल्युटली साग्निक, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका. मतलब मैं बोलने वाला था Balotelli, क्वालिटी bro. बिकॉज. All-time favorite. Balotelli. अरे यार मैं तो लुकाटो नहीं बोलूंगा यार. ही वाज. Locatelli, हाँ. He's a नहीं midfielder, लुकाटो right? नहीं, Locatelli, हाँ. लुकाटोनी. Lucadoni, हाँ, for sure. He वो was more of a 2006 में Roma वही था. legend मेरे हिसाब से, हाँ. Italy will kill. He scored goals for Italy, no doubt, but he was more of a club legend. So Rose is one No, of the it's not boring, done. It the was just most an boring games I've offer. ever seen, man. Fuck, bro. It was just an offer. Messi is good. And आज न्यूज आई है कि देयर माइट बी अ क्लब विद बेटर ऑफर. पता नहीं क्या सच्चा यार. मतलब कल फुटबॉल लंदन की मैंने कवर की थी अपने लाइव स्ट्रीम में यार. दे आल्सो सेड दैट चेल्सी आर 180 million per year. I don't believe that as well. Let me actually wait and watch. Uh, should If join. Ronaldo joins, Newcastle United, right? He would get benched. Chris Wood will get chances over him. Oh my I'm telling god. you. Eddie Howe will never play United. Ronaldo. No one wants to play Ronaldo anymore, man. Let him rest in fucking. I don't agree with that, to be honest, but again, it's a viewpoint. मुझे लगता है it's about what the team needs also ना. If a team needs basically a person who, मतलब एक बहुत ही inexperienced kind of forward line है वहां पर, you need someone who kind of just marshal them, or if he's open for that role where he doesn't play week in week out, then I I think think he fits in perfectly. Problem is, I think he expects to start every game. Oh, it is very clear from his interview, he right? when he joined Juventus, right? He had already lost his pace, but he had good, perfect. He was clinical, but now he's lost that touch too. Uske in out of 3 chances, he'll just score one or not even one. Like every 3 chances he gets, he just converts one. Two open chances will be missed, and he's been doing it a lot. That's not like. So I don't think. I mean, this is the personal opinion. I would never deploy Cristiano Ronaldo. Like he should play for maybe Sporting or small clubs for sure. भाई जियेश वाला गोल देखा यार, क्या मस्त गोल था. एक सेकेंड, वापस दूसरा गोल मारा है क्या जियेश ने? नहीं, एक शायद डिसअलाउ किया गया है. Decimated. Canada is getting decimated. By the way, I have seen. By the way, 4 Man U players have received Man of the Match this World Cup. I don't call them Man U players. I call them Real Madrid players. Casemiro and रैशफोर्ड को मिला था ना कल. Rashford तो बहुत बढ़िया खेला. और Rashford and ब्रूनो.
Bruno is also playing really well. I think he was और creating किसको a lot बोला for Portugal in the second game. मैन यूनाइटेड में? Am I missing? Who am I missing? Christian Eriksen. Casemiro. क्या चीज? Eriksen का Oh, काफी बुरा गया. मतलब he tried to play well for Eriksen तो Denmark, नहीं, but he he didn't play well couldn't. यार. I think Casemiro definitely was one. Casemiro. Uh, oh ho! What a chance by Croatia यार, missed. But कोई नहीं. Good. बॉली चांस पे भाई. चौथा कौन था यार? याद नहीं आ रहा मुझे यार. लास्ट हाफ टाइम हो गया भाई. व्हाट अ हाफ टाइम. दिस इज द बेस्ट हाफ दैट आई हैव एवर वॉच्ड इन फुटबॉल. ऑनेस्टली मैन भाई. थैंक्स टू उदय, थैंक्स टू बाय एवरीवन इन चैट टू बी अराउंड कि हमने काफी सारा बातें किया और हम होपफुली इट कैन ओनली गेट बेटर. इसलिए सब बने रहे ना. इट कैन ओनली गेट बेटर. बार्सिलोना सेड पेड्री ऑन नॉट. या वो तो एक्सपेक्टेड था यार. एब्सोल्युटली. Best France striker playing in the Premier League without a shadow of a doubt is Thierry Henry. And I'm a Giroud fan, I'm saying it. Without a shadow of a doubt, it's Thierry Henry. There's no two ways about it. Bhai, John Terry said that one of the few strikers he was actually scared about is Thierry Henry. Matlab, it has to be taken note. 2026 में कौन सी कंट्री ग्रुप ए टीम 2 होगा? अरे वो तो अभी ड्रॉज आएगा नहीं ना. अभी तक वेट करेंगे यार अभी तो. बट अगेन टीम 1 पता नहीं. बिल्कुल अभी के लिए वेट है. वी हैव टू बेसिकली वेट फॉर क्वालिफिकेशन देन ड्रॉज. बट लेट्स टॉक अबाउट द मैचेस यार. कनाडा मोरक्को का हो गया का हाफ टाइम? एक सेकंड देखने दीजिए. वो वाला चल रहा है यार. लास्ट सेकंड है. चल रहा है. अभी हो गया. जस्ट हो गया जैसे ही मैंने बोला. तो वहां पर भाई मोरक्को एज थिंग्स है. तो भाई सबसे पहले दिखाते क्या हुआ है. और यस एवरीवन हु इज वाचिंग डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस स्ट्रीम. और अगर आप शेयर करें तो ब्रिलियंट है. हाँ मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है, इंस्टाग्राम पोस्ट डाला है. जाकर वहां भी शेयर कर दीजिए. सब लोग पता लग जाएगा हम लाइव है और हम बात करेंगे. बिकॉज सेकंड हाफ इज व्हाट दिस वर्ल्ड कप इज. सेकंड हाफ एफसी दैट इज व्हाट एंटायर वर्ल्ड कप इज. यू नो दैट है ना. तो हम लोग करेंगे बात. लेकिन उससे पहले ये देखते हैं भाई सिचुएशन ग्रुप एफ में. एज थिंग्स स्टैंड मोरक्को आर ऑन टॉप beating Canada 2-1 at halftime as things stand. Now, Hakim Ziyech with an early goal, remember. El Nasiri, Sevilla striker ने मारा दूसरा गोल. और फिर Canada got one back with the left back scoring. क्या बोलोगे? Canada, they cannot go without 0 points, can they? So, is there a possibility अगर draw होता है? अगर draw होता है, then Morocco becomes 5 points and Croatia are already on 5 points because वहां पर 0-0 draw है with Belgium. तो in that case, Belgium will be out. लेकिन Belgium needs a win. As things have gone, I don't know, Uday, how would you sum up that half? I think it was like they were trying to get past the defensive line, but they couldn't. Both teams were like creating a low block. Plus, I don't think the transitioning was that quick. It was like they were losing balls near the final third, and and I don't think the wingbacks was spectacular. I don't think they were efficient enough. So I think it's just been it's been a game where they're just canceling one another near the final third. That's it. I don't think it's been a good game, to be honest. I think the Canadian and Moroccan game might have been more interesting than this. Might have been more open than this. I think they're being a little more careful and skeptical, right? Because इनको conservative football खेलना पड़ेगा अभी, क्योंकि they just want to score a goal and फटाफट they want to sit on a low block. So I think both teams are just respecting that fact. Abhi, I think second But half will be explosive. Ankit, every first half has been like this. Second half is going to be bombastic. Just trust me. वो 2 दिन थे ना बीच में. 2 दिन बहुत बढ़िया गेम्स होते. कैमरून वाला, सर्बिया कैमरून वाला अच्छा हुआ था. एंड दूसरा वाला जो गाना साउथ कोरिया वाला अच्छा हुआ था. हाँ, you know, मजा आ गया. and then सर्बिया वाला 3-1 जीत रहे थे वो. And look at Mitrovic. He was celebrating and all that. And then he missed a chance after that, and then they conceded 2 goals. That was brilliant. Brilliant match. बिग अप टू अनाबस मुदित यार. अगेन भाई सब लोग जो भी है, मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ यार. सब लोग आ जाओ यार. मैं वेट कर रहा हूँ भाई. सब लोग, ऑल द मेंबर्स कहाँ हो यार? चैनल मेंबर्स, शाउट आउट टू यू ऑल यार. कहाँ है? वर्ल्ड कप से बोर हो गए ऑलरेडी? कम ऑन, इतना जल्दी कैसे बोर हो सकते हैं यार? सब लोग आ जाओ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई नीड टू मेक, एंड फॉर दैट आई नीड एवरीवन टुगेदर यार. आई होपफुली आई हैव मोर पीपल वाचिंग अस इन द सेकंड हाफ. और वो कैसे होगा? I request every one of you to not only like the stream, also like my community post, my Instagram post, as well as my tweet. But अगर आप खुद शेयर कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट. एब्सोल्युटली रिट्वीट कर सकते हो और भी बढ़िया है. आई डोंट नो इफ यू गॉट अ चांस टू डू दैट एज वेल. लेकिन एवरीवन वाचिंग, ये मैं बोलना चाहता हूँ, अलॉन्ग विद जो मैच है हम डिस्कस कर ही रहे, एक अनाउंसमेंट है जो आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स. आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट. और हाँ, हमने बोला था दैट वी विल डू दिस गिव अवे एट 10K with all the love. I hope that we reach 10K by the end of the World Cup. I still have the target. मैं भूलूंगा नहीं. That target is always there. और because we are
close to 10K, adding both the channel subscribers. I'm kind of adding that. I know बहुत common है. So we are coming with a giveaway, and that's a contest. So भाई सब लोग do check out my Almighty Blues FC का Instagram account. Almighty Blues FC, it's very easy to find. अगर आप लोग नहीं follow करते तो please follow. My latest post says it clearly that there is a proper way of you winning an absolutely free jersey, and this is a different scheme than what मैंने डाला था last time. This is no scheme, this is a proper giveaway, जहां पर आपको सिर्फ करना है, स्टोरी डालना है, प्रेडिक्शन डालना है और टैग करना है मुझे, बस सिंपल एज दैट. And based on that, whoever gets the correct predictions, among them there will be a winner. ठीक है, so that will be picked, I think, on the finals day, or rather just after the finals day. तो आप कर सकते हो वो predict until one day before the semi-finals is what I understand. ठीक है, तो सब लोग please check it out absolutely. While Uday, I believe he'll be back. No worries, bro. Absolutely. Piers Morgan denies the rumors that he took his pants down in the final part of the interview. Oh my God. We should learn something from Australia. Just 25 million, but they are in football, cricket, Olympics, tennis. I think, Andy, it's about the culture. It's about the culture. Yes, I know. I'm not going the Jurgen Klinsmann way. I'm going basically the way of sporting culture. वहां पर I think from generations it's happening, and the lifestyle is like that you have a lot of sports as your primary occupation. वो वहां पर lifestyle है. वहां पर you have a lot of say natural elements जहां पर you will be forced in a family. आपके पास 2-3 लोग मिलेंगे who are in mountaineering, who are in this, तो automatically sports kind of physique build होता है, because of which your genes pass on, and that's how it is, simple as that. और उनका खाना पीना, there's a lot of reasons. यहाँ बहाने नहीं मारा हूँ. हाँ, of course resources are big time, politics or other corruption come है, all those things. There are a lot of other things as well, but I'm just trying to explain why it's so much. New Zealand देख लो यार, ऑस्ट्रेलिया भूल जाओ, New Zealand देख लो, it's even smaller. Talk about Croatia. यार, मतलब Croatia have been through hell as a country. They have been through hell. We have been through wars. Like, they have been through like many wars. Remember that. Modric himself was a refugee. So you cannot say that it's easy anywhere. But at the same time, वो एक footballing culture और say sports culture build होता है वहां पर, encouragement ज्यादा मिलता है from decades, जो शुरू हो रहा है इंडिया में maybe from the last decade is what I would say. Do you have an interest in F1? I used to have a lot of interest in F1, लेकिन वही आज अभी टाइम नहीं मिलता है. After you start working etc, a lot of डिफिकल्टी होती है in terms of managing so many sports. मैं तो दिन रात स्पोर्ट्स देखता था और खेलता भी था यार. लेकिन हाँ, I was a McLaren fan, and I used to follow Kimi Räikkönen when I was basically following, but that was a long time back, not recently. But I think it takes physically strong to sail from England to Australia. Fair enough, everyone. और हाँ, मैं यहाँ पर अगेन मैं दिखाना चाहता हूँ फॉर पीपल हु डोंट नो यार, अगेन इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ऑल यू नीड इज अबाउट 1 minute of investment, not even a minute, 30 seconds of investment. Or this is for you guys simple, because आप लोग ने मुझे प्यार दिया. I hope that प्यार continues and a lot more. And along with sportshub.in, we are coming up with this thing. तो प्लीज चेक करिए, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. जस्ट जाइए, ये पोस्ट को लाइक करिए, फॉलो करिए दोनों ही अकाउंट, तीनों अकाउंट्स को, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस ऑलमाइटी ब्लूज एफसी ऑन यूट्यूब, ऑफ कोर्स sportshub.in on Instagram, और ये वाला पोस्ट डालिए. When I say ये वाला prediction वाला, ठीक है, second photo, just post it as a story and write the winner, runner up and third. यहाँ पर while you post your story, just type it in. जैसे मेरा winner, I don't know, I don't want them, but winner I have predicted Portugal, runner up मैंने predict किया है Brazil, और third मैंने predict किया है England को, which I've stuck to that, right, for timing. मैं tempt हो रहा था कि I'll go with maybe France third, but anyway I went with that. And साथ साथ में टैग करना है मुझे, that's Almighty Blues FC and sportshub.in. By the way, जो जर्सी मिलेगी ना, that will be basically to the winner of the correct predictors. एक लकी ड्रॉ होगा among the correct predictors on the 19th of December. Also, I would like to say, जो मेरे पीछे आप जर्सी देख रहे हो नेदरलैंड्स की, ठीक है, जो आप देख रहे हो नेदरलैंड्स की जर्सी दिख रहा है ना आप लोग को, that is basically from sportshub.in. और मैं बोल सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वालिटी है, ठीक है, simple as that. So you get it absolutely free. Of course, it's a lucky draw. One person gets it. So, do think about what predictions you're making and tag me absolutely. Hi, Jack. कैसे हो? Bhai, we have Uday. Uday from Loudmouth Football. He's in today. Obviously, if any other panel is available, great to have them as well. Lekin, it'll be good to actually, see what do you think about what's going on. Jack, yeah, what do you think? Is Eden Hazard
an option for Roberto Martinez, what would you go for? Let me know. Because again, मैं दिखाना चाहता हूँ what has happened to Belgium. यहाँ पर I'm just taking a look. और yes, by the way, again, people, I request you all to like the stream, share it. भाई ज्यादा लोग हैं तो बढ़िया आता है यार. I know भाई आज अपन ही है, लेकिन भाई अपन भी जानते हैं यार कुछ ना कुछ अच्छा लगता है यार. ज्यादा लोग आ जाता है, हम लोग भी देखते हैं तो कभी कभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. प्लस साथ साथ में मुझे याद आता है भाई हम भी थोड़ा जानते हैं और मजा आएगा. सिंपल एज दैट. तो मेरा तो यही रहता है हमेशा. आई होप यू गाइज ऑल्सो अग्री देयर. हाँ, ये नेपाल वाला पता नहीं यार. मैं आपको बताता हूँ, ये वाला मैं बताता हूँ. नेपाल वाला पता नहीं. आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट. आई कैन नॉट कमिट क्योंकि यार आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग इट दिस वन, राइट. दिस इज समथिंग दैट आई एम गॉट पार्टनरशिप. लेकिन मुझे लगता है ये खाली इंडिया के लिए है. बट मैं आपको बता सकता हूँ. बट अगेन आप दीजिए, आप प्रेडिक्शन तो दीजिए. मैं आपको शाउट आउट तो डेफिनेटली दूंगा एंडी. नो टू वेज अबाउट इट. ठीक है. तो बिल्कुल हसीब, थैंक्स अ लॉट. 2030 12 to 14 years old boys to Europe for training to bring some European techniques in India. हाँ, मतलब bit of both. It's get European infrastructure, European coaches यहाँ, people with experience. I think again a lot of C match के लिए ना लोग बोले कि come on, he's not the right guy, etc. लेकिन the guy has played World Cups, यार, you know that. So somewhere down the line, I think that is what we should continue for the time in football. I hope Lakaka scores an own goal. Interesting. Belgium's golden generation was essentially just the prime Eden Hazard era. Okay, interesting comment. But again, it means a lot जब आप लोग आते हो यार. Again, I'm not 100% sure कि यार मैं I'll be doing both the watch alongs because आप जो देख रहे हो, I'm still injured. I'm still on medication. Again, I would like it if basically you guys let me know if you want the other watch along or not. If not, we'll come out with the review as well. लेकिन talking about this game, उदय आ गया. तो चलो उदय को ला देते frame में. और Uday, I don't know, yaar. Let me just show the lineup, and everyone do let me know what are the changes you are expecting. But going by this performance, I think Mertens, I think he should have done better. Couple of occasions, at least, मुझे याद है he was on his heels. See, the Carrasco thing is also you what can say. But what are the Trossard was changes you will pushed make? towards the right, I think, and he was just behind Mertens. Mertens was in the number 9 position, but yeah, he couldn't create that, overlap where he could have tapped the ball in. So उसके लिए थोड़ा difficult था वो. So it touched the tip of his toe. Second, I feel Carrasco is a little missing. He needs to be more sharp near the final third. नहीं तो हम गोल मार लेते वो भी. पहले वाला जो opportunity था, that was a good opportunity to score a goal. Missing his shooting boots, but I think Modric is trying to stretch the midfield a lot, and he is successful in doing that. He's delivered 3 crosses, I think, and he's been pretty pinpoint with his crossing. But Kovacic has been disappointing. I think Kovacic is not able to deliver those key passes. He's just retracting. He either using recycling the ball a lot. But yeah, I think the left side is a little redundant for them. I think Perisic is also struggling a bit. But yeah, overall it's been a pretty sort of a snooze fest, So that's how I see the game. Yeah. So what are the changes that you recommended, Uday? I think Lukaku definitely needs to come on. We need someone as a target, हाँ, and then he मतलब needs to show. he मतलब Lukaku, as much as I'm like, I know hate is a strong word, but it's almost that for me now with Lukaku what he's done to Chelsea. भाई लेकिन मैं साथ साथ में बोलता हूँ, Lukaku kind of element आप ले रहे हो, आप उसको 1 मिनट भी नहीं खिला रहे हो. I know he may not be 100% fit, but you have to take a chance. It's a World Cup. You have to. I think You can't go with Batshuayi. Batshuayi is not consistent. He scored a goal, I know that, but he just had one major run. That's it. He couldn't get in behind the defense at all. so. लेकिन Lukaku will probably come on late because I don't think he can last even 50 minutes, right? जो हो रहा है in 1.5 right now. They might bring So on Eden Hazard against Carrasco, I think. That's what they might do. Or maybe Thornton Hazard, But Eden Hazard, that will be a bit too. I don't know. That might be a bit too risky as well. पता नहीं है. मतलब it's that's the interesting. only लेकिन options are left with, right? Trossard can play that role. Still gonna Trossard can play that role. Trossard can't, definitely. But Trossard is already there, right, in the game. He's नहीं, what I'm saying is, if Hazard comes, Hazard kind of goes the false nine position, and you have Trossard playing the left wing, जो खेलता है Brighton में बहुत बार, ठीक है? And then Mertens को भी मैं तो बोलता हूँ हटाओ यार. मैं तो बोलता हूँ you get another attacker. मतलब Jeremy Doku, सब एक spark ना. They need some spark. I feel. मारेगी गोल, देखना आप अभी 15 मिनट में मारेगी मेरे हिसाब से मारेगी. Ketlare or someone, but Croatia, man, मतलब again, for people who are watching, भाई Croatia उनके लिए इतना desperate situation नहीं है compared to what Belgium के लिए है, because as things stand, Croatia are qualifying. I know second is not ideal,
but and they might just play Spain, which don't want, knowing that what has happened in the round of 16 of the Euros. ठीक है, सबको याद होगा, Croatia Spain, probably arguably the match of the Euros. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है Croatia also want to definitely top the group as in by default. So even they may make some changes, but I don't know. मतलब अभी के लिए I think it's rather Belgium who needs to take the call, right, Uday? For sure, I think the onus of performing well and hard comes down to Belgium. Belgium, I mean, they have to show up. They definitely need to get their scoring boots on. And as you mentioned, we need a replacement. Again, Lukaku is on. Lukaku's coming on, and yeah, I'm just happy that we've given a full 45-minute, opportunity to Lukaku. I'm sure he'll shine. Looks fit enough, and I'm sure he'll be looking to score a goal or two. Let's see. I hope we get him back in form. And चलो देखते हैं यार. Lukaku has come on यार, and what is wrong with De Bruyne? I think can't he's spot just his players out. Positioning of the players is not right? And plus, they've been sitting on a low block as well. They've been pretty versatile. So I think players are not वो making themselves available. That's it. They need no, to. they're also like, see who's playing as in behind De Bruyne or right now, Witsel and Dendonker. I Itself. feel that this is the ideal platform for De Bruyne to perform Aj, because he's going with two defensive minded players. So I'm like surprised Aj that De Bruyne is not देखा Nuno Moiner made an Mendes. underlap. Moiner ने underlap मारा. He ran into traffic. That's what Moiner always does. He's been, I don't यार like him as a मुनियर winger. इज मुनियर ओनली यार, क्या बोलते हो, मुनी बन जाता है. वे सुभाजीत, No मैं control, आपका man. देख No रहा था ball control. क्वेश्चन. द रीजन आई डिडंट टेक इट बिकॉज़ वी वर ट्राइंग टू टॉक अबाउट दिस गेम इन हाफ टाइम, बट हाँ, कमिंग टू दिस यार, डू यू ऑलरेडी हैव अ राफेल गुरेरो है? आई डोंट थिंक कोई अल्टरनेटिव वो सब है. फ्रॉम व्हाट आई नो, यू दैट इज व्हाई यू पिक 25 20 26 मैन स्क्वाड, क्योंकि a person can get injured, midway through. Could have replaced if that injury happened in the very first week of the tournament, or very first couple of days, I believe. So abhi yaar, I don't think there's a need for injury etc. So sorry, the replacement etc, because you already have a Rafael Guerrero, you also already have a Cancelo. So I don't think you need a replacement, to be very honest about it. नहीं यार, पोर्चुगल का चांस तो है यार, अच्छा लगा. दे आर इम्प्रूविंग एवरी गेम, दैट्स व्हाट आई वुड से. अचानक वर्ल्ड कप में आते हैं. नहीं यार, मोरक्को अफ्रीका में दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम्स ऑलवेज, राइट? Morocco are for African nations, they are quite strong. Morocco, Egypt, Tunisia, Nigeria, Ghana, Ivory Coast, Senegal. These are all your top African teams. Cameroon, right? Yeah. So It's unfortunate how Cameroon's goalkeeper was sent back, by Samuel Eto'o. He had a falling out with the manager because the manager was telling him that you need to play from the back. You need to give the pass to the center half, Onana. Nkolu. Uh-huh. But he's like, I'm good with my shots, long distance shots. I'm able to find the midfielders. So what is the problem? And he's right. The Athletic has actually taken out an Opta statistic which shows that 65% of his passes are on Croatia, point. man, bhai. Guardiola, man. Is he a potentially Chelsea player in the future? I know काफी लोग linked है, but let's see. Bhai, what a बहुत important. De Lukaku was Bruyne, De Bruyne, waiting. see, yeah, he put De the ball Bruyne, yeah, De across Bruyne. the flank and across the goal, and yeah. Anuj, is it not a good thing? De Bruyne form में, sorry, Di Maria form में नहीं है यार. As much as कल better इनको था, बस positioning ठीक करनी है अपनी inside the box. They need to be more mobile. That's it. Come on. Lukaku goal. Oh, नहीं यार, catching practice दे दिया क्रोएशिया का गोलकीपर को. Man, अरे this don't say match that. has Don't lit up यार. By Livakovic caught that ah, ball easily. Uh, Everyone, भाई जो भी देख रहा है, do not forget to like the stream, and again shout out जाता है to Loudmouth Football as well as both our channels, Almighty Sports Plus and Almighty Blues FC. And Almighty Sports Plus पे regular content is going to begin right after the World Cup, so don't worry about it. We are doing weekly content वहाँ पर भी अभी, don't worry. We are है, do check it out. And Loudmouth Football भी काफी content कर रहे हैं यार. People do give him some love, absolutely. यहाँ पर क्रोएशिया, पता नहीं यार, क्रोएशिया, are they sitting back, are they like trying to slow the game down, Uday? mostly, yeah. Right now, in the first 4 minutes, what I've observed is that Belgium are on the ball and Croatia are trying to defend well, and now they're What trying the to build hell? from the back. भाई कोवाचिच, भाई क्या प्लेयर है यार.
Man, I'm really lucky that Kovacic is in Chelsea, bro. Yeah, What a I think this player. is the first decent run that he's made. This is the first decent run I've seen हाँ him. मतलब Because, but in the tournament he's really stood out for Croatia यार. yeah. No doubt, no doubt. एक सेकंड. ओहो गोल. ओहो कोटवा with a save, bro. Courtois with a save. Kovacic. Bro, Liverpool fans will ex-Chelsea know that he goalkeeper, can man. score as well. He learned a lot from Petr Cech, so. That was a Good, yeah. typical. Kovacic, nice. You made one scintillating run. You put one shot on target. Good, but that wasn't good enough. He could have belted that. Yeah. आराम से belt करता अंदर. नहीं वही he is that player something kind of nothing वाला player है ना that he comes out of that kind of मतलब I always called him the गरीब Eden Hazard in midfield, you know, when he does Hazard on his prime. He can actually have that ability. People just need to tell him that भाई तू कर और कर रहे तू करता नहीं enough. तो वो है मतलब जैसे हम 2 सीजन पहले रीस जेम्स के बारे में बहुत बात करते थे. बंदे में काफी दम है. इस सीजन बिफोर इंजरी भाई वो लगा भाई क्या क्या प्लेयर है, लेकिन वो ये वापस से इंजरी हो गई. देखो अब क्रोएशिया ने इंटेंसिटी बढ़ानी शुरू कर दी है. They started pressing now. हाँ Front line अरे भाई especially. गेम अभी हो रहा है क्योंकि यार हाफ टाइम में होंगे ना कि क्या चल रहा है दूसरे गेम में, थोड़ा डिटेल में बात हुई होगी. तो यार वी कैन नॉट टेक अ चांस क्रोएशिया इज व्हाट दे आर सेइंग बिकॉज़ मोरक्को एज थिंग्स स्टैंड दे आर टॉपिंग द ग्रुप. और रिमेंबर एज मच एज कनाडा हैज अ प्राइड और नेक्स्ट होस्ट कर रही है, इतना कुछ मेजर Nice, चेंज Lukaku. नहीं Good होगा. layoff. Come on. अरे Good यार hold-up play, bro. Come on. De Carrasco, this Bruyne is on trying his you. बेस्ट. अभिषेक बिगा ब्रो कैसे हो? नाइस टू सी यू ऑलवेज. आर शर्मा भी भाई कहाँ है सब लोग? आ जाओ यार, मुझे अनाउंसमेंट करनी थी. सब यार मेंबर्स को बुलाओ यार, सब लोग. इंद्रानील अपने मेंबर्स ग्रुप में. भाई इंद्रानील आप हो क्या मेरे मेंबर्स ग्रुप में? एक सेकंड में चेक करता हूँ यार. इंद्रानील हो ना आप नहीं हो तो मुझे आप हो शायद. एक सेकंड भाई. सब मेंबर्स एनीवन नॉन मेंबर्स एवरी ऑल सब्सक्राइबर्स कम यार. एक अनाउंसमेंट है, मैंने पोस्ट किया उसके बारे में. पीपल आई होप यू गाइस गेट इट, बट बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था यार. आप लोग बहुत दिनों से मुझसे पूछ रहे थे. ओके इंद्रानी नहीं है यार. अनुज मैं ऑलरेडी थॉट दे दिया यार. मैं बोला यार डी मरिया नॉट बीइंग देयर as much as we would not like an injury to anyone, it is But actually a blessing in disguise for Argentina क्योंकि मेरे ख्याल से he has not been that person. और again in the main match मैं बोलूंगा डी मरिया is much needed. He's indispensable even in this form. he लेकिन is against Australia indispensable, I I can think. see them beating नहीं. Because he's been dribbling past defenders, but he loses the ball, no doubt. But he is showing a lot good skill. He's been fiery. हाँ कल वाला he did much better yesterday. He's been good. I think he's been decent. Given his age, 34, he's been good. I think against Australia I have a strange feeling he might just try Dybala यार in that position. Who knows? Dybala as a number 10 would work because they are using Messi as a number 10 right now. He's having a free role, right? हाँ, so what Messi I'm on the trying to say right, is here Messi और Dybala kind of interchange uh, in between the game. Messi and Dybala will work well. Messi on the right, तो Dybala in the center. And हाँ I और would still go मतलब for, switch करेंगे based on the gameplay. yeah. McAllister is a must. Brighton midfielder has been amazing, immense for Brighton as well. Good centre midfielder, box to box. And for them, he's playing in a more advanced role. So I think, yes, McAllister has to start. या इंद्रानील आपका ये क्या है यार? आपका इंस्टा आईडी क्या है? मैं ढूंढ रहा हूँ, एक सेकेंड. इंद्रानील शायद हो ना आप इंस्टा में. भाई इंद्रानील कैन आई टेल योर इंस्टा आईडी लाउडली? इज इट अलाउड? हो यार आप इंद्रानील को ऐड कर देते. एक सेकेंड. मुझे तो याद है मैं ऐड किया था यार. अरे गोल. ओहो व्हाट अ सेव भाई. क्रोएशिया अटैकिंग ब्रो. you कोर्टवा tell me सेव. first, आप बोलते हो गोल मारे फिर से वो ऐसा है. You are driving me nuts, bro. That is what you get in Watchalong, bro. अगर ऐसी सिंपल सा बोल देता व्हाट्स हैपनिंग देन मजा just आ रहा है follow the मुझे. commentary on the chat. हाँ, सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा ना. That is good. The मैंने reaction अपना is random. something Is it a that goal or is it is a just save? natural to how it is. Anyway, let me just add Indranil. और भाई सब लोग do check out Almighty Blues FC on Instagram. और ये shot by Modric. Again brilliant save यहाँ पर by Courtois. But Souza with a cross जो गया है बहुत Good shot. आगे. नहीं Good.
भाई कोटवा, 2 important saves यार, must say, नहीं? Nice, nice. Yes, very crucial saves. And this is a must win situation for them. So they need to show up. We have no excuse to give, we I know it's a bit rusty. It's been a bit tough for Oh, Belgium, but yeah. Witsel with a very important interception. Very important. Just like Lukaku was there for Belgium ना 5 minutes ago. यहाँ पर I think you had a Croatian, I think Kramaric शायद था विट्सल के पीछे. But they've been dependent on Modric all in all. Modric has been the one orchestrating their plays for them from the right. Yeah, exactly. वो ये honestly Brozovic with the shot यार इस बार. नहीं Kramaric ही था, sorry. Modric and Kramaric with the shots. So they had 3 shots यार, one Kovacic, one Kramaric, one Modric यार. तीनों ही saves कोटवा Good, ने किया. decent, nice. अरे But they अरे beat the defense. good Huh? to The see you. point is they beat the defense. The defense is still open, right? They almost ओके beat the भाई defense. मैं यहाँ पे क्विकली देख रहा हूँ भाई, मैं देख रहा हूँ सम पीपल हैव एडेड टू द स्ट्रीम, इसलिए आई नीड टू मेक अ क्विक अनाउंसमेंट अभी. एवरीवन, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी इंस्टाग्राम. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक भाई 1 सेकंड ऑफ योर लाइफ एंड गो टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी और चेक करिए, बिकॉज यू कैन विन एन एब्सोल्युटली फ्री जर्सी यार, जो एक गिव अवे है. तो गो विद दैट. इट्स obviously the lucky person wins it, and that will happen on the day of the final or the next day of the final. लेकिन हाँ, बहुत ही simple procedure. You just need to put a story and predict your first, second and third team and tagging me and sportshub.in. ठीक है, simple सा है बहुत ही. और the winner, all the correct predictors will go into a lucky draw and among them one person will get a jersey. और आप देखे थे, मैं नेदरलैंड्स का जर्सी रिसेंटली पहना था. You can get the jersey of a choice. ट्रस्ट मी, द जर्सी क्वालिटी इज रियली गुड, आई कैन अश्योर यू दैट. मैं बोल रहा था, आप सुनिए डेफिनेटली. तो भाई दिस इज द पोस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, और दिस इज व्हाट यू नीड टू पोस्ट ऑन योर स्टोरी with the winner, runner up and third mentioned in your story and tagging both of us that have posted this. ठीक है, तो pretty clear everyone. Do it, try and do it, you know, before knockouts or during the knockouts. जितना जल्दी करे उतना बेटर है. First come first serve भी हो सकता है in terms of tie, who knows, right? Let me just check it out. लेकिन हाँ, honestly, it's worth it in my opinion. Absolutely free है. What's the prediction so far? पता नहीं उदय, तो आपने तो बोला था 2-1 बोला था ना आपने? मैंने 2-1 बोला था, बट अभी तो 1-0 ही होगा मेरे हिसाब से. इट विल बी अ सिंगल गोल मार्जिन इज व्हाट आई आई एम थिंक गेम ऑलरेडी ओपन अप हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन हो साथ गया. तो साथ में गोल इफ ही आई एम नॉट मारेंगे. रॉन्ग. कोई प्रोलिफिक प्लेयर है ही नहीं अभी. दोनों टीम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं. क्रैमारिच, चलो, दे हाँ, आर ट्राइंग टू प्लस गेट प्लस आई समथिंग. थिंक बोथ गोलकीपर्स हैव बीन आल्सो काइंड दे ऑफ, बीन गुड. दे बीन वेरी या गुड. प्रीटी गुड. सो आई थिंक वो भी एक रीजन है. ग्राम पॉटर नहीं यार, हुआ नहीं ग्राम पॉटर. नाइस टू सी यू. डेरेन रीस जेम्स फायरिंग शॉट्स एट आवर फॉरवर्ड्स, व्हाट अ गाय. यू नो व्हाट रीस जेम्स ने क्या किया? तो ही वेंट ऑन अ Q&A, ठीक है, एंड Q&A में ही वाज आस्किंग who was the best forward that you've played with or something like that, or played against, right? So he said that it's 3 left wingers for me: Vinicius Junior, Rafael Leao और Sadio Mane. ओके. ठीक है, and he's not उसमें he does not have a recent ex-Chelsea player or any current, Chelsea player. I think that's what Darren is referring to. But honestly, the 3 names he took are probably the best right now on form in the last say 18 months, right? या. Salah you can add maybe, but Reece James the right side में करता है, तो I can understand why he went for left wingers. राइट. Yup, Darren, absolutely. अरे Trossard is off यार. Trossard is off. देखते कौन आ रहा है भाई. I hope something. Thorgan Hazard baby. हाँ, Torgan Trossard थोड़ा Hazard. ऑफ ही है. वो है ही ऑफ एक्चुअली. He hasn't been living up to भाई the this is promise. negative, man. Please. Surely Eden Hazard should have been the guy यार. But he's more scintillating. I think he's more direct. Thorgan Hazard. Let's see what happens. If He's he more fits in the direct system, why and not? he's more dynamic, athletic. I understand that. तो वो ये तो आप Carrasco, he can do the Carrasco role, to be honest. Yeah, he came to the left flank. Yeah. Strange. Roberto Martinez, man, you have so much of talent on the bench. I'm Lukaku shocked. is not doing anything, man. Lukaku is trying to hold the play, but his headers, his passes, that final touch is not accurate enough. भाई सागनिक मेरा भी लिगामेंट टेयर ही यार. देखते हैं.
Hopefully me and Neymar both get well soon. और क्या ही बोलूं मैं. Graham Potter is announcing. Graham Potter you cannot buy because Todd Burley को करना है signature boss. करेंगे लेकिन Zakaria Todd Burley. Bakali तो मतलब खिलाया नहीं. What will he do buying 4-5 center midfielders? नहीं, I think it's about getting his players, ना. That's the point. वो he's not had a single window of by for himself ना अभी तक. True. Love to play Drogba. Yeah, he said that exactly. When I said ex-players were recent ex-players, like for example, say I think he's played with what Morata, if I'm not wrong. He has, right? These games, pretty sure he has. Then who else? No, dude, he hasn't played with Morata. No. मतलब Morata left in basically 2018, right? हाँ, लेकिन वही इन एंड अराउंड वो रहा है. अरे गोल होने वाला है. Surely it's a goal. Come on, man. Don't अरे play it. Lukaku hit the post. अरे Why यार, Lukaku doing Lukaku देख things? रहा हूँ. Lukaku hits the post. I think Carrasco ने मिस किया. In my opinion, Carrasco ने हग्गा सबसे पहले. What a guy, man. फिर What a हग्गा guy. Lukaku ने. What भाई a मैं guy. दिखा दूं This was ऐसे one हकते. opportunity. This was one opportunity, clear opportunity. Post. मारो वो Terrible पे. भाई. Terrible. भाई खत्म. मैं बोल रहा हूँ भाई Belgium team. That chance again a cut through pass किसने किया? People saying De Bruyne not there. What a But at pass least by De they're Bruyne, trying. bro. At least What they're a trying, pass. I mean, चलो at least confidence boost हुआ होगा थोड़ा बहुत, like there has to be something. लेकिन गेम अच्छा हो गया अभी. ये अच्छी हमें अच्छा, It मुझे is अच्छा becoming लग रहा है end-to-end, न्यूट्रल. yeah. But this should have been a goal, man. Clear goal. हाँ, क्रोएशिया के तीन No थे excuse. चांसेस. करेक्ट होते 3 चांसेस दे हैड. बेल्जियम हैज हैड 2 प्रॉपर चांसेस नो. ठीक है, 2 एंड दोनों लुकाकू. एक करास्को भी था ओपन चांस. हाँ एक्चुअली यू कैन काउंट एज 3 चांसेस एग्जैक्टली. तो भाई दोनों टीम से 3 चांसेस हुए यार लास्ट 15 मिनट में. सेकंड हाफ हैज बीन गुड इन माय पर्सनल ओपिनियन. अगेन गोलकीपर्स हैव बीन गुड, लेकिन इन माय पर्सनल ओपिनियन भाई लुकाकू शुड हैव स्कोर्ड. आई नो थोड़ा डिफिकल्ट था, बट यार कंसीडरिंग लुकाकू व्हाट बेल्जियम वुड एक्सपेक्ट, आप करोगे. Devanik, I agree. I don't agree. Yaar. The match is actually gotten much better in the last 15 minutes. Uday, would you agree? For sure. Like we भाई expected end it to end हो to. रहा है यार. Come on. It has heated up and it's kind of like, ये मैं agree करता they've हूँ. Devanik become जो very बोल रहा है. pacey, both teams. So I KDB think, showing yeah. levels. Golden chance miss. Golden generation misses golden chances. यार भाई मैचिंग तो होना चाहिए ना अनुज. Come on. लेकिन उसी बात पर Golden भाई knee सब लोग bronze लाइक कर has दीजिए. become rusted bronze generation is what they've become. Yeah, this team is not going past round of 16. If they're playing this football, this is the third match. They're बोलो playing क्या? this crap football. What a miss. मैं सोचा ऑन गोल आने वाला है. This is something bro. क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? What the hell, bro? Lukaku 3 chances in last 13 minutes. इसको निकालो. Actually no, ये to be fair to him, I don't think he anticipated. I know as a striker you have to anticipate, लेकिन वो deviation हुआ था. तो after deviation, getting that and putting that inside is difficult as much as And I that would was like to outside, criticize by him. the way. He crossed the byline, so it was outside. हाँ, actually he did. Where ball goes into net and VR rules no goal because toenail wasn't clipped shorter. Nice one, yaar, bhai. I'm pretty sure it's Mikhail. Nice one, bro. Very nice one. Again, Mikhail, I'm pretty sure I'm busy, bro. अगर free हो तो बता देना यार. जब भी you want to come on, you know that. KDB को तो जीतना नहीं है वर्ल्ड कप, रहने दे. क्या फायदा? अरे, I think he was like trying to क्या बोलते हैं, instigate the team यार. भाई do something. I think that is what is. I don't think who would want to win a World Cup, please. Devesh, come on. Much love to you, bro, but you know it. लेकिन हाँ, यार वो एक बेल्जियन चीज है. आई एम श्योर उदय सीन ओवर द इयर्स. बेल्जियन एंड नेदरलैंड्स टीम ना, दे आर नोन टू इम्प्लोड. ये दोनों टीम्स ना Yeah. Now होता they है. are definitely they are prone to imploding. As simple as that. Yeah. There's no. It's just अब देखो ना sad. दोनों Every इस player is नेदरलैंड committing some individual error. That is the problem. हाँ There is a lapse नहीं, in every department. Defense, the नेदरलैंड्स और problem. बेल्जियम इसलिए तो वर्ल्ड कप नहीं जीती यार. मैं बोल रहा हूँ आपको, डायरेक्टली बोल रहा हूँ. मी एज अ नेदरलैंड्स फैंस यहाँ पर obviously उदय follows Belgium a lot as well. I thought we were friends, Ankit, best friends. I am disappointed. अरे अल्वारो मोराटा. भाई मोराटा, मैंने इतना बोला बस कि यार रीस जेम्स ने आपका नाम लिया, तो आई वाज सपोर्टिंग यू ब्रो. as much as I don't actually, but anyway.
Yeah, it is Mikhail. Thanks, Lukaku doing Lukaku things. बिल्कुल. भाई पैसेलिच आ गए क्रोएशिया के लिए. Pasalic is a good चेल्सी. defender. I like the fullback. He plays as a left पैसेलिच. center half, right? Pasalic is a midfielder. Oh, sorry. He's a midfielder. He's more like So a that is cam Pavlovic. actually. That he plays for Poland, I think. Pavlovic. Yeah. हाँ, लेकिन Petkovic is the striker who's come on, right? Petkovic, we have played him recently, Zagreb. So Petkovic is very good as well. Livaja has gone off. Kramaric has gone off. So Pasalic is a good midfielder, to be honest. For Inter Milan, also, I think he he gets has in a the good box. quality. Wala, he's that kind of a midfielder. He gets in the box. Fuck, Souza, fuck, yaar. fuck, fuck. What the hell? Souza is balling. I'm telling you, Souza is a good fullback in my opinion. काफी अच्छा है. भाई दूसरे मैच में क्या हो रहा है एवरीवन? कोई देख रहा है दूसरा वाला मैच? देखते हैं. भाई 1-2 ही है. Morocco still on top of the table. Man, this Nice. is going to Morocco be. has stunned everyone. Again, I must say, Morocco, once they concede first, they don't do well. But if they scored first, having said that, यार Morocco are there or thereabouts a lot of times. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है that they have been underrated in this World Cup. याद रखिए, Hakim Ziyech is back. Yeah, And they Hakimi have was the some. main outlet, to be honest. Right flank is where they can be most lucrative, right? Ziyech, Hakimi. Over Hakimi, flank exactly. करके और वही वो नहीं. निकाल लेते हैं. Defense, यार. Defense also, you have Agued, you have a size. Roman size. Hmm. He's a good leader. Exactly. He was linked with a lot of big clubs also. I remember that. He played for Wolves. Yeah. Agued का own goal हुआ by the way. Oh, Aguero अच्छा है. वैसे अच्छा खेला है वो, to be honest. पहले 2 मैच में काफी अच्छा खेला है. He should be starting for West Ham now. Let's see. Is it own goal or what? हाँ, own goal दिया गया है It was वो. an own अच्छा, goal. not Deflection a था ना left back. player का. It was a deflection on the foot. So I think unlucky. He was Yeah. unlucky. He tried his best. बुफाल भी है. काफी अच्छे प्लेयर थे. एल नसीरी, अमराबाद, we all know that. Premier League fans. Okay. यहाँ पे डेंडोंकर, did he get booked? Booking, obviously. Yeah. He was on the run, right? Could have easily gone through the defense. देखो these kind of runs, Kovacic needs to make more. He's very good at it, but he needs to make more. Yeah, for sure. I कोवाचिच don't की think. गेम अच्छी थी 1920 2021 2021 में अच्छी थी काफी. अरे वाह वाह ग्वाडियोल भाई, what is that? Oh, what a run! Guardiol, man, easy Guardiol doing Guardiola pulled off Zuma. a human Rudiger. son. नहीं, सॉन तो फिर भी अटैकर है भाई. आपको याद है which was that match? Was it Chelsea against Ajax? Was it Mikhail or any Chelsea fans remember? Zuma had that crazy run. Oh yeah, I and remember. And then Rudiger also had one Rudiger also last has had season. plenty. Yeah. Yes, you're right. Beckenbauerish kind of run, you know. यार ये बुढ़े हो गए हैं बेचारे. विट्सल को देखो. गोले अरे भाई, कोटवा मैन, कोटवा मॉडरिच कोटवा का क्या इक्वेशन है यार, रियल मैड्रिड. देखो Courtois is doing this thing. Alisson, he's pulled off an Alisson, a long one. See, Alisson is starting ahead of Edison. You know, he's एक्चुअली आर्ग्यूबली ना बेल्जियम के लिए भी, बीइंग अ लिवरपूल फैन, क्लब ब्रूज के लिए मिन्योले हैज बीन वेरी गुड, बाय द वे. Oh, he has been decent, very decent. Yeah, you're right. आई थिंक ही वाज ऑलवेज अ गुड शॉट स्टॉपर, राइट? Always. शॉट स्टॉपर तो अच्छा था. Magnolia has always been a mature player. Not a ball playing keeper, but traditionally he's like De Gea's son. So नहीं, लेकिन इवन कोटवा का ना, मैं बोलता हूँ ना, जब वो चेल्सी में था ना, हिज डिस्ट्रीब्यूशन wasn't good. No. He has improved. Now he is definitely with Madrid. He has stepped up. but last season काफी अच्छा था. खैर last season he was very good, but most of the time bro. अरे भाई, narrow angle by De Bruyne. पता नहीं यार, De Bruyne बहुत अकेला पड़ रहा है उस attacking midfield area में, in my opinion. Strange, but anyway, it is what it is. Yeah, I mean he's a little ahead, so couldn't really find any space to give a back pass. So yeah, Uday, if you can just retweet my tweet, bro, it'll help a lot. Actually, I'm watching the game on the phone, though. Just requested you third time, bro. Please, if you can retweet my tweet. I have tagged you on Twitter. I have tagged you and given you a shout out, bro, in all the For platforms. sure. मैंने अपने community में डाला है.
Goes Uh, without saying. It goes without saying. okay. Second half is really good, yaar. Yeah. Everyone watching, भाई क्या लग रहा है? No, yeah, Dhiren, honestly, the game has picked up after those substitutions. To be honest, by Lukaku, as much as he is not, finished. I don't know. Would you say that having that focal point helps, right? As in definitely, It does. uh, And see, it has created more chances for them. But again, Kevin De servicing has Bruyne. been servicing hasn't been that great. But they've created a good supply line. So I think Lukaku should be putting those balls in. एक ही opportunity मिलेगी, मारो goal. इतने miss कर दिए chances. Now I don't think Belgium, their chances of winning the game are diminishing. Croatia can Hmm. still pull off on a counter easy because they have more confidence. But 20 Did मिनट में Belgium क्या कर waste लेगी the Belgium? chance with the goal by trusting Martinez? यार अच्छा क्वेश्चन है काफी. मतलब For I don't sure, know. आज के मैच में भी they could have conceded goals. They got in behind the defense. Not that Belgium were bad, but it's a No, game but where if you see carefully, the World Cups that have happened, has Martinez used the talent in the best possible manner? As in, no, again, not at all. Poor uh, man management, poor recruitment of the team, poor selection of the first 26 players. Everything has been poor. yeah, there have been a lot of question marks. लेकिन वही है मतलब देखो, I would compare it to maybe England. Why? Because यार, as much as people बोलते हैं ना जीतना चाहिए था कुछ, people forget at the same time there were a lot of other countries also having great squads. Okay, people forget that. I think Germany between 2010 and 2015 was fantastic. Spain was fantastic. Brazil on paper they were fantastic. And who else? As in probably I'm missing quite a few. Netherlands, in fact, arguably to 2014 where they were like the golden generation themselves, right? तो Yeah, नहीं बोल सकते आप, राइट? इट्स एक्सपेक्टेशन होती है बट इट्स नॉट बाय यू नॉट एंटाइटल्ड टू विन काइंड ऑफ थिंग. इंग्लैंड का वही था 2006 2010. वाओ, व्हाट 2002 से लेकर 2010. वाओ. लेकिन साथ साथ में सेम टाइम में यू हैड सम ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स प्लेइंग फॉर ब्राजील यार ड्यूरिंग दैट एरा. बाय करास्को गोइंग ऑफ, डेंडोंकर गोइंग ऑफ, Doku coming in, Tielemans coming in. We बाय needed डोकू. Tielemans. I don't know why they didn't start with him. I know he's a bit off form, but still, he's at least a Yeah, I think dependable player. Plays with electricity. I think in this case I agree with Martinez actually, because what he wanted is he wanted De Bruyne to get that space and freedom. He wanted a Dendonker and a Witzel to be behind him. ठीक है? Mm-hmm. Well, कि Witzel is not a good Tielemans player. Yaar. defensively Witzel has थोड़ा सा. lost his. I don't know. Witzel को नहीं खिलाना चाहिए था. That's why I was like Tielemans, Dendoncker and KDB. एक सेकंड में देख रहा हूँ यहाँ पर. अरे गोल होने वाला है. ओ माय गॉड, कनाडा with the. Oh man, Canada just hit the bar, yaar. Things would have So what about the changed. bars? Come on, Lukaku, मोटे भागले. अरे हाशिम थैंक्स यार, हाशिम थैंक्स अ लॉट फॉर दिस कमेंट, मींस अ लॉट. अगेन भाई, आपको अगर अच्छा लगता है ना कंटेंट, एंड सेम चीज मैं रेकमेंड करता हूँ, उदय का कंटेंट में देखिए यार सब लोग. ट्राई एंड वॉच इट एज मच एज पॉसिबल. अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है. आई वुड हाईली रेकमेंड, सो गो एंड वॉच लाउड माउथ फुटबॉल. इट इज टैग बिलो हमारे दोनों चैनल्स. और बेस्ट चीज मैं क्या बोलूंगा, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंड ऑफ शेयर स्ट्रीम्स एज मच एज पॉसिबल, लाइक देम. अपने आप the algorithm kind of promotes us to the next stage, and that's what happens. That's actually the deal, yeah. तो जितना ज्यादा लोग करेंगे that will be brilliant. Again, मेहनत तो काफी लगती है, you all know that. हम तो नॉन स्टॉप बना रहे हैं भाई 1.5 साल से. Hopefully we get that growth that we are really seeking with all your help, which we have got as well, of course. uh, Sweating playing just 10 minutes. Lukaku doing Lukaku things, यार. Lukaku के बारे में बोल रहे हैं ना अभिषेक, I'm assuming. हाँ, Lukaku घर में ही बोल रहा होगा. Exactly, Jack. You know my thoughts here, Jack. You know my thoughts. Owen Hargreaves should have been played much more. और वहां पर मैं बोलता हूँ because he played for Bayern Munich at the time, Jack. मैं controversy बोलूंगा, that is why he didn't play, in my personal opinion, which is not right. Continuous failure at big tournaments, but no structural and tactical changes. These do bring Martinez's management under question. Yeah, as in there have been a lot of, जैसे उदय ने रेफर किया था ना, like Martinez, for example, Thierry Henry when he came, na. So what do you think? Thierry Henry arguably
could have been the manager itself, nahi? But Or was he's been a disastrous assistant coach as well. So I think, I mean, Thierry Henry hasn't been a good manager, not a proven manager. So I wouldn't want to comment on him, but I wish him the best. You know, so. नहीं मतलब people are saying that Martinez probably should do something out of the box. वो बहुत typical वाला Martinez तरह से खिलाता है. और for example that this 3 at the back वाला system he's been playing and playing and playing. मतलब he's not experimented lots as well. Maybe Martinez he needs to should go. take. That's it. He needs to go. They need a complete reflux in management, complete reflux in the players. Enough of playing old players. 30. This is the oldest, the second oldest squad in World Cup history. The first, which has Australia holds the record in 2010 World Cup for the oldest squad, 32.6 years old. This is 31.6 years old. There are a bunch of grandpas with fucking sticks who are playing, literally. Yeah, but Chouameni यार honestly मतलब I was surprised कि कल वो खेले, लेकिन मैं बोलूंगा he in terms of France का Chouameni has been midfield he has average, I owned. think. Pretty average. नहीं बट ही हैज बीन द मेनस्टे ऑफ फ्रांस इन मिडफील्ड यार. इमेजिन अगर चौमनी उतना भी नहीं करता ना, फ्रांस का मिडफील्ड वाज द मेन कंसर्न इन माय पर्सनल ओपिनियन. एज मच एज ही इज नॉट स्टूड आउट, कल आई के थिंक ही मैच इज में डन अ was pretty लॉट. poor, I felt. कल कल yesterday was poor. I don't think टूर्नामेंट में poor था. Anyway, that's just an opinion. Tottenham DNA doesn't leave you. Yeah, there should be goal because it got off. नहीं यार गौरव, goal line technology तो I think we cannot debate, can we, Uday? No, I don't think so. Even if Yeah. it's under radar, under question, you cannot reverse the decision. Yeah, it's not an opinion based technology, it's Hmm. objective technology. वो वाला तो I Yes. don't think we can debate. So there is this new trend going former player becoming manager, more recently more than half of them failing. Actually हमें लगता है ट्रेंड, गौरव मैं बताना चाहूंगा, Didier Deschamps was the World Cup winning manager, first World Cup winning player as well, captain as well for France, remember. डिएगो सिमियोने आज नहीं मैनेजर मिले, बहुत पहले बने थे. ठीक है, ही वाज अर्जेंटीनाज प्राइमरी मिडफील्डर. एंटोनियो कॉन्टे, ही इज बेसिकली अ मैनेजर. ही वाज इटली एंड यूवेंटस प्राइमरी मिडफील्डर. Carlo Ancelotti has won trophies, a lot of them as a player. I think पहले भी 80%, इनफैक्ट मैं बहुत कम ऐसे होते थे हु कम ओनली मैनेजमेंट, जैसे मोरिनियो है, जैसे आपके सारी है, बहुत कम ऐसे मिलते थे. इनफैक्ट इवन क्लॉप और I know you're talking about the former player who's great, but even Klopp and say Tuchel have played football at the highest level, but not इतना क्वालिटी नहीं था इतना, इसलिए we don't know about them. Come on, Belgium. You need to win this game. Croatia, oh man, Croatia का counter should have been done better. Should have released the ball, नहीं? Perisic on the ball. Okay, भाई डोकू भाई ये अरे the बढ़िया. way he plays ना exciting तो लगता है Come on, बंदा. Doku. Oh, nice cross. Oh, what a defensive header भाई सोजा, बहुत इंपॉर्टेंट था. लेकिन why was Torgan Hazard there यार? राइट फ्लैंक पे आ गया ना वो, लेफ्ट पे वो चला गया. They switched the roles. अभिषेक का बहुत ही इंटरेस्टिंग है कमेंट. एवरीवन डिग्रेड्स एज सून एज दे प्ले फॉर एथलेटिक, राइट? Everyone, let's think about a player who actually improved after. I think Trippier, you can argue that he actually improved his Trippier game, improved. right? Because he was defensively not as good. Because he's a defender, it helped him the way Atletico plays. He Trippier also has became improved. बोलते ना, he became a man from a boy kind of thing going to Atletico Madrid. Alderweireld, अभिषेक आपको पता नहीं याद है कि नहीं, Toby Alderweireld, I think his game improved a lot in Atletico. Yeah, then he joined Tottenham. Yeah, Jeremy Doku. Goku. ड्रैगन बॉल जी नहीं चल रहा भाई यहाँ पे. Dark Arts FC. हाँ, their game against ओके भाई, Man गोल City मार was- दो कोई. गोल 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 गोल. भाई कौन सा मंत्र गा लेते हैं, कौन सा है भाई? Like I'm saying it on record. Poland, USA का I can't say. USA can very dicey, but Poland and Australia and any one of these teams, Croatia or Belgium, they will go out. For स्ट्राइकर sure. ही नहीं है वो टीम में, स्ट्राइकर ही नहीं है. है ना? They don't have competitive players ना. Mbappe वगैरह हाँ, जैसे.
ब्राजील And का again, इतना प्लेयर people है wondering why I'm saying that. Lewandowski obviously is the top striker. When I say top striker, generally they're not having forwards who kind of create much. That's what I yeah, meant. either Brazil or France is winning the World Cup for sure. For For sure. sure. मतलब पता नहीं, मुझे एक फीलिंग आ रही है ना, वो होती है ना गट फील वाली, कहीं ना कहीं पोर्चुगल के लिए. Although I want Netherlands, लेकिन somehow I still feel England that going back in Portugal. round of 16, bro. Senegal is going to take them out. देखना आप. कौन? इंग्लैंड? इंग्लैंड निकलेगी राउंड ऑफ 16 में. हाँ, वाओ, सेनेगल निकालेगी इंटरेस्टिंग. उनको. देखते देखते. मुझे तो लगता है इंग्लैंड फ्रांस तक जाएगा एटलीस्ट, लेकिन देखते हैं कैसे जाता है. अगेन इट्स उससे आगे नहीं फुटबॉल यार, जाएगा. एनीथिंग कैन हैपन. अगर फ्रांस तक चला गया उससे आगे तो नहीं जाएगा. देखते हैं, मतलब what team do you ऑनेस्टली. support? देखो. हाँ. What team do you support? व्हाट्स बिहाइंड मी? नहीं, ऑरेंज. what do you support as in the national team? ऑरेंज ऑरेंज नेदरलैंड्स. अच्छा, नेदरलैंड्स. ओ वाह वाह, ओके. भाई गुड यार, पूरी आई हिस्ट्री लाइक. में वही बताते आ रहा हूँ मैं. बट कोई मेरा नहीं. हार्ट ऑफ डिफेंस में नेदरलैंड्स. मेरा मेन लिवरपूल प्लेयर है, तो मैं मेरा भी भाई थोड़ा सॉफ्ट यहाँ कॉर्नर है पर इसमें. मुझे पता चला है भाई, उदय हमारा कंटेंट नहीं देख रहे, तो भाई उदय को फाइन मिलता है यहाँ पर. अरे नहीं उदय नहीं हमारा. भाई, मैं मैंने आपकी नेदरलैंड्स हालत के देखो. बारे में पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब निकाल के आई वीडियोस एम निकाले भाई 3 महीने से. लिटरली आई एम नॉट एट माय बेस्ट राइट नाउ. अगर आपको पता है, आई नो, एम लिटरली, मजाक मैं कर रहा सोया था, नहीं हूँ. मजाक कर रहा था. बट मजाक कर रहा था, बट हाँ, इट्स नॉट जस्ट नेदरलैंड्स पीपल, एवरीवन वाचिंग, तो मजाक ही था. वी हैव रिलीज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज. अभी भी देखो तो मजा आएगा आपको, क्योंकि मैं गारंटी बोलता हूँ. यहाँ मैं सेल कर रहा हूँ, बिकॉज देयर इज अ सीरीज विच यू विल नॉट फाइंड ऑन यूट्यूब इन अ सिंगल वीडियो. तो मैं अलॉन्ग विद ऑब्वियसली लॉट ऑफ स्टॉलवर्ड्स फ्रॉम आवर कम्युनिटी, हमने साथ में जो भी हम लोग 7-8 वर्ल्ड कप देखे, वी हैव ट्राइड टू पुट फॉर एवरी टॉप नेशन what has been their best World Cup moments or magic moments, iconic moments for last 7-8 World Cups. यहाँ पर क्रोएशिया का बढ़िया अटैक था on the right hand side, but I think if I'm not wrong, विट्सल था ना, विट्सल ने क्लियर कर दिया, राइट? हाँ, एक्सेल विट्सल. गुड, चलो अच्छी बात है. ही इज डन इट 3-4 टाइम्स, बट ही इज नॉट अ प्लेयर यार आई वुड स्टिल गो विद, मैन. डीप ओके, तुम ये कर रहे हो क्वेश्चन प्लेयर. मैं तब से हाईलाइट कर रखा हूँ यार. आंसर इज नो यार. he cannot offer more. He can, but he will not. He cannot. Not after 12 injuries to the fucking ankle. Not happening. People do come back, but बहुत ही रेयर केसेस में that happens. I don't see. और मेंटालिटी भी होती है ना कहीं हजार्ड की मेंटालिटी वही प्रॉब्लम रही है. He does not have that thing that I want to become the best player in the world जो रोनाल्डो के पास था, say for example Messi or Neymar even has, I always felt that was missing. Alexander Pato को देख लो. His अरे decline was what massive. a start One he of the had यार best to his career. sprinters. Wow. One of the best forwards, and he declined Correct. massively. Correct. अरे ब्रिलियंट 1-2 by Croatia, लेकिन again well defended by Belgium. Just about by Brozovic is also balling. Anthony Hell, Taylor is bro, such a disgrace. How's this guy ये देखो officiating ना, a वही मैं World कह रहा Cup? हूँ. सी एक्सेल विट्सल के बगल से निकल गया. Fucking, he's not even doing anything. That's the problem. Midfield sucks majorly, sucking it out. Every team can, but will they is the question ना. Can तो definitely यार, मतलब they are in the World Cup for a reason. ओहो, ये क्या था भाई? ग्वार्डियोल कैचिंग प्रैक्टिस दे रहे. लोग बोल रहे, बेल्जियम वाले बोल रहे बैक पास था. बैक पास तो नहीं था. ओह फक, बच गया. थोड़ा एक्स्ट्रा लगता ना, ओन गोल उसका था. Jack, definitely by Kovacic needs to do more of that. I agree with that as well. He has that ability. We know that. Devesh, worst manager till now पूछ रहे हैं World Cup में कि worst manager ever. Worst manager ever has to be यार, as much as he was a great player, Frank de Boer यार. Ronald de Boer की Frank de Boer क्या नाम है? रोनाल्ड डेकोर. Ronald de Boer यार, he has to be. नहीं Oh नहीं, my फ्रैंक डी God. बोर है. फ्रैंक डी बोर, सॉरी, फ्रैंक डी Frank de बोर. Boer. आप समझ जाओ, जो भी एवर्टन के मैनेजर थे ना, 2 दिन के Worst लिए manager दो. for me, I mean, I don't know. This is too एवर्टन की complex for साउथहैम्पटन me जो to भी. understand, because in this World Cup edition, if you ask me, obviously the Qatari manager, he's been shit. यार फेलिक्स सैnchez इज एक्चुअली गुड यार, मतलब पता I नहीं know he's क्यों a he didn't get it right. Barcelona assistant coach. He was and all that. He's from the La Masia Academy, नहीं, but but if you आप साइडलाइंस देखो ना, he was like, it was at least he was making out to be that his players were not following what he was saying. I know that's a part of management as well. I understand what true. you're saying. लेकिन हाँ यार, नेविल hands down यार, sorry, नेविल has to be Gary Neville. Valencia. Hands down, Gary Neville. I think Argentina and Australia वाला match would be close. Enzo to play a part. भाई knockouts generally are close matches यार.
because एक रहता है ना कि they don't want to lose. Eden Hazard coming people. आशीष नेहरा लास्ट टूर्नामेंट में काफी अच्छा किए थे गौरव, लास्ट कपल ऑफ टूर्नामेंट्स में, तो आई होप बेल्जियम इसे के लिए. ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग भाई? What is happening? बेल्जियम सपोर्टर्स एडन हज़ार्ड आने वाले. आई डोंट नो वेदर दे आर Boo. बूइंग फॉर हिम. भाई सब Time, लोग जो देख time. रहे हैं वो बोलिए. आई Fuck, डोंट नो fuck, वेदर दे आर fuck, बूइंग fuck, फॉर fuck, fuck. एंथनी टेलर और आर दे बूइंग फॉर रोबर्टो मार्टिनेज ट्राइंग टू गेट एडन हज़ार्ड ऑन. डू लेट मी नो They're telling पीपल. him not to यू get नो, him on, I think. I don't know. Because he's yeah, going to take time to people settle who are down, right? watching, I'm requesting you all, yeah, if you can just let me know what the commentators are saying on that part, because it's a very major moment, yeah. I don't think Eden Hazard deserves that. The guy is a legend for Belgium, yeah. I actually don't agree with that one bit. अगर वो हजार के लिए है. Boosto is, I mean, demotivating a player 10 minutes before their fate for the World Cup Decidedly. is uncalled for. This is not accepted. और मे बी वो एंथनी टेलर के भी हो सकता है. मे बी Come आई एम on, यार, जस्ट Belgium goal मारो यार. मैं कमेंट्री नहीं सुन रहा ना. दिस वे आई एम आस्किंग एवरीवन इन द चैट टू हेल्प मी आउट हियर. दिस वर्ल्ड कप नॉट ऑल टाइम. ओके, दिस वर्ल्ड कप में तो वर्स्ट मैनेजर आई डोंट थिंक कतार. आई वुड गो विद द मैनेजर वहां जहां पर आपके पास टीम अच्छी है लेकिन हग्गा है भाई. डेनमार्क राइट अप देयर. डेनमार्क आई वुड से. डेनमार्क के मैनेजर का Shocking नाम. exit for me is Denmark. Shocking exit. For sure. हाँ, तो मैं बोलूंगा हाउ कैन यू परफॉर्म सो बैडली विद अ सिमिलर टीम यार. मतलब व्हेन यू हैव not a great run but a decent run I at least in the mean, last 1 year. there's no one to recover the ball. Look at him. He's jogging on the right flank. Can't do. Sorry. Lionel No Messi is the question. oldest player on record to create 5+ chances and make 5+ dribbles in a World Cup match, with the previous oldest being Diego Maradona against Nigeria. Wow भाई, मैंने अपना एक वीडियो किया था Messi is love. चेक आउट माय वीडियो ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. इसी चैनल पर आप देखिए. आज मैंने किया था. उस Okay. वीडियो में मैंने एक स्टैट बताया about missing penalties and then going on to win the World Cup. Oh, acha. I'll watch it. I'll watch it. Yeah, so that is like it's almost creepy, yaar. I'm telling you, Okay. it's almost creepy with this one Yeah. and that. अरे 100% गोल है. Oh, यार, Guardiol बचा लिया यार. जस्ट ओन गोल होते होते बच गया भाई. Lukaku with the first chance, लेकिन Guardiol did well in the moment. He cleared. And then जो शॉट गया ना भाई मुनियर का, एक तो बहुत ही लेजी एक तो अटेम्प्ट मेरा था. टाइम स्टैम्प बहुत पीछे है, तो my reactions will be late. So forgive me for the लेकिन antic. बूज आए क्यों यार? सब कोई बता दो मुझे प्लीज. बेल्जियम की तरफ से कोई अर्जेंसी नजर नहीं आ रही है. What आई are थिंक you इट्स saying? फॉर He द should be गोलकीपर. positioning himself towards the goal. What the fuck are you doing, Lukaku? ओके, इंटरेस्टिंग भाई. उदय, हजार्ड हैज कम एंड इज टेकन द आर्म बैंड फ्रॉम De Bruyne. De Bruyne क्या बोला होगा उसको? गाली दिया होगा जो हुआ था 2 दिन पहले. कैप्टन बनाने का क्या फायदा है, मतलब? हाँ, I वो भी. don't understand this. Anyways, let be. नहीं, दे हैव टू ट्राई समथिंग ना. सिंपल एज दैट. क्या यार, fucking. But if they draw this, ना, pathetic, terrible, इफ दे आर नहीं, symbolic, इफ सच में वो लोग एडन atrocious, हजार्ड को बू कर रहे हैं, आई स्वेयर आई हैव लॉस्ट ऑल रेस्पेक्ट फॉर बेल्जियन फैंस यार. आई एम fucking सॉरी. players on wheelchairs play better than Belgium. That is the true story behind this. या बट भाई पीपल फॉरगेट एंड आई वुड लाइक टू से यहाँ पर 2018 वर्ल्ड कप में people remember how did Hazard perform in 2018 World Cup. People don't talk about it much. He was fantastic, bro. He was fantastic. Yeah, He was especially the unplayable at Japan times. shirt. Amazing. ठीक है, तो भाई they beat Brazil. I don't get it. I don't get it, to be honest. And the guy is literally been injured all the time यार. उसकी थोड़ी गलती है भाई. जानबूझ के इंजरी थोड़ी होती है. या मैं आपको बोल रहा हूँ, इनको एक्सेल को क्यों खिला रहे हैं? वी Okay, even on my goalkeeper. podcast we hate him. Everyone hates him. We hate Muner. We hate every fucking Belgian midfielder. भाई And मुनियर इतना थक गया, पता नहीं क्या चीजें थका है. He was jogging, bro, entire game. What was he so tired about? I know I'm talking. It's fucking easy for me to talk. pathetic, Get atrocious. Guardiol now, man. वो अवेयर है भाई. Guardiol काफी अवेयर बंदा है. मतलब where the ball is going, anticipate भी अच्छा करता है along with his runs, and he's a good ball player. Get लुकाकू ना भाई, पता नहीं क्या वो एक्सप्रेशन तो ऐसे देता है. ओ माय गॉड भाई, पास कर तू ठीक से. और पता है सच्चाई क्या है? उल्टा है. Yeah, I would agree, man. He's the best Belgian in Premier League. In fact, best Belgian of all time, I would say. Like, I don't know. I would go as far as to say that, yeah, to be very honest. Lukaku. Too deep. नहीं
Belgium has been an underachieving country anyway, right? Lukaku single-handedly losing it for Belgium. या ही लेफ्ट yesterday. उसने बोला कि यार वो कॉन्ट्रैक्ट में था शायद ऐसा कुछ कि यार अगर आप नहीं पहुंचाते हो ना मेक्सिको को राउंड ऑफ 16 में, which has not happened a lot of times, people remember. तो टीटो मार्टिनो ऐसे भी बार्सिलोना फैंस, अर्जेंटीना फैंस विल रिमेंबर यार टीटो मार्टिनो. एक अटैक बनाओ यार, एक अटैक बनाओ सॉलिड अच्छा सा, एक गोल मारना है बस, एक गोल से. Hazard my favorite player. Lukaku's reaction is close to हाँ भाई, Hazard, prime Hazard or something, bro. Come on, Belgium. Oh, the Doku, man. Doku doing something magic. Lukaku, oh my god, this guy should go home. Lukaku को अपना जर्सी निकाल के अभी घर जाना चाहिए. How did he miss that? How did he miss that? Being a striker, this is the thing that you wait for. Lukaku, man, भाई, मैं इंजर्ड भाई, मैं जाता हूँ भाई, मैं बेल्जियम का कलर्स पहन रहा हूँ ऐसे भी, मैं जा रहा हूँ. Honestly, man, what a shit player, bro. Best, Lukaku. Glad that he didn't stay in Chelsea, bro. What a shit player. You have surpassed all levels of being a legendary player. You've done everything in the book of football too. And he's the highest ever goal scorer for Belgium, right? Correct, Uday? He's the highest ever goal scorer for Belgium. He's a fucking twat is what he is. No, Anish, I got the comment. Very bad. मैं इमोशनल हो गया थोड़ा. होता है इमोशन में बह गया था मैं थोड़ा. होता है मेरे साथ हमेशा. अभिषेक Jack is liking it, but I'm like, bro, come on. मतलब honestly मैं बोलूं, I think Uday said a very very nice point पहले कि जब टीम्स लाइक पोलैंड है, इस ग्रुप से कोई भी जाए ना मजा नहीं आएगा राउंड ऑफ 16 मैच में. निकलेंगे सब साले. सब निकलेंगे. प्लेइंग यार क्या मतलब अपनी टोन पे बॉल कंट्रोल कर रहा है. व्हाट इज स्टमक कंट्रोल? आई हैव नेवर हर्ड ऑफ स्टमक कंट्रोल इन फुटबॉल. फकिंग प्रेग्नेंट Lukaku. Oh man, I understand that he's not having any game time, etc. Murata would have scored this. Chest control कर रहा है. Diaphragm पे लग रही है बॉल, chest पे डाल रहा है साला. Oh man, Lukaku is the Maguire of strikers बोल रहे हैं. Oh my, thumbs up after sending golden generation home. Oh man, Mikhail, I swear that was like the way Uday explained that is what he actually did. I have a soft corner. I don't support all nations outrightly, but this is pathetic. Goal हो गया. One more miss. My Guardiol OP, bro. Guardiol OP, what a clearance. Guardiol, get him now. By third ball, he pay and then speak. But you have to give it to Guardiol. ये वाला मैं Guardiol को दे रहा हूँ. What a interception or a clearance बोलो, जो भी बोलो यार. What a moment for Guardiol that was. That was as good as a goal. भाई हम लोग इतना रिएक्ट क्यों करें भाई? आप लोग को दिखाता हूँ मैं क्या सिचुएशन है. Because मोरक्को कहाँ गया यार? ये रहा देखो. This is not acceptable. मोरक्को इज विनिंग, ठीक है. तो अगर बाई चांस बेल्जियम जीत जाती क्रोएशिया के साथ ना, तो भाई बाहर, क्रोएशिया बाहर, टाटा बाय बाय, खत्म. तो ग्वार्डियोल ने बचाया भाई क्रोएशिया का. 2 मोमेंट्स आए. मैं लास्ट के 2 मिनट्स ना, मैं आई एम जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स. आई एम जस्ट या पीपल say was it was equal. This particular clearance of Guardiol was as good as Rudiger in the Champions League final. People who can associate भाई बोलिए. For me it is the tackle of the World Cup, bro. सच में बोल रहा हूँ. Guardiol का जो टैकल था ना, wow, what a tackle, what an interception, what a timing, bro. That literally kept Croatia in that knockout stage. What a superb moment for Guardiola. मैं बोलना चाहूंगा absolutely. You all compared him with me. Honestly, bro, you are still shit, bro, Murata. With all due respect to everyone, both of you should have done better. Lukaku drop another interview tomorrow. By press conference आने वाली है. I'm taking retirement from football. मैं अभी I will just go and work on my fitness, work on my mental health, because the guy is thinking about something else. Honestly, how could he? मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं an injured Ankit would have gone and at least got पैर तो डालता भाई बॉल पर. तू स्टमक क्यों डाल रहा है? It's all PR, man. I'm telling you. वो ऐसे दिखाता, मैं कैप्टन हूं, मैं दिखाता हूं मैं क्या करता हूं भाई. Look at his expressions, Lukaku. भाई जितना बोलता है ना, तू कर, आधा भी कर यार.
आधा भी करता है. He compared him to Cristiano Ronaldo once. I remember that. Crazy, bro. This guy is crazy. और यहाँ पे गोल होने वाला है. Pretty sure. Oh, that's nicely done. Nicely done by Belgium. They just about defend it. और भाई काफी लोग देख रहे हैं. Again, do not forget to check out my socials. That is Almighty Blues FC, because there is an offer going on for a free jersey. तो भाई भूलना मत. भाई हो गया है. हो गया है. खत्म. बेल्जियम का खत्म. और मैं हंस रहा हूँ. Uday will not be liking it. लेकिन the fact is, नहीं, I'm loving it, bro. They should be bantered like anything. They should be. yeah, because this team is like, I don't know what to say, यार. मतलब आप बहानों पे बहाना मार रहे हो. आप एज बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो. देन कोटो आके बोलता वी आर टुगेदर. चांस मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्टिनेज डजंट स्टार्ट द राइट टीम. सेकेंडली व्हेन ही गेट्स फाइनली द प्लेयर्स ऑन द पिच, भाई दे आर स्लीपिंग, ब्रो. De Bruyne क्या सोच रहा होगा यार उदय अभी at this point in time? Just think about it. That Lukaku cannot play with the dad board. Yeah, it's actually true. It's actually true. Absolutely. क्या होगा लुकाकू पता नहीं यार. देखते हैं. भाई दूसरा मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बट कनाडा, आई डोंट थिंक द स्कोरिंग इन द नेक्स्ट लास्ट फ्यू सेकंड्स. हो गया यार. मोरक्को गो एज ग्रुप टॉपर्स. पीपल, मोरक्को वर्सेस जर्मनी या मोरक्को वर्सेस जापान हो सकता है. दिस इज लाइक भाई सेनेगल, मोरक्को. Some moments for African teams as well, यार. हम एशियन का हम बोल रहे थे, but I think African teams need to get a big shout out. Absolutely, यार. Brilliant performance, यार. The way that they've come back again, Hakim Ziyech, bro. Love, you have done very well. El Nasiri, 2 important goals in a very very important match. Arguably आप बोल सकते हैं the most important match in recent history of Morocco. और वो जा रहे हैं into the knockout stage with Belgium going out. Yes, you're hearing right. Belgium are going out of the World Cup. Yes, this is the golden generation जो खत्म हो गई है. Croatia भी यार finalist of last World Cup. They are also in the finals today in the Nations League भी. First of all, यार, come on, let's talk about the Croatia Belgium game. What do you think? I'll put up the lineup again for everyone. Again, जो भी देख रहा है, do not forget to subscribe to Loudmouth Football. Do not forget to subscribe to us. Let us reach the target of likes as well. Again, to check out मेरा Instagram story and Instagram post. You'll get to know what I'm talking about. A great offer going on for you all. मैं कौन सा वापस से वही शेयर कर दिया का, एक सेकंड दीजिए मुझे. तो मैं शेयर करने वाला हूँ अभी बेल्जियम वर्सेस क्रोएशिया का जो परफॉर्मेंस था. But I don't know, man. I know Courtois has got the 8 rating यहाँ पर, but honestly, was it negative from Roberto Martinez, यार? No, I think whatever quality they possessed, whatever quality they had, they displayed the best in the second half. Whatever chances they had 4-5 chances. Lukaku messed it up. Lukaku out of form again. I think Batshuayi को तो मारता है यार. मेरी गलती है. I was in favor of Lukaku coming on, but yeah, I think Batshuayi would have put it in. Batshuayi is more natural, bro. That's what मैं बोलता हूँ यार. बंदा naturally खत्म करता है. Little more fluidic, yeah. Little more direct also. ऑस्ट्रेलिया भी है अंकित भैया, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया भी है यार. मतलब अगेन रिमेंबर, बट अगेन यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप ई एंड एफ अभी, बिकॉज वो एक आपस में भिड़ेगी ना. दैट्स हाउ इट इज. लिटरली कितना घटिया प्लेयर है. एलएम10 बोल रहे बेल्जियम डिजर्व टू बी आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज. वेरी डिसअपॉइंटेड विद देम. Lukaku. Yeah, but let me just check. Belgium could have been saved like Poland, right? Poland pulled a Poland. They did a Polish job. So. नहीं, यहाँ पर मैं आई हैव कपल ऑफ व्यू पॉइंट फॉर रोबर्टो मार्टिनेज भी. यस, आई नो पहला जो हाफ था इट वाज मोर ऑफ अ स्टेलमेट. इट वाज मोर लाइक, यार लग रहा था कि whoever gets the first goal is going to be becoming that team which is going through. वो लग रहा था, राइट. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है रोबर्टो मार्टिनेज waited a little bit too much. I know he got Lukaku at half time, तो kudos to him for that. He tried at least, एक्सपेक्टिंग किया लुकाकू को हम ढोकर लाए भाई, इतना बड़ा है, लेकर आए. काफी सारा टीम टॉक देता है बंदा, पता नहीं क्यों देता है, लेकिन देता है. टीम टॉक तो देता है, लेकिन हम खिलाने के लिए लाए, ठीक है. तो लुकाकू को लाए, लेकिन मैं बोलता हूँ ना, जो 59th मिनट का चेंज है ना, आई डोंट अग्री विद दैट. टॉर्गन हज़ार्ड व्हाइल इज डायरेक्ट और ही डिड प्रीटी वेल. इनफैक्ट जो एक चांस बना था टॉर्गन हज़ार्ड का ही क्रॉस था, नो दैट. लेकिन टॉर्गन हज़ार्ड को इफ आई रिमेंबर राइट, वो आए भी तो ही प्लेड ऑन द राइट हैंड साइड मच. ही इज अ नेचुरली लेफ्ट साइडेड प्लेयर कंपेयर्ड टू. मेरे एक फ्रेंड ने शेयर किया है द गोल्डन जनरेशन ऑफ बेल्जियम.
ओह मैन, बट हाँ तो वहां पर ना जेरेमी डोकू, एज मच एज वो क्लब के लिए इतना अच्छा नहीं किया है इन्होंने लास्ट से 12 मंथ्स कंपेयर टू द प्रीवियस 12 मंथ्स, जेरेमी डोकू लुक्ड लॉट ऑफ, एज बोलता ना एक स्पार्क लग रहा था यार, तो व्हाई गेट हिम ऑन इन द 72nd मिनट व्हेन यू एक्चुअली नीड अ विन एंड यू आर गोइंग आउट? जेरेमी डोकू को लाया 72nd मिनट, ईडन हज़ार्ड को लाया 87th मिनट को। मतलब कम ऑन ब्रो, आई नो ईडन हज़ार्ड आपके नहीं है, चार्ज ही प्लेयर है आपके, जो प्लेयर जो क्रिएट कर सकते हैं। When you need, I know you need finishers, but साथ साथ में you need an extra creator, not just De Bruyne, क्योंकि प्रेडिक्टेबल हो रहा था बेल्जियम का जो अटैक हो रहा था ना, काफी प्रेडिक्टेबल हो रहा था, तो नीडेड कसम है, समथिंग स्पार्क ना। प्रेडिक्टेबल तो है तो ही है। दोनों दोनों इनफैक्ट क्रोएशिया वर लिटिल मोर सरप्राइजिंग ऑन द काउंटर, दे कुड हैव स्कोर्ड ऑफ दैट लास्ट मिनट काउंटर दैट दे इंड्यूस्ड। वो यार बेल्जियम वो बैक टू बैक 490 मूवमेंट्स है ना, इनफैक्ट, कोवाचिच, ब्रोजोविच और कौन था तीसरा, एक और मॉडरिच था बीच में, मॉडरिच था हाँ बीच में। मॉडरिच, करेक्ट करेक्ट। इट्स क्रेजी मैन, वी आर लैकिंग अ डिफेंडर एंड लुकाकू seems good at Lukaku turning into defender. How is that call यार? Defender सेट पीसेस में अच्छा हो सकता है। लुकाकू को लेफ्ट बैक पे खिलाओ। या लुकाकू जैसे को कल लेफ्ट बैक कामाविंगा पे खेला था चाहिए, बेचारा। एरियल थ्रेट मिलेगा थोड़ा बहुत। आई डोंट नो यार, मतलब आई हैव टू से, बट अगेन कंग्रेट्स टू क्रोएशिया, कंग्रेट्स टू ऑब्वियसली, मतलब कनाडा कमिसरेशन या, बट मोरक्को मैन, मैं बोलना चाहूंगा भाई मोरक्को हैज रियली, भाई अफ्रीकन टीम्स मैं बोल रहा हूँ, गाना है, सेनेगल है, मोरक्को है, भाई दे हैव डन रियली रियली वेल ऑनेस्टली। एशियन टीम भी अच्छा किए, लेकिन आई थिंक अफ्रीकन टीम्स आर जस्ट अबाउट ओवरटेकन देम यार ऑनेस्टली। अगेन हकीम जियश भाई अलग ही लेवल के प्लेयर है, बिकॉज ऑफ ही हैज that runner along with them, तो एक they double up attacks, तो कहीं ना कहीं I think it helps them, but now that they're at top, पता नहीं किसके साथ खेलेंगे यार। what is your prediction Uday and everyone in the chat भाई? Morocco has come first, so they will play either of Japan, Germany or Spain, so what is your call Uday? जापान और स्पेन। जापान स्पेन और जर्मनी खेलेंगे ना, अच्छा मैं one of आपको them। बताता हूँ, देखो एनी इन दैट ग्रुप इट इज अ ग्रुप ऑफ डेथ, राइट? एनी टीम कैन कम फर्स्ट और सेकंड, सो आई नहीं, थिंक, what is your prediction? so I'll tell you, I think Croatia will play against Spain, man. I think Spain, if they're playing, because they're coming second, right? Or they're top the group. No, they're coming second. हाँ तो लेट मी जस्ट शेयर इट अगेन भाई, एवरीवन इन द चैट अगेन लाइक कर दीजिए, एंड आई नो दैट देयर वर अ फ्यू मोर पीपल जॉइनिंग यार। आप ड्रॉप क्यों जाते हो एक सेकंड में, समझ नहीं आता मुझे कभी कभी यार, वी आर जस्ट टॉकिंग एंड वी आर कमिंग टू सर्टेन पॉइंट, बट कोई नहीं। दिस इज व्हाट इट इज, ग्रुप एफ और ग्रुप जी, ठीक है, ग्रुप ई सॉरी। तो ग्रुप ई में आप आज पता ही है, Hmm. स्पेन इज टेकिंग ऑन जापान, सो दे आर ऑन 4 पॉइंट्स, सो जापान इफ दे बीट स्पेन दे गो ऑन टॉप, ओके। And I think Germany अगर जीतती है कोस्टा से with a big margin, still either ways they will be on 4 points. So Let me tell I you, think this match can be fixed if Spain and Japan draw, goalless draw just like this one. Then both will progress ahead. भाई पहली भाईचेरी हाथ वगैरह मिलवा लेंगे, and they'll ensure Germany and Costa Rica stay out, irrespective of that result. no, but imagine ना, मतलब वो भी actually arguably आप बोलोगे, and that's the thing. Spain will get Croatia if that's the thing, right? Or that is a repeat of your Euros का match, that match of the Euros for me, ठीक है? Whereas Japan will get Morocco. As in, you would argue that it's not something that you would actually say here which is easier team, which is not. So it's difficult to pick right among them. I don't know. I would say that on form, Morocco is definitely deserving at the top spot. So it's going to be very interesting. FIFA ranking, we are both needs revival. FIFA ranking, तो definitely यार, मतलब वो they take nonsensical matches into consideration. अच्छा यहाँ पर जो भी लोग जुड़े हैं ना, यहाँ पर सब लोग and everyone, especially by members and of course mods, please help me kind of spread that word यार थोड़ा सा. So there is, after a lot of wait, there is basically a giveaway coming on Almighty Blues FC. It's a giveaway. Remember, there's a difference between a giveaway and a sponsor. So यहाँ पर एक giveaway है. So there is a giveaway. All you need to do is you need to put a story and just go to my Almighty Blues FC का page. You will get to know what I'm talking about. There मैंने एक story डाला है खुद, और मैंने डाला है एक post. All you need to do is just put a story with your predictions. Who's going to be the first, second and third place team in the World Cup? ठीक है, टैग करिए मुझे और sportshub.in. You will be eligible to win a free jersey. All the correct entries will go into draw and they get a free jersey of your choice. Please I have already share, got एक Netherlands का jersey and which is absolutely fantastic. share First this the first special to get. giveaway from Sports Hub and Almighty Blues FC in your WhatsApp groups. एक शेयर मारोगे 30 और लोग आएंगे, तो प्लीज हेल्प Almighty Blues,
in achieving the target. Engage, help us in engaging. That's all. बिल्कुल We बिल्कुल appreciate your support. भाई। और बाय द वे अच्छा जर्सी है भाई उनका, नहीं तो मैं ऐसे नहीं बोलता। मैं खुद लिया हूँ पहले जर्सी, आप देख सकते हो, मैंने वॉचअलोंग के दौरान पहला भी पहना भी था, एंड देन ओनली आई एम सेइंग इट, आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ इट, एंड यस इट्स इंशाल्लाह एब्सोल्युटली फ्री जर्सी। इंशाल्लाह आईफोन गिव अवे भी देंगे आपके सपोर्ट में। हाँ नेक्स्ट आईफोन गिव अवे भी करेंगे आएगा। भाई, आप लोग करो भाई, 50 के ले जाओ अपने को। अभी तो 10 के का है, तो हम 10 के से पहले ही कर दिए भाई। मैंने प्रॉमिस किया था 10 के, लेकिन 10 के से पहले मैं गिव अवे किया है। तो भाई सब लोग उसी बात पर सब लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब करिए, एंड लेट्स ट्राई एंड शेयर दैट एज मच एज पॉसिबल, एंड ऑफ Who कोर्स यू do I? कैन विन अ जर्सी एज वेल। I would like to answer one question. Who do you consider GOAT? I think Ronaldo is a GOAT, but he has sabotaged his reputation with Man United. He shouldn't have done that. I know that he's a legend and we all respect him, but that's how it is. He should have ended his career on a good note. But you have developed a little animosity for Ronaldo, but that's fine. I think it's a part and parcel of the game. But yeah, I think Ronaldo is the And GOAT. same thing, people used to tell about Maradona that the drugs and everything. लोग बोलते थे वो same kind of thing, that he probably should have gone there. I thought he was there. That's why maybe Messi gets a lot of votes as well. You can argue that, I don't know, but I would consider all of them. It's difficult to. मेरा तो आपको पता है यार प्रखर, आप तो आते हो बहुत रेगुलरली, राइट? मुझे तो पता है यार, it's a very left field choice and it's a personal choice because I connected with that player the most in my footballing fan life. But that was Iron Robin, and I know it's a very left field choice, but I think he was pretty good, if not very good. Now this De Bruyne and Bruno thing is going like Ronaldo and Messi. I think it'll be more like Mbappe and Haaland. That'll be the next big story, which has already started, right? Feeling bad for Lukaku, whole country will be now against him. Yeah, Anish, feel bad. Okay, fine. I understand that the guy, होता है, people miss chances. But ये बंदा बोलता इतना है भाई, ये कितना बोलता है उसका आधा भी नहीं करता. That is the whole point. The guy gives team talks as though he's, Sir Alex Ferguson. And he's Sir Alex Ferguson का एस भी नहीं है खुद. वो मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई अनीश, with all due respect to you and Lukaku, no respect to Lukaku, sorry. The fact is, भाई आप बोल बच्चन मत बनो यार. That is what I don't like. He's double standards. I don't like people who kind of show off and they're not actually what they talk that they are. You got to basically act what you're actually talking, right? And that's why I respected the Henry here. Is despite him being an opposition guy, the guy always knew that he had a lot of brash. Like, and he did that. Eric Cantona, he had a lot of things, but he did that. Ronaldo, we spoke. Uday ne bola bhi. He does that on the pitch, right? आप इतना बोलो मत यार. लुकाकू उसका क्वार्टर भी नहीं है भाई. That's the only thing. हाँ, लेकिन hate is never good. I know, I understand what you're saying, Anish. That's a good point. Who would have thought Morocco would finish first? उदय, आपकी prediction क्या थी इस ग्रुप के लिए, by the way? मेरी थी बेल्जियम, कनाडा, क्रोएशिया एंड मोरक्को. ओ भाई, फोर्थ रखा मोरक्को को. मैं पता नहीं, I have to go back in the stream and check. Croatian performances have been successful, but the performances were not very industrious. This time they've turned the tide around. They've totally been very industrious. बुड्ढे इतना अच्छा खेल रहे हैं टीम में, but ये वाला मैच कुछ खास नहीं खेले. But still, I think they've done a good job. Morocco have been the surprise element of surprise that is the X factor they've given it. अच्छा, ये एंग्री ना भाई, वो एंग्री लोग लुकाकू के लिए था, बिकॉज बंदा सच में भाई बहुत ज्यादा बोलता है यार, बहुत मुंहफट कुछ भी बोलते रहता है. हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज लाइक इतना, आई लाइक कॉन्फिडेंस इज अच्छा होना, अच्छी बात है भाई, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलूंगा, इट्स फॉल्स कॉन्फिडेंस यार. द गाय हैज फॉल्स कॉन्फिडेंस ऑनेस्टली. मिची वुड हैव हैट्रिक तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट he gets into the right spaces. He's a natural striker. As much as even he has his shortcomings. I don't know. Yeah. क्या करना चाहिए यार बेल्जियम को, आप बोलो यार. उदय, इफ यू वर, हाँ ये इतना भी बोलूंगा उदय, बेल्जियम का एक्चुअली जो ग्रास रूट लेवल फुटबॉल है, द प्लान है, आई थिंक इट्स स्टिल वेरी गुड. People are forgetting they have an Onana, they have a Trossard, they have a really good kind of crop of experience and young players still there. ऐसा नहीं कि बहुत बुरा टीम है और स्क्वाड है. But do you feel that with Origi kind of being very injury prone, Michi Batshuayi not really reaching to his initial levels, by the way अभी भी 90 minutes आप देखो ना, per 90 minutes का, he has one of the best records in international football, Michi Batshuayi. Lukaku, obviously we just spoke about him. So would you say that they should just play with a false nine system and kind of have that, because they have a lot of midfielders, right? Don't they? Midfielders, wingers काफी है. See, my personal opinion is they need to reflux and bring in more youth. Like we've got Charles de Ketelere,
He is a good Mm-hmm. midfielder. He's known well. Doku already started, but he needs to be delved more into the starting 11. I think Doku wasn't being. Obviously, you cannot rely on this youngster, but still, he's got a lot of potent. Similarly, Hugo Sikwa, Romeo Lavia, both these players are also someone they should have pondered over. He's not a risky manager, huh? That's the point. At least other players, Saudi Arabia, look at the manager. He went on a rant. His monologue went viral. The way he motivated them to beat Argentina, they flushed Argentina in the second half. Flushed them. So, you need motivation. There is no motivation in the Belgian squad. They need fresh talent, fresh leaders. De Bruyne still needs to be in the team. He's world class, but he cannot operate around very average players. अगर वो उसने तीन क्रॉस दिए आज second half में, he delivered those crosses right inside the box. Lukaku missed those opportunities. Trossard missed it, and even Carrasco missed it. So I mean, there were plenty of opportunities. It's just a shit show. They ran a shit show. That's all. There's Yeah. nothing more to add to it. Every player knows how good they are. Lukaku is something else. पता नहीं यार वो कौन से दुनिया में रह रहा है. But again, we have close to 70 people watching. यार, I would request everyone, each and everyone here, भाई एक second लगेगा. Go to the title, look at Loudmouth Football, सब्सक्राइब बटन हिट कर दो. अभी हिट कर दो मेरे बोलते. और साथ साथ में अगर आपने हमें खुद सब्सक्राइब नहीं है तो हमें भी करिए. ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस हमारा दूसरा चैनल में बहुत कंटेंट आ रहा है, दोनों क्रिकेट और फुटबॉल इवन आफ्टर द वर्ल्ड कप, एंड यहाँ पर तो आता ही है. ठीक है. और सब लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर, आप लोग को सबके लिए एक बढ़िया ऑफर आ रहा है भाई. यस, दिस इज बेसिकली अ गिव अवे. आई रिपीट, इट्स अ गिव अवे. तो ये भूलना मत. आई हैव पोस्टेड इट आज, इसलिए मैं आज ज्यादा बोल रहा हूँ उसके बारे में. आई हैव पोस्टेड जस्ट बिफोर द मैच. तो आप ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा. दिस इज द पोस्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. मैंने एक पोस्ट किया है. जस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पोस्ट. यू हैव जस्ट पुट अ स्टोरी. प्रेडिक्ट योर विनर ऑफ वर्ल्ड कप, रनर अप एंड थर्ड. दिस इज अ प्रेडिक्टर कॉन्टेस्ट. जो भी करेक्ट एंट्री डालेगा इन द स्टोरी एंड टैगिंग sportshub.in एंड Almighty Blues FC, you will be eligible to get a free jersey from sportshub.in अगर आप जीतते हो इन द ड्रॉ ऑफ द विनर्स, और जो करेक्ट एंट्रीज देते हैं. मैंने तो अपना दे दिया है, आप लोग भी दीजिए. और यस, आई हैव ऑलरेडी गॉट अ जर्सी ऑफ द नेदरलैंड्स. आप देख रहे हो मेरे पीछे, काफी अच्छा जर्सी है. लेकिन लेट मी टेक अ कपल मोर कमेंट. मलंग सा शुड प्ले. अरे यार ज्यादा हो गया ये. एंडी कम ऑन. एक अनीश प्रधान जी का एक क्वेश्चन, व्हाट वाज थियरी ओनली डूइंग एट बेल्जियम ग्रुप? Thierry Henry was basically is a custodian of broken hearts. He is collecting their hearts. That's all. अभी लुकाकू को करेगा ना, सहलाएगा थोड़ा. He'll give him a massage. He'll massage his ego. No, you're a great player. You'll play great for Inter. That's all they can fucking do, man. That's all they can fucking do. नहीं, at that level you would not expect say proper coaching ना. So probably he was more of meant to be doing that. लेकिन वही है, maybe Belgium needs the right choices. I think squad selection सही नहीं हो रही है. That's what I would say. That way mentality, the reason why this is coming out about say off field issues जो हो रहे हैं between Belgium players and whatnot, कहीं ना कहीं I think even the squad selection has to be questioned. Club Brugge are doing brilliantly. I know that in in Champions League, for example, I don't see many players from there, if I'm not wrong. For example, I don't know, correct me if I'm wrong. तो वो सब, None of the players from that. so I'm just saying, like, again, I'm not sure if I know every player of Club Brugge, but again, the ones I know, I think there could be a chance that they could pick rather than names. Just saying. और यहाँ स्ट्राइकर भी, आई थिंक क्या नाम था दूसरे स्ट्राइकर, ओपेंडा, क्या नाम है उसका बंदे का, वो भी अच्छा है शायद. लेट मी जस्ट सी. आई थिंक ओपेंडा, जो बेल्जियम का एक स्ट्राइकर है, ओपेंडा, ही प्लेज फॉर लॉन्स. Yeah, he's actually, even he's decent. But आज Onana missing था. Remember people, Onana was yellow carded actually. He was suspended. 2 yellow cards. So because of that midfield also एक बोलता है ना, बहुत ही flat लग रही थी. Interceptions नहीं थे, transitions नहीं थी. उनको, they're running them over. It was always they were getting run over. That's all. I mean, it was a bad midfield performance. Midfield couldn't control the game. You control the game, you build on plays. You couldn't do that, man. Last 30 minutes they were dominating, but that's not something which is enough for Belgium. मतलब, और भाई कॉन्टे आके कितने बार बचाएंगे यार लुकाकू को? ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक वही प्रॉब्लम थी ना. देखो, एज अ चेल्सी फैन आई कैन रियली टेल यू यार, मतलब उदय नोज इट. मैंने लास्ट सीजन हमने डिस्कस किया उदय काफी बार. द गाय वाज सपोज्ड टू कम एज अ लीडर इन अ ड्रेसिंग रूम, एंड ही एक्चुअली स्पॉइल्स थिंग्स एंड गोज बैक, एंड इट गोज, एंड वहां पे जाकर मुंह खोलता है यार. ऐसा भी नहीं, बंद भी नहीं किया. और यहाँ बेल्जियम में देख लो आप देखो, टीम टॉक्स होते हैं जब भी हमें दिखता है यार, हम भी बेसिकली कल से नहीं है, हमने भी थोड़ा लेवल पर तो खेला है फुटबॉल. द गाय हु एक्चुअली गिव्स यू टीम टॉक्स मोर इज द गाय हु इज सपोज्ड टू बी अ लीडर, बट ही इज द अदर वे अराउंड, एंड दैट डजंट मेक सेंस. आई नो आई एम सिंगल आउट जनरली नहीं करता हूं प्लेयर को, बट आई थिंक समवेयर ऑन द लाइन रोबर्टो मार्टिनेज एंड लुकाकू दोनों को लेना चाहिए, यहाँ पर काफी ब्लेम लेना चाहिए. और अगेन हजार्ड कमिंग ऑन सो लेट. आई नो ही इज नॉट द प्राइम हजार्ड, नोवेयर क्लोज टू इट.
लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट एडन हजार्ड. भाई आप इतना लेट ला रहे हो तो क्यों ही ला रहे हो भाई 87 मिनट में? पता नहीं यार, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया. ऑनरी टू लुकाकू, डोंट वरी, यू विल स्कोर फॉर इंटर. अरे लुकाकू के प्राइम इयर्स है भाई. और अरे नहीं यार, पता नहीं. लुकाकू गॉट टू स्टॉप डूइंग दैट स्टैंड स्टिल शॉक्ड फेस दैट ही डिड. एग्जैक्टली भाई. एंडी, आई लव दिस कमेंट यार. ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर. व्हाट डू यू से उदय? लुकाकू, that's the main Lukaku is problem. a clown. He's turned into a clown now. Unfortunately, after going to Dubai, ever since he joined United in 2016, he went to Dubai with Pogba to get conditioned. Because they were sustaining injuries and they were dancing on that music video, and they were showboating that they are joining Man United together and all that, whatever it was. And ever since he's been a shit player, only for Inter, which look, you might give me the flack for not rating Serie A. It's a great league, but he only performed for Inter. Man United flop. And he's Yeah. been a two-time flop, to be honest. Abhi bhi Inter mein he's sustained injuries and all that, right? He's not been starting games for them. So yeah, I think Yeah. inconsistent. A बट भाई great एवरीवन जो भी देख रहे हैं ना, आप लोग बोलिए. मतलब हमने थोड़ा डिटेल में बात नहीं किया, थोड़ा बात किया था अबाउट व्हाट शुड बेल्जियन टीम चेंज. ऑब्वियसली रोबर्टो मार्टिनेज, प्रीटी श्योर ही विल बी गॉन. आई फील दैट ही हैज टू बी गॉन. दे हैव टू ट्राई टोटली समथिंग न्यू. और लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, यू आर नॉट गोइंग टू बी move as in getting out of the group without actually even giving a chance to yourself. So that is not acceptable, to be very honest. यार डेरिन, देखते हैं यार अभी डिनर के बाद. आई एम नॉट डिसाइडेड येट. लेट मी जस्ट चेक इट आउट. आऊंगा तो लेट आऊंगा, नहीं तो I'll just maybe come out as a review. I might come live later on as well, quite possible depending on the match. लेकिन हाँ देखते हैं, because I'm on medication. I would like to take dinner and then take medication, see how I feel therein, if that's okay. तो मैं publish करूंगा यार, लेकिन most probably I'll do a live review later on, or I'll put up a video later on. तो आज मैं अभी बात करेंगे, हम उस मैच के अभी थोड़ा बात करेंगे एब्सोल्युटली. लेकिन आई डोंट नो भाई. अभी बेल्जियम इज आउट, क्रोएशिया सेकंड. क्रोएशिया, सब लोग इन द चैट डू लेट मी नो हु इज फिनिशिंग फर्स्ट इन द अदर ग्रुप. यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप ई यहाँ पर, बिकॉज यस, जैसे डेरिन पूछ रहा था अबाउट द वॉचलॉन्ग, भाई स्पेन वर्सेस जापान है. अगेन स्पेन वर्सेस जापान. उदय ने बहुत अच्छा एक बोला दैट स्पेन जापान हो सकता है ड्रॉ खेल ले, बिकॉज ऑफ विच जापान विल बी लाइक ठीक है, we'll take Morocco, you take Croatia वाला चीज, which I don't agree. I don't agree. लेकिन एक होता है, it will not be a conscious thing, it might be a subconscious thing maybe, right Uday? That's what you mean. unless for sure subconsciously हो सकता है, but अगर उन्होंने 4 गोल मार लिया, 3 गोल मार लिए जर्मनी ने, if they have a 3 goal margin, then they'll be equalized with Japan. If Japan draw with Spain, then they'll be on second position because of goal difference. So Germany have a chance, but they just need to focus on scoring goals. Musiala needs to show up again. Yeah, as in it's a crucial night यार for all these teams. Absolutely भाई, बहुत ही crucial time है वर्ल्ड को. इसलिए मैं तो कहीं ना कहीं बोलता हूँ, ग्रुप्स मोर देन नॉकआउट्स ना, जो ज्यादा मजा आता है ना, आई थिंक समटाइम्स इट्स द लास्ट मैच ऑफ द ग्रुप स्टेज, बिकॉज साथ साथ में चलते मैच, और भाई एक गोल इधर उधर, गोल डिफरेंस कल हो रहा था. मेक्सिको का लग रहा था कम ऑन दे आर थ्रू, देन सऊदी स्कोर्ड यार. मतलब दैट वाज लाइक हार्ट ब्रेकिंग, एंड सेम थिंग हैपेंड फॉर तुनिसिया एज वेल ऑलमोस्ट, राइट? दैट वाज व्हाट हैपनिंग. या एग्जैक्टली आदित्य, वही मैं, दोनों मैचेस का बेसिकली 3-3 घंटा तो पॉसिबल नहीं है, कंसीडरिंग आई एम ऑन 6 मेडिसिन्स अ डे. लेकिन थैंक्स अ लॉट आदित्य इफ यू इवन सेइंग दैट, एट सम पॉइंट वही है कि यार विद यू ऑल आई डोंट फील दैट आई एम इल और समथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट. आई एम टोटली फाइन. सो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है ना, कम. एंड सेम थिंग पैनल यार उदय, थैंक्स अ लॉट. आई नो दैट इट्स नॉट इजी विद द टाइम डिफरेंस एज वेल, इट्स नॉट इजी, दैट हैपेंस अ लॉट. Spain and Japan could qualify, draw and kick Germany out. Exactly, वही उदय बोल रहे थे. Japan and Costa Rica win, Spain and Germany out. हो सकता है. गौरव, कोस्टा रिका का तो कोई है, हो सकता है पॉसिबल if they win both the games. मैं चाहता नहीं हूँ यार उदय, मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा. मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ स्पेन एंड जर्मनी. It will be a boring competition then. Yeah, we need the या best एज इन, people. मतलब आप पता नहीं आप लोग रिलेट कर पाओगे कि नहीं. विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अगेन मुझे पता है देयर आर पीपल इवन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ऑन द चैट, डोंट गेट इट रॉन्ग. लेकिन भाई आपको याद होगा 2003 का क्रिकेट वर्ल्ड कप में केन्या इंडिया सेमीफाइनल्स था. जो भी फॉलो करता क्रिकेट, कैसा लगा था आपको यार? सच में बोलिए. ठीक है, आप व्हेन यू आर मूविंग टू क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, आई नो अगेन ग्रीस वन द यूरो 2004. आई रिमेंबर वाचिंग द टूर्नामेंट लाइक इट वाज यस्टरडे. I didn't like the tournament as much compared. वही है, I want थोड़ा सरप्राइज होने चाहिए, बट इतना भी नहीं यार. कम ऑन.
योगेंद्र, मेरी भी पता नहीं यार, मेरी भी वार्निंग आई थी मुझे, तो आई एम होपिंग दैट दिस वन स्टेज, सिंपल एज दैट। आई डोंट नो व्हाई, मैं तो बहुत ही जस्ट अ डिस्कशन दैट वी डूइंग, सिंपल एज दैट। एज अ बेल्जियम एंड चेल्सी फैन, आई जस्ट वांट टू मीट लुकाकू एंड हैव अ पीसफुल टॉक विद हिम। सूरज, इंटरेस्टिंग भाई, ये मैच्योर कमेंट लगा थोड़ा। Maguire would have done better than Lukaku. I was being sarcastic. Oh, okay, fair enough. इतना भाषण के बाद मैंने पढ़ा ये comment. I haven't seen Morocco play, but what are the chances of Morocco if they face Germany in round of 16? Actually, that's a great question, Hassan. Bhai, Uday, Germany, man, what do you think is missing in Germany? Let's talk about Germany. The I know final, Costa Rica can, it'll be like a shock अगर जीते, लेकिन supposing they win, only Keylor Germany. Navas can save them. Only हाँ, Navas can लेकिन save them. नहीं, लेट्स अस्यूम कि जर्मनी बीट्स कोस्टा रिका एंड रीचेस द राउंड ऑफ 16 एज प्रेडिक्टेड। अब मोरक्को, वी हैव सीन मोरक्को इनफ। जर्मनी फिनिशिंग मिसिंग है मोरक्को में कहीं ना कहीं, जो लगता है ना, विद जीएश पासिंग, विद योर फुल बैक्स काइंड ऑफ रनिंग। क्या लगता है, मतलब आर्ग्युबली यू वुड से दैट मोरक्को ऑन फॉर्म कैन बी द टीम व्हिच इज मोर थ्रेटनिंग डिस्पाइट जर्मनी की मिडफील्ड। Not in the midfield, not in the center. Center में तो Germany are going to rule the game. They only have a करेक्ट, chance with Ashraf Hakimi and Ziyech, and maybe हाँ, the left winger. एग्जैक्टली, So they just have a game across the flanks. वो या तो overload करके एक फटाफट switch off play करेंगे, अगर overlap करके अंदर near the final, near the the goal post, they might just score a goal from a narrow angle. But like Ashraf Hakimi has been trying that really hard for Morocco, but that's the only outlet they have majorly. They need to या focus, or either they can again barge into the box and let Ziyech deliver those crosses that he has always done. So that's the only thing that they can. अगेन देखिए ना, मतलब दे हैव, मतलब वी ऑल अगेन अनरेटेड मैं बोलूंगा डेफिनेटली, बिकॉज देखो अमराबाद ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, बुफाल भाई काफी टैलेंटेड प्लेयर है, माजरावी वी ऑल नो दैट यार, एवरीवन नोज दैट, हम एवरी क्लब वांटेड माजरावी यार, आई नो ही इज बेटर ऑन द राइट हैंड, बट अगेन लेफ्ट हैंड भी काफी अच्छा है, लेफ्ट साइड भी साइस, underrated center half, arguably one of the center halves of the tournament. El Nasiri has a goal in him, Ziyech बहुत अच्छा पिंग करते हैं बॉल्स, वहीं पर El Nasiri and बुफाल रहते हैं, तो आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट। आप देखो मिडफील्ड इज ओनली थिंग, यहाँ पर अमराबाद अकेले पड़ सकते हैं, तो अगर वो जाता है तो मैं तो बोलता हूँ काफी क्लोज होगा जर्मनी। लेट्स सी, मतलब अगेन फर्स्ट जर्मनी हैज टू बीट कोस्टा रिका, लेट्स अस्यूम दैट विद दिस। एंड अगेन भाई सब लोग जो देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू लाइक द स्ट्रीम, वी हैव अ टारगेट ऑफ, बहुत ही कम टारगेट है, इनफैक्ट टारगेट ही कम रखा है मैंने, तो लेट्स गेट एटलीस्ट 200 लाइक्स पीपल, लेट्स गेट टू 200 लाइक्स, होपफुली यू कैन गेट देयर, एंड एवरीवन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू लाउडमोड फुटबॉल, प्लीज कंसीडर डूइंग दैट, थोड़ा प्यार दिखाए यार सब कंटेंट क्रिएटर्स को। विद दिस परफॉर्मेंस इंटर विल सेंड बैक लुकाकू टू चेल्सी, व्हाट इफ दे डू नॉट मेक हिम परमानेंट? Oh man, Neeraj bhai, Neeraj is a Man United fan. Then he will Neeraj, go to West Brom. Then he will play under Sam Allardyce. and actually he has had a decent career in West Brom on loan. Yeah, he Remember? did. How can And Costa Rica Everton, realistically? Everton will not take him. They don't want हाँ, another. this is actually a question which is difficult to answer. अलग बहुत अच्छा question है. I think मैंने जैसे एग्जांपल दिया ना, ग्रीस वन यूरो 2004, उस ग्रीस के टीम से मुझे बोल दो यार किसको जानते थे भाई, मे बी एंजेलोस कैरेस्टियास वाज द गाय, वो एक गोल मारता था और ग्रीस यूज्ड टू डिफेंड फॉर द लाइव्स। स्पेन के साथ Costa व्हाट Rica's कोस्टा approach रिका is डिड, the same. हाँ Costa Rica's वही, approach is the same. They defend, then they launch counters. That's it. हाँ वही कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव स्टिल एन, आई थिंक कैम्बेल, जोएल कैम्बेल अभी तक है, रिमेंबर इन कोस्टा रिका, यू नेवर नो, कमिंग ऑफ द विंग्स, डूइंग अ पेपे, यू नेवर नो, दोनों ही तो काइंड ऑफ नॉट नहीं चले आर्सेनल में, दोनों ही आर्सेनल के प्लेयर्स, आर्सेनल फैंस विल बी टुपिंग एट मी अभी, शेम दैट द गोल्डन जनरेशन ऑफ बेल्जियम वाजंट यूटिलाइज्ड टू द फुल पोटेंशियल, वैसे गुड बोल रहे, विद such a team Martinez should have won at least either a World Cup or Euros. He had a Ferrari but drove like a Maruti. Well, Messi is good. मैं भावनाओं को समझ रहा हूँ आपकी, but I don't agree that he should have won a World Cup or Euros. I think we tend to look at basically their talent only, but we forget what was the talent available for other teams at the same time. जो हमने स्ट्रीम के दौरान बात किया था, मेसी इज गुड, आई थिंक आप आज शायद नहीं थे स्ट्रीम के दौरान। उदय, टेल मी यार, मतलब did you say, even say 2014 में, 2018 में, did you put Belgium as like absolute favorites to win, or was it like okay they are one of the favorites? What was your Not absolute favorites. Even that time, I wasn't convinced correct? because they were conceding goals that time too.
एंड दैट्स फुटबॉल राइट, दैट्स फुटबॉल यार. मैं ये 8वां वर्ल्ड कप है मेरा. आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी रेयर दैट यू गेट टू see a team which actually you expect to win the World Cup. And again, I'm not talking about win. Yeah, one thing I agree that he should have gotten the better out of them. There's no two ways about it. There, he should have gotten the better out of them. बहुत man management हो गया, you know, rigidity हो गया. And it's so unlike Martinez, bro. Uday Martinez, Yes. आपको याद है तो he was someone in Swansea days, in Wigan days, you know, he was actually known for those attacking side of football, taking risks वाला जो होता था ना. I don't know Huh. what, maybe Everton changed him. I don't know what changed him, or just the Belgium pressure. I think it's just the pressure of the job, just the national team pressure. That's all. He was always a very average, technician. कोई tactics वगैरह कोई है नहीं up his sleeve. It's just a very. I don't rate him that high as a tactician. As simple as that. I don't. या माजरोई टू एग्जैक्टली भाई. फ्रांस का ऑलरेडी हो चुका है. योगेंद्र कहाँ हो? कल हमने लाइव भी कर लिया हमने. बेसिकली वीडियो भी निकाल दी भाई. जब देखो अपने इट्स ऑलरेडी डन. Belgium managerial appointments has been poor for this talented group. They should have gone for a top coach. Martinez was never a top coach who could manage this group of talented players. पता नहीं यार, Belgium, the way the talented players are, like, do they need someone like, say, for example, just putting out names like that, you know, एक होता है ना, like a Zidane, एक होता है ना, wow, मतलब this guy has come, तो लोग सुनेंगे, मतलब they will not have at least off-field issues. Is there a point there? Yeah, I think that's his whole point. To be honest, I think. But still, man, it's just something. I think they're floating the same boat as Poland and um, even sorry, Mexico for that matter. I think Mexico would have been at a better pedestal. They deserve to go through. It's just sad how a team like Mexico couldn't who performed better than Belgium couldn't get through to the knockout stages. So it's just Yeah, on and off. मैं ये ये कह रहा हूँ question. आपको कि ये बहुत narrow fixtures हैं. 3 fixtures के basis पे तुम knockout कर रहे हो teams को. मानता हूँ कि it is a World Cup, it has to happen, but it's also being played in the winter. No preparation. Fucking Qatar had 3 fucking months to enjoy one camp. They played 10 indoor matches against friendlies against different teams. So I think this is something which is again supposed to be considered. And yeah, it's just tough on so many fans. Yeah. Do you think KDB Lukaku will play next World Cup? I think KDB will, right? I'm pretty sure he should, right? Come on. I know if he does a Belgian thing, you know, जो होता है मतलब taking early retirement and stuff like that. I hope नहीं हो यार. I think Belgium, they need KDB. Yeah? They need KDB. I think he has to be the leader of the next World Cup. He Never has to shut be. up. I mean, उसके बगैर तो कोई काम चलेगा ही नहीं इनका. गाड़ी रुक जाएगी पूरी. हाँ बिल्कुल यार, मतलब आई नो काफी टैलेंटेड प्लेयर्स है. ओनाना है आपके, टीलेमंस है, बट कम ऑन, एज एन दे डोंट हैव द लीडरशिप, दे डोंट हैव दैट फिनिशिंग एबिलिटी, नोवेयर क्लोज. कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, ठीक है. एंड व्हाई डिडंट वी सी डी केटलारे ऑन द पिच? मैं तो बोलता हूँ यार, इवन हजार्ड भी आया 87 मिनट में, क्यों आए? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि यार ही शुड हैव मेड दो चेंजेस अर्ली ऑन. टॉर्गन हजार्ड कमिंग इज गुड. आई नो उदय ने बोला था ही इज डायरेक्ट, आई एग्री ही इज डायरेक्ट, लेकिन व्हेन यू हैव अ जर्मी डोकू हु इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट प्लेयर एंड हु डज, वो एक्स फैक्टर प्लेयर चाहिए था उनको, जस्ट टू काइंड ऑफ एक एड्रेनल रश बढ़ाने के लिए. लुकाकू आए, डोकू आए आफ्टर टॉर्गन हजार्ड. वो इटसेल्फ बहुत सरप्राइजिंग था कंसीडरिंग कि बेल्जियम को चाहिए था एक विक्ट्री, नॉट अ ड्रॉ, रिमेंबर. तो वो काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए. डी कैटलारे के इतना जरूर बोलूंगा, आई थॉट दैट मे बी यार, हाँ, टॉर्गन हजार्ड एक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती तब मे बी ही कुड हैव बीन दैट गाय बिकॉज ही इज मोर अटैकिंग. लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई, मतलब ऐसे भी नहीं बोलूंगा टोटली रॉन्ग था, बिकॉज रोबर्टो मार्टिनेज डिड नॉट वांट अ सिचुएशन जहां पर वो एक गोल खा जाए. तो टॉर्गन हजार्ड का डिफेंसिव वर्क रेट आई थिंक इज मच बेटर देन डी कैटलारे. नहीं उदय? Yeah, sure. टीम I सिलेक्शन वाज अ totally मेजर agree with you. रीजन. I think it's just about how, as a unit, he doesn't fit in the system anymore. Even Doku, for that matter, being played on the left, I think he should have been played in the center. There have been massive lapses on behalf of Martinez. Man management is something which is again under the scanner. I think Yeah, it's just a very but talking mismanaged. about man management, पीपल, हु वाज योर मैन ऑफ द मैच यार? मैं अभी बात कर रहा हूँ बेल्जियम के मैच का, बेल्जियम वर्सेस क्रोएशिया. यार ये जो कमेंट है ना, मैं तो इस बंदे को दूंगा यार, भाई ग्वार्डियोल, दैट टैकल. मतलब एज मच एज हम लुकाकू को गाली दे रहे हैं, ऑल दैट फेयर इनफ, एंड प्रॉब्ली वही है, स्टमक से जो गोल करने की कोशिश करता है भाई, उसको तो मिलना ही चाहिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. 200%. 200%. लेकिन Using a वो diaphragm, एक using टैकल a था ना, fucking. आई थिंक, उदय, वाज इट द टैकल ऑफ द टूर्नामेंट यार? इट वाज राइट अप देयर फॉर मी यार.
For sure. I think there have been spectacular interceptions, but yeah, I think this was one of the best tackles I've seen, so far in the tournament. So I think he's done a great job, and he's the most financially evaluated player at 53 million, and clubs are trying to chase him down. So देखते हैं क्या बनता है इस चेल्सी multi-talented. फैंस, ग्वार्डियोल सुन रहे हो भाई? हमें पहले ही लेना चाहिए था, अभी और बढ़ेगा उसका वैल्यू, गड़बड़ होगी तो that's not great. We know that what happens to what happened to Chouameni in the last 12 months. We all know that. वही होने वाला है इसका भी, मुझे नहीं लगता आएगा, मतलब गट फील बोल रही हूँ, I don't know what. Okay, do you think Chelsea will struggle to sell Lukaku after a Hall of Shame performance? By I think Chelsea needs to take an L and needs to take pennies and just let him go. Yeah, honestly, agar basically Potter is going to take him, and again we'll come to the club football, say end of this month, वापस से, लेकिन I would say that it will be a mistake, trying to get him to fit. Let's see. Lukaku had 1.98 xG, which was more than Morocco accumulated in whole group stage of. Gaurav, I hope that stats are correct, by the way, but assuming that is correct, Gaurav, Crucial by chances. this talks for itself. This talks for itself. Lord Origi, we have a Liverpool fan in the house in Uday. By would you say that even Origi arguably was? Would have played better. Yeah, For correct. sure. He would have 200%. at least Good given. dribbling. He's got good dribbling. Good hold-up play. Would have played better. हाँ. Or he presses, he kind of, is in your face wala cheez at least, right? So I get it. Guardiola man of the match, exactly. Doesn't look like he wants to play. नहीं, Gaurav, I disagree यार. I think I disagree यहाँ पर. With all due respect to you, I think कौन सा चांस है यार वो जो करास्को का चांस था, और देन you had a Opening. हाँ, वो वाला चांस जो था डिब्रोइना का, बढ़िया पास है यार, बिल्कुल. कम ऑन, बहुत चांसेस है यार. XG उनका ज्यादा है बेल्जियम का फॉर श्योर. हाँ, फिर 200%. डिब्रोइना ने एक क्रॉस मारा था लुकाकू के लिए, 3-4 याद है? crosses हैं De Bruyne. Like हाँ, they बहुत missed it अच्छा all. क्रॉस था. Uday really like that cross. I remember that moment as well. लेकिन again भाई क्रोएशिया, I must say that भाई उनका जो मिडफील्ड था ना, मॉडरिच स्पेशली, ऑफ कोर्स, मतलब he doesn't even age यार. कोवाचिच 2-3 बहुत अच्छे रन्स मारा, और ब्रोजोविच टुवर्ड्स द एंड काफी अच्छा किया था, और अगेन क्रामरिच आल्सो काइंड ऑफ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आज. तो वो चार जो कि ना, along with obviously Guardiola, सोजा यार, मैं तो बोलता हूँ सोजा, वॉच आउट फॉर दिस गाय यार. दिस गाय हैज बीन द मेनस्टे ऑफ द Croatian defense. Let's see who can give tough time to France and knockouts. हसन पूछ रहे. इंटरेस्टिंग यार, मतलब अगेन मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ क्या बेसिकली कॉम्बिनेशंस हो रहे. अभी तो पूरा टेबल बना नहीं है, तो आई विल जस्ट पुट इमेजिनरी वाला. तो यहाँ देखिए, फ्रांस ऑब्वियसली प्लेइंग द सेकंड ऑफ ग्रुप सी, वी नो दैट, एंड दैट इज व्हाट, पोलैंड, राइट? They will polish the polish. They will totally. It will be a whitewash. Poland will not stand a chance. नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद में देखो, दे विल प्ले द ग्रुप बी का विनर वर्सेस ग्रुप ए का लूजर. तो इट कुड बी इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस और सेनेगल वर्सेस फ्रांस. अच्छा, I thought France and Poland are already matched, right, for the round of वो 16. राउंड ऑफ 16 में है, अच्छा. अस्यूमिंग कि वो फ्रांस जीते. और आपने बता दिया, उसका जवाब दे दिया. तो क्वेश्चन क्या था, फिर हु तो विल गिव अ फ्रांस टफ टाइम? फिर तो फ्रांस ने they will win against Senegal or England irrespective. France are too tight. They're too यू strong थिंक a सो? team. आई Mbappe थिंक will अदरवाइज पीपल, take them मुझे out. लगता है ना, मुझे लगता है इंग्लैंड का डिफेंस इज एक्चुअली अंडररेटेड. आई जेन्युइनली बिलीव दैट. याद रखिए, क्वाइट पॉसिबली बिकॉज ऑफ एम्बापे, काइल वॉकर माइट कम इन फॉर दैट गेम. सो रिमेंबर, आई नो ही इज नॉट 100% fit, लेकिन पेस. They should pray that Maguire isn't playing that match because Ousmane Dembele will make him look like I don't know. I mean, he'll make him look like a fucking pillar. हाँ, डेम्बेले अच्छा कर रहा है, लेकिन वही फिनिशिंग वहां पे इशू है डेम्बेले का. लेकिन ग्रीजमैन यार, आई एग्री, But dribbling ग्रीजमैन, अच्छी है. डेम्बेले. Griezmann has been a good hold-up player. मतलब he's been the orchestrator literally. अब वो करेक्ट. midfield में उसका रोल बन गया है, तो अच्छा खेल रहा है वो. ग्रीजमैन देता है बॉल Trust डेम्बेले को, डेम्बेले देता है क्रॉस. आई नो व्हाट यू आर सेइंग एग्जैक्टली. बेल्जियम शुड नाउ प्ले न्यू जनरेशन ऑफ प्लेयर्स विद डी केटलर, ट्रोसार्ड, डोकू एंड अदर्स. बिल्कुल बिल्कुल 100% अग्री. और अगेन बेल्जियम फैंस डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड. आई एम टेलिंग यू भाई, आपका अच्छा है, मतलब बेंच स्ट्रेंथ है, आपके पास एक पूल है. इट्स जस्ट अबाउट द सिलेक्शंस. थोड़ा ज्यादा भरोसा कर लिया मार्टिनेज ने. आई रियली डोंट नो टिल नाउ व्हाई डिड लुकाकू गो इफ ही हैड टू परफॉर्म लाइक दिस. एंड वो भी लास्ट के जस्ट हाफ वन हाफ इज व्हाट ही प्लेड, राइट? अरे दीवानो, मुझे पहचानो. फिनिशिंग ऑफुल हुए. देखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आई थिंक, Uday, would you say Group F disappointed you the most until now? The most boring group has been this one. I mean, it has If been not for exciting in a Morocco, way it would have till been it all came really down to the last game. not worth watching. Yeah, I mean, no, second half was worth watching, but
for the mistakes that Lukaku made, definitely it was amusing. It was entertaining. ठीक था मतलब. Match entertaining की बात करूँ तो middle. I'll give it 5 out of 10 to be honest. So, या बिल्कुल. ओके. माय गॉड. इंटरेस्टिंग दैट. भाई काफी मैं सोचा नहीं था भाई बेल्जियम को इतने सारे ट्रोल मिलेंगे यार. मतलब ऑनेस्टली आई नो लुकाकू एलिमेंट होता है तो भाई वो वही आप बोल बच्चन बनते हो ना, तो you need to basically do that on the pitch and whatever you're doing in life, right? You know, you cannot just say, you have to do what is preaching. आप पॉलिटिशियन नहीं बन 200%. सकते भाई. तो 200%. Trent should go back to Liverpool. I don't think Southgate even remembers he picked him. हाँ यार तो बात कर like लेते हैं इस Van बारे में. Dijk left the camp. Trent should also leave. वो तो स्काउटिंग कर रहा है ना, अभी स्काउटिंग कर रहा है बैठकर, अभी जूड बेलिंगहम से दोस्ती बना रहा है. लेकिन ऑन अ सीरियस नोट उदय, हमने बात की थी वेरी ब्रीफली, बट अभी इंग्लैंड का सेनेगल का मैच है, राइट? इन दैट Hmm. पर्टिकुलर मैच फॉर एग्जांपल, what do you think? As in Southgate, has he got the best shot of this team? Last game में were you convinced? First game में they looked really good against Iran, right? फिर obviously they had USA, but then Wales, I think it's probably Wales being bad, or would you say Rashford ने enough किया है to say for example start, uh, Foden ने enough I किया to think start. I think the best thing was to change the lineup, and he brought on Foden and Rashford into the game. I think that was a Mhm. game-changing moment for them because obviously, I think when your team is not performing with Saka and Sterling and whatever, I mean, you still need to like make a few changes. And Phil Foden not playing was criminal. He had to feature. I think even in the first few games he should have featured. They would have been more creative. But Mhm. yeah, I think Southgate made the right decision. He saved his ass, and I think England fans are all in awe of him. So I think yeah, they're all praising him. या अच्छा, बाय द वे अगेन एवरीवन वाचिंग, आई होप भाई ये लाइक टारगेट बहुत ही कम टारगेट है फॉर व्हाट द पीपल नंबर ऑफ हैव वॉच्ड दिस स्ट्रीम. तो भाई सब लोग एक बटन लगता है फ्री है एब्सोल्युटली, लाइक कर दीजिए. टॉकिंग अबाउट फ्री, एवरीवन हैज अ ग्रेट चांस टू विन अ जर्सी. दिस इज द फ्री गिव अवे हम कर रहे हैं ऑन द डे ऑफ द फाइनल और द नेक्स्ट डे ऑफ द फाइनल. ये गिव अवे होगा, बट यू हैव टू मेक अ प्रेडिक्शंस अबाउट हु इज द बेस्ट और अदर हु इज गोइंग टू बी द विनर ऑफ द वर्ल्ड कप, द रनर अप एज वेल एज द थर्ड. वो इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस आपने क्या करना है, एक स्टोरी डालना है, मुझे टैग करना है, sportshub.in को टैग करना है. वो सब डिटेल्स है मेरे इंस्टाग्राम आईडी में, तो डू गिव मी अ फॉलो, डू चेक आउट दैट पोस्ट और मेरा स्टोरी चेक करिए, आज ही करिए. और मैं तो बोलता प्रेडिक्ट कर दीजिए बाय पुटिंग द स्टोरी एंड टैगिंग मी एंड देम. बहुत ही अच्छा क्वालिटी का जर्सी आता है बिकॉज आई हैव बॉट वन फ्रॉम देम, एंड दैट इज बेसिकली द नेदरलैंड जर्सी. आप देख रहे हो मेरे पीछे, काफी अच्छा है. Or yes, one winner who will be predicting correct will be getting that prize at the end. And of course there's another sponsor which I'll be discussing about in future streams as well. वो अलग है, ये अलग है. This is the giveaway. Okay. Nora Fateh is half Morocco and half Canadian and works in Canada. She would be very happy. Yes. I've read about that. Belgium is getting trolled more because of Lakaka. As I guessed, in this World Cup, Belgium's goal was to score a goal. Oh my God, Jafar bhai. Um, when you have players like KDB, Hazard, Trossard, Lukaku, you have to perform consistently. I just want to know how the hell they are second place team in the world. I think we've Rankings, already man. answered this question to be honest. Actually, they rank teams as per their defensive performance and their XG. Chance creation is something they've always kept in mind. All parameters are covered. So I think Belgium stands second in chance creation from 2014 to 2020. They've done pretty well in terms of creating chances. Now this is the only World Cup where they've been symbolic. So उनका अभी ranking बहुत पीछे जाएगा. Don't worry, Correct. they'll be और placed where they are justified to. and in fact, be it qualifiers, be it friendly, international friendlies, be it say Nations League, etc., they have not done so badly. Remember last time Nations League में they were there in the Nations League finals tournament. They were in the top 4 as well. So that got them a lot of points. लेकिन नीरज बहुत अच्छा पॉइंट, आप मैसेज गोड का ही जो कमेंट था ना वहां पर, आई थिंक ही इज एड्रेस्ड टू द सेकंड पार्ट, दैट Batshuayi started for Yeah. Belgium in last game shows that golden generation is still stuck. आई अग्री. तो यहाँ पर आई वुड नॉट से स्टक. अगर आप क्लोजली फॉलो करते हो ना क्लब ब्रूज एंड ऑल दोस थिंग्स, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट. इट्स अबाउट रोबर्टो मार्टिनेज नॉट गिविंग एक्स्ट्रा, क्या बोलते हो, ट्रस्ट टू से बादशाह इवन. लेकिन आप अगर होते ना रोबर्टो मार्टिनेज, मैं नीरज आपसे पूछता हूँ और सब लोग जो देख रहे हैं वो लोग बोलिए, उदय आप भी बोलिए, आप बादशाह के नंबर देखो ना in terms of minutes to goal, he is right among the very cream in the entire world, and in fact in the all-time list also. He's that good for Belgium. So when you have those numbers, you have to pick him. You cannot pick an Origi who has been injured. You know what I mean? Or you Yeah. cannot pick, say, an unproven striker at the very top level. Lekin what I agree is like
आप बेसिकली अगर ओपेंडा है आपके पास तो आप उसको ट्राई करो, हु इज मच मोर एनर्जेटिक, हु लुक्स लाइक अ फ्यूचर ओरिजी, सो व्हाई नॉट ट्राई हिम रादर देन ब्रिंग ऑन लुकाकू मे बी। लेकिन दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट कॉल, अगर आप ले गो लुकाकू को यू यूज हिम। तो आई वुड नॉट डिसएग्री टोटली, बट एट द सेम टाइम देयर हैव बीन सम पोजीशन जहां पर ही शुड हैव chosen better, and एक स्टक लग रहा है वो तो आई अग्री, स्पेशली ईडन हजार्ड आल्सो यार, pretty sure Uday he's played the last game for Belgium, Eden Hazard. For sure, I think so. Yeah, I think he won't be maybe in the friendlies or maybe in the Nations League or whatever Euros में आ जाएगा शायद, अगर इनको रिक्रूटमेंट नहीं मिली ठीक ठाक. But yeah, I think Yeah, for now, I think he won't play in the next World Cup. I think, or maybe he might be warming the bench. You won't see the same Eden Hazard ever. Forget him. yeah, correct. And again हम ईडन हजार्ड का बोल रहे हैं कि he will be kind of finishing his international career probably भाई लुका मॉड्रिच यार, मतलब मैं क्या बोलूं, आज भी जो भी अटैक आ रहा था ना, इट वाज काइंड ऑफ स्टार्टिंग और एंडिंग विद लुका मॉड्रिच, एज इन Yeah. ऑलमोस्ट 9 out of 10, राइट? तो I don't know, यार Luka Modric, can he do the unthinkable again? I know they are second in the group. They are probably going to be playing यार स्पेन, वो यूरोस का जो होगा, अगर होता है तो, अगर आप लोग प्रेडिक्ट करें ब्रिलियंट रहेगा। लेकिन यूरोस का जो मैच था, लुका मॉड्रिच, ब्रोजोविच, कोवाचिच, भाई दैट मिडफील्ड कैन नॉट फॉरगेट दैट गेम। अगर वो होता है कल को, स्पेन की मिडफील्ड वर्सेस क्रोएशिया के मिडफील्ड, आर्ग्यूबली टू ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड्स ऑन पेपर, आई वुड से। Yeah. तो क्या क्या ओनली इन मिडफील्ड, व्हिच मिडफील्ड वुड यू नहीं, पिक? I वुड यू would पिक rate मेरे लिए हेनरी? मिडफील्ड में जर्मनी, स्पेन, बस ये दो टीम्स हैं जो अच्छे लगते हैं. क्रोएशियन मिडफील्ड में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं लगती है. दे हैव टू फेस बिगर ओपोनेंट. देखना, दे फिजल आउट. दे उदय विल यहाँ पे वेल लूज लेफ्ट देयर करते हुए एंट्री. मेरा क्वेश्चन, बट टेल मी, क्रोएशिया वर्सेस स्पेन, so basically picking Spain. No, I'm taking Croatia versus Spain. Obviously, Spain will win it if तो they face it will Croatia. be a midfield game, you know that Spain का most of the games they you know have a strong midfield, that's why they've been doing well, right? तो True, true. चलो, Egypt smashed Belgium in friendly before World Cup, so maybe it was coming for them. Yeah, I remember that very well. और वो हारने के बाद आई नो जैसा फ्रेंडली जीशान, लेकिन मुझे ये भी याद है साला और हजार्ड सब यू नो खड़े होकर मजाक वजाक कर रहे थे, तो थोड़ा वहां पर भी काफी हेट आया था, आई And नो दैट। second string team खेली थी. Not all starting 11 players were there. हाँ But फेयर anyways, इनफ। all strings are same. So भाई इस फॉर्म में तो इंटर के लिए भी नहीं खेलेगा, जेको इज बेटर भाई देन लुकाकू, मैं आपको इज एक मच बेटर। can I share the screen for a minute? एक चीज या बताता डेफिनेटली, हूँ. या सैड तो है यार, लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब ये So there was a person who had asked, right, कि why are Belgium second? So I'll show you. Shots per game देखो अगर World Cup qualifier में 16.4 is a massive number. 9.6 is decent. 13.7 and even in this World Cup they've only scored one goal but 11.7 shots रहे हैं. और ये इस गेम के खासकर आई थिंक पहले तो बहुत ही कम था इनका, अभी इस गेम ने बढ़ा दिए, थर्ड गेम ने. बट अगर आप क्रोएशिया के देखोगे 11.7 अगेंस्ट 9.7. क्रोएशिया ने बस चांसेस उनकी क्वालिटी वाले थे उनके. They've had more quality chances and they've scored 4 goals. So it's just about taking the right chances at the right time. Lukaku could have fucking scored 4 goals out of those 4 chances, but he couldn't. So he was poor, piss poor. Thanks for sharing यार, बिल्कुल। Why pick Vertonghen और Toby? They could have brought company and from Burnley. देखो यार, honestly they are at least playing football at a certain level. Plus as much as we feel they are very old, they're actually not very old. आप देखो, just go and check their age. और it's a fact about you know Roberto Martinez does not trust the youngsters. I think Debas करके एक है उनका एक defender. I don't know, he didn't get a lot of trust. बोयाटा भी नहीं उठाया इस बारी. बोयाटा ले आते, कुछ ना कुछ हाँ, हो जाता Boyata है. and all have been they have underachieved, you know, जो as youngsters, you know, that's Vertonghen why is you're worse laughing. though. Vertonghen is so slow. No mobility. Switch He's off slow, speed exact. is also मतलब वही poor. है, there will be players, वही है, I'm not a Belgian scout यहाँ पर बोलते हुए यार, these are, you know, हम करेंगे scouting और करेंगे, देखते हैं, hopefully there will be people. But Batcho is better than Origi in terms of flexibility, yeah, you can argue that is definitely there. लेकिन Origi भी यार एक he runs in behind, right? Correct, Uday? He runs in behind. That is something that Origi you. runs in behind, but he's more of a person who can confuse the opposition with his dribbling. उसका स्किल उसके पैरों के साथ अच्छा है, लेकिन वो वही पर 90 बैक नहीं देता. छोटे ट्रांजिशंस में वो अच्छा खेल लेता है. He's not a player who can give you consistent performances, no. And he's more of a person who can operate around the box. You cannot expect him to run across the field. You can't. या भाई, हजार्ड और मैकडोनल्ड्स का बहुत बहुत जोक्स होते हैं यार। अभी बेचारा नहीं है, इट बी वेरी सैड मोमेंट फॉर हिम यार, नोइंग हिम। व्हेन इज इंग्लैंड कमिंग होम हैपनिंग यार?
मैं तो बोल रहा हूँ भाई, इंग्लैंड अगेंस्ट फ्रांस विल बी द वन ऑफ द गेम्स टू वॉच फॉर श्योर. लेट्स सी. मतलब आई एम जस्ट सेइंग इट. लुकाकू सेड ही शुड बी इन द सेम ब्रैकेट एज लेवा, केन एंड बेंजेमा. He dug his grave. Telling you, Lukaku का सुनो मत. Simple as that. Benteke would have done better. This I agree. Benteke would have done better. But again, it's just not about Lukaku. It's about everyone. Yeah, generally. Why actually wake up in the last group game of, and that too second half में? Until then, where were you? लास्ट मैच में, यू नो, दैट इज पहला कनाडा के साथ यार, उदय, रिमेंबर राइट? इवन दैट कनाडा वाज द बेटर टीम. उसमें तो शिट परफॉर्मेंस, कनाडा बहुत सही खेली थी और बेल्जियम को हारना चाहिए था, जीत गई वो. बिल्कुल भाई. स्पेन स्टार्टिंग 11 में वही ढूंढ रहा था, आया कि नहीं. मेसी इज गुड, थैंक्स अ लॉट. अगर वो सच है, करेक्ट है, तो भाई ब्रिलियंट स्टफ देयर बाय मेसी इज गुड. मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन कोई नहीं. फिटिंग है लेकिन ये. आई एम सीइंग हियर उनाई एमरी, एस्पिलिक्वेटा. आई थिंक इंटरेस्टिंग. जापान पेल लेगी इनको आज. रोटेशन हो रही है, जो रोटेशन हो रही है, मतलब तो एस्पिलिक्वेटा प्लेइंग 2 ऑफ द 3 ग्रुप गेम्स. दैट्स इंटरेस्टिंग. रॉड्री कंटिन्यूज, वो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. पाउ टोरेस, बाल्डे स्टार्टिंग, व्हिच इज आल्सो इंटरेस्टिंग बिकॉज़ आई थिंक आर्गुएबली दो फुल बैक्स जो हमने बोला था दैट दे आर क्वेश्चन मार्क्स फॉर द टीम्स, जॉर्डी अल्बा और एलेक्सैंड्रो हैव एक्चुअली बीन बेटर फुल बैक्स देन मोस्ट एंटिसिपेटेड. और मैं बोलता हूं क्यों. It's a tournament at the end of the day. People forget that this is a tournament with just 6, 7, 8 games at best, right? For a team. वहां पर you can have a great month and do well. So that is why they are there. इसलिए there was a lot of calls for Ramos as well, although I had mixed feelings about that. Busi, Gavi, Pedri, Nico Williams. Oh, Morata and Olmo. That's interesting. तो असेंसियो नहीं है आज. देखते हैं यार. मेसी इज गुड. आपका मैं कमेंट स्टार कर रहा हूँ. लेट मी जस्ट चेक इट अप. पता नहीं आपको दिख रहा है क्या लाइनअप? आ गया है क्या उधर? लेट मी जस्ट चेक इट अप. मुझे तो आई डोंट सी इट येट. लेट मी जस्ट ट्राई एंड सी चेक. और भाई मीनवाइल सब लोग लाइक कर देना स्ट्रीम. डू नॉट फॉरगेट देयर इज अ गिव अवे हैपनिंग, but you have to, you know, put a story with your predictions. So hey, instructions on my Instagram ID. Also give a follow, give a subscription to my Loudmouth Football. Uday knows his stuff absolutely. He is a Liverpool fan, but he covers content end to end just like we do, we try and do. And try and do that absolutely. It'll mean a lot. And of course Almighty Sports Plus पे भी हम वापस आएंगे. Guardiola would hot scouting prospect in the coming. भाई Guardiola already हो चुके हैं. मतलब अभी कतार लंबी हो रही है, वो और ये बस. वो हमने वेट किया ना. हमें मना किया था, बाय द वे, जस्ट सेइंग. मैंने से हम आई एम सेइंग चेल्सी है. सच में दिबाला से बड़ा है भाई. हाँ, ये क्या? अच्छा, हेड मींस, अच्छा लुकाको के लिए बोल रहे शायद अभी भी. ही वाज नॉट मैच फिट, ही वाज नॉट मैच शार्प, आई वुड से. लैक्स लेकिन फोकस. भाई आप बोलो यार. हम फॉर एग्जांपल चैरिटी मैचेस देखते हैं, ठीक है. पीपल डोंट प्ले फॉर इयर्स, दे प्ले चैरिटी मैच. एक नेचुरल रिएक्शन होता है फॉर समवन. आप अगर गाड़ी चलाते हो, मैं इतने दिन अभी इंजर्ड हूं मैं, ठीक है. फॉर पीपल हु डोंट नो, आई नो दैट आई बी ड्राइविंग आफ्टर लॉट ऑफ टाइम. आई नो दैट आई स्टिल नो बेसिक थिंग्स. यू एटलीस्ट गेट इन द राइट प्लेस इन द राइट टाइम. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. दैट इतना भागने का नहीं था यार उसको. जस्ट दैट सेकंड, एंड दैट इज द नेचुरल टेंडेंसी. उसकी गलत है. आप ये देखो, व्हेन द बॉल इज बीइंग क्रॉस्ड अक्रॉस द बॉक्स, राइट, उस टाइम कवानी जैसे जो प्लेयर्स होते हैं, उनकी मोबिलिटी, दे राउंड अप द डिफेंस, राउंड लेकर फिर भागते हैं अंदर एकदम से. लुकाकू सीधा भागता है. ही डजंट हैव एनी पोजिशनल अवेयरनेस. पुअर पोजिशनल अवेयरनेस इन दिस गेम. लैप्स ऑफ फोकस. utter shit performance is what the headline is. या बाय द वे, मैं अभी भी देख रहा हूँ. लेट मी जस्ट सी. यस, बाय द वे पीपल, हम वॉच अलोंग तो शायद नहीं कंटिन्यू कर पाए. लाइक आई सेड, आई एम ऑन मेडिसिन्स एज वेल, एंड आई नो उदय माइट बी बिजी एज वेल. उदय, आपको अगर लेट हो तो बता देना भाई मेरे. मैं तो नहीं, मैं लाइनअप्स के चल लिए रहा वेट कर हूँ. रहा हूँ. मेरे यहाँ 10 बजे हैं. I have to sleep also. I'm gonna sleep for 1 hour. Then I'll watch the Spain and Germany game. Let's see दोनों गेम में क्या Okay. होता Chalo, है. I'll take a few comments and I'll give my reactions on the lineup. Again, bhai, everyone do check out Loudmouth Football. Uday knows the stuff, and of course, बहुत आते हैं. Thank you. Recently नहीं आए, obviously because of the time difference. But again, great that Uday join करते हैं हमें. Uday, again, I know थोड़ा soft corner है Belgium के लिए, but in a strange way, I think it's good यार. वो ranking है ना, was अच्छी बात है निकली है. एक होता ना, we are rank 2, rank 1 वाला चीज जो था ना. I think they needed That this. is They all probably bullshit. needed this. Right. Obviously, I think African teams are stepping up massively. I think इस बारी कैमरून और ये सेनेगल काफी अच्छा खेली है. तो
या चलो मिलते हैं भाई उदय, विल सी यू सून Okay. एब्सोल्युटली, See you पीपल टू soon. चेक इट आउट, Take care. लाउड लाउड फुटबॉल एक्चुअली। यहाँ पर मैं कुछ कमेंट्स और ले रहा हूँ, तो जापान वर्सेस क्रोएशिया इन राउंड ऑफ 16, तो जापान बेसिकली अगर आएगी से फर्स्ट, आप बोल रहे हो, तो बेसिकली जापान इज टू बीट स्पेन। चलो, तो जापान वर्सेस क्रोएशिया राउंड ऑफ 16 एंड मोरक्को वर्सेस कोस्टा रिका विल बी बेटर इन 16, बट स्पेन जर्मनी विल डेफिनेटली क्वालिफाई। यार अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस, मेरा चॉइस है, एज मच एज मैं जाता हूँ अंडरडॉग्स ले, थोड़ा और ले, स्पेशली एशियन टीम्स एंड इवन अफ्रीकन टीम में, तो बोलता हूँ वी डोंट वांट यूरोप काइंड ऑफ डोमिनेटिंग, साउथ अमेरिका काइंड ऑफ डोमिनेटिंग, वर्ल्ड फुटबॉल। आई एम नॉर्थ अमेरिका काउंट नहीं करो, सॉरी, लेकिन जस्ट जनरली सेइंग ना, एक अच्छा लगता है यार, मतलब एक चेंज, वही सेम बोर हो जाता है यार। मैं तो 8 वर्ल्ड कप देख रहा हूँ यार, 8 वर्ल्ड कप मैं देख रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू दैट आई वुड लव इट, बट प्रॉब्लम इज that when you have so many quality teams, I would rather have quality to be seen, given a choice in the round of 16. ज्यादा क्वालिटी, मैंने से ज्यादा क्वालिटी, यू कैन आर्ग्यू कि अगर वो लोग पहुंचते हैं तो दे आर देयर बिकॉज ऑफ क्वालिटी, बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन यार मैं बोल रहा हूँ क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ जस्ट एक स्किल सेट, एक प्लेयर, रादर देन जस्ट हार्ड वर्क रेट, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब जस्ट माई चॉइस। लेकिन अगेन देखते हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ भाई, लाइनअप कितने बजे आएगी यार, आ गई यार, लाइनअप आ गई भाई, लाइनअप इज आउट, लेट मी जस्ट पुल अप द लाइनअप विदाउट फर्दर अडू। और हाँ, हम डिस्कस करेंगे, एवरीवन विल बी डिस्कसिंग द लाइनअप, द टैक्टिक्स, द परम्यूटेशन, द कॉम्बिनेशन, तो बने रहना लास्ट तक। हम डेफिनेटली प्री मैच कर रहे हैं यहाँ पर, लेट मी जस्ट पुल इट अप भाई, जापान वर्सेस स्पेन का ये है, क्या बोलोगे यार, क्या? एंड यस, आई थिंक दैट वाज द करेक्ट लाइनअप, तो थैंक्स मेसी इज गुड हमारे साथ शेयर करने के लिए। बुस्केट्स ऑब्वियसली इन द मिडफील्ड, गावी, पेड्री, भाई ये है वेयर दे विल बी ओनिंग इट, मेरे ख्याल से दे विल बी ओनिंग इट, सिंपल एज दैट, पेड्री, बुस्केट्स एंड गावी, लिटरली। लेकिन मोराटा स्टार्टिंग, क्या लगता है यार, मतलब हो सकता है दैट यहाँ पर, आई डोंट नो, लुइस एनरिके इज थिंकिंग दैट वी नीड गोल्स बिकॉज एट एनी कॉस्ट वी नीड टू टॉप द ग्रुप। एट द सेम टाइम हमें चाहिए स्ट्राइकर्स और मच मोर इन फॉर्म, अगर आते हैं से वी गेट टू अ ब्राजील इन द क्वार्टर फाइनल्स, मतलब ही इज ऑप्टिमिस्टिक मेरे ख्याल से, और वहां पर आई थिंक ही नीड समथिंग एक्स्ट्रा, सो दैट इज व्हाई थोड़ा सा चेंज किया, प्लस एक फिटनेस इशू भी हो सकता है विच विल कम टू। एस्पिलिक्वेटा प्लेइंग एट राइट बैक, यार देखिए आप लोग सब जानते हो मैं एक चेल्सी फैन हूं, एस्पिलिक्वेटा इज वन ऑफ देम इंस्पिरेशनल फिगर्स मेरे लिए, लेकिन एज मच एज वो सब है, आज के दिन में आई डोंट सी हिम एज अ राइट बैक, अगर वो सही टेस्ट आए उनके सामने। और वो टेस्ट क्या है, यहाँ पर कूबो है भाई, सब लोग जो लालीगा देखते हैं, आपको पता है भाई, कूबो इज अ गुड प्लेयर, कूबो इज अ गुड प्लेयर एंड ही कैन डू स्टफ। इतना जरूर बोलूंगा, जर्मनी वाले गेम में क्या हुआ था, जर्मनी वाले गेम में कूबो को सब्स्टिट्यूट किया गया था, रिमेंबर, दे हैव अ मिटोमा ऑन द बेंच, हम देखेंगे बेंच में भी देखो, दे हैव मिनामिनो ऑन द बेंच, दे हैव अ मिटोमा ऑन द बेंच, तो उनके पास काफी ऑप्शंस है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। इंटरेस्टिंग दैट दे आर नॉट गोइंग विद देम एज स्टार्टर्स, बट टॉकिंग अबाउट स्टार्टर्स भाई, निको विलियम्स, ही गेट्स अ स्टार्ट, नॉट असेंसियो। क्या बोलोगे यार, इज असेंसियो इंजर्ड? यार पता नहीं, असेंसियो है, टॉरेस भी है, फाटी भी है, तो इंटरेस्टिंग यार, ही इज गोइंग विद निको विलियम्स। मैं तो टूर्नामेंट से पहले बोला ही था कि यार शुरू करेगा, लेकिन अगेन गुड टू सी हिम स्टार्ट, गुड टू सी बाल्डे स्टार्ट, क्योंकि यार एज मच एज जॉर्डी अल्बा बहुत अच्छा लगे है, प्रॉब्लम हैज बीन दैट वही है, कैन ही डू इट इन 3 गेम्स रनिंग, नहीं प्रॉब्लली, राइट, एज स्टार्टर। डानी अल्मो बहुत अच्छा लगे तो आई थिंक ही प्रॉब्ली स्टिक्स ऑन, बट थोड़ा सरप्राइज जो विद असेंसियो नॉट स्टार्टिंग, सच में बोलूं तो। अगेन जापान का मेन गाय कमाडा है, कमाडा इज द गाय, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कमाडा वर्सेस बुस्केट्स जो जीतेगा ना, दैट माइट बी द विनर ऑफ दैट, स्टार्ट ऑफ द मिडफील्ड, प्रॉब्ली स्पेन ही रहेगी, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं और डिस्कस करने वाला हूँ, बिफोर दैट आई कम टू द कमेंट्स। नो असेंसियो, नो फरहान, रेस्ट और ड्रॉप्ड, लगता है रोटेशन है, आई डोंट थिंक रेस्ट और ड्रॉप्ड इधर है, इट्स जस्ट रोटेशन। द स्कोर इज ओपन, बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री विद दैट 100%। बाल्डे बिल्कुल, फाटी आई वाज होपिंग यार थोड़ा सा करे, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, देखते आते कि नहीं आते। गोल्डन जनरेशन लिखो और लाफिंग इमोजी डालो प्लीज। ओह माय गॉड, इफ जापान विंस बाय 1 गोल, हाउ मेनी गोल शुड जर्मनी विन टू क्वालिफाई एंड एलिमिनेट स्पेन, जस्ट आस्किंग। चलो, थैंक्स फॉर दैट क्वेश्चन बाय द वे, देख लेते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे वी आर आल्सो हियर टू गिव यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट? तो यहाँ पर मैं अभी शेयर करने वाला हूं, एंड आई विल कम टू जर्मनी, डोंट वरी अबाउट दैट। जर्मनी वर्सेस कोस्टा रिका भी है, वी ऑल नो दैट, विल कम टू दैट, बट say if Japan, उनका goal difference is 0 and if they win by 1 goal, right, that was the question, correct me if I'm wrong, right? तो अगर वो एक गोल से जीतती है
then their goal difference will become +1 and they go to 6 points. Germany, on the other hand, cannot even get to that because Germany is only on for 1 point. तो irrespective जर्मनी से तो है ही नहीं. कोस्टारिका अगर बाई चांस जीत लेती है जर्मनी से, उनका गोल डिफरेंस बहुत कम है, तो दे कैन नॉट गेट टू 6 पॉइंट्स. तो जापान इन दोनों से तो आगे है. ऑन द अदर हैंड ऑब्वियसली अगर स्पेन से जीत रही है जापान तो उनसे आगे है, तो स्पेन विल बी ऑन टॉप. एंड देन आई वुड से दैट इफ कोस्टारिका विंस their game, then they will be second. If Germany wins, then goal difference of Spain is better. So Spain are in a much better situation. तो Spain is almost guaranteed कि यार आप जाओगे नॉकआउट्स में. लेकिन हाँ, 100% गारंटी नहीं है. स्पेन बाहर कैसे हो सकती है, इसके भी बारे में बात कर सकते हैं अपन. अगर जापान जीतती है, ठीक है, और अगर से यहाँ पर एक सेकेंड कोस्टारिका जीत जाती है, तब जाएगी स्पेन बाहर. क्योंकि मुझे नहीं लगता जर्मनी कोस्टारिका से जीतेगी 8-0 और समथिंग लाइक दैट. लेट्स बी ऑनेस्ट, एज मच एज स्पेन ने हराया था कोस्टारिका को, जर्मनी के पास इतने गोल स्कोरर्स नहीं है. तो मैं ये सिनेरियो बोल रहा हूँ, आप लोग बोलिए विद यू अग्री और नॉट. मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ अभी भी स्पेन टॉप करेगी एंड सेकंड होगी जर्मनी. ये मेरा है प्रोबेबिलिटी. लेट्स सी आप लोग क्या बोल रहे हो. कंफर्म्ड इज नो लॉन्गर बेल्जियन मैनेजर आफ्टर द वर्ल्ड कप एग्जिट. भाई इज इट लाइक वाटर इज वाटर, एक्सपेक्टेड था. लेकिन यार कोई नहीं, अगर फॉर्मल भी है नहीं भी है तो इधर वेज भाई जाने चाहिए थे बाहर. मुझे लगा अरे भाई अगवेरो करेंगे भाई. हाँ हम करेंगे, कोई नहीं, वो भी करेंगे यार, कोई नहीं. मैं स्टार कर रखता है कमेंट, करेंगे एक दिन. सेनेगल विदाउट माने इज ग्रेटर देन लिवरपूल विद माने. डोंट टेक द कमेंट टू सीरियसली, जस्ट जोकिंग. ओह माय गॉड, लिवरपूल या लिवरपूल फैन थे इसलिए. हाँ बिल्कुल यार गौरव, मैंने लेट देखा लेकिन कोई नहीं. थैंक्स अ लॉट फॉर इवन शेयरिंग दैट. भाई मीनवाइल जर्मनी का क्या हाल है? इज हैंसी फ्लिक डूइंग सम मैडनेस? इज हैंसी फ्लिक भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे कि नहीं? क्या उनको लगता है कि यार ही कैन स्कोर 8 गोल्स एंड टेक इट आउट ऑफ द इक्वेशन कि भाई हम कर सकते हैं 8 गोल? वैसा लाइनअप किया है कि नहीं किया है? प्रीटी मच श्योर दे आर फर्स्ट थिंकिंग अबाउट जस्ट गेटिंग 3 पॉइंट्स. वही है. अब देखना पड़ेगा क्या है यहाँ पर लाइनअप. क्या है लाइनअप? अच्छा पिक्टोग्राफिक वे में नहीं मिल रहा मुझे, तो मैं ऐसे ही दिखाता हूँ एक बार. एक सेकेंड. हाँ चलो आ गया लाइनअप, मैं दिखाता हूँ आप लोग को. जो है मेरे स्क्रीन में वैसे ही दिखाता हूँ अभी के लिए. तो भाई मैनुअल नॉयर, रूडिगर, डेविड राउम, निकोलस सूले. भाई तो पता नहीं निकोलस सूले को इतना क्यों बैक करते यार हैंसी फ्लिक. आई हैव नो आइडिया. बट अगेन व्हाई नीड टू चेंज, बिकॉज स्पेन के साथ में डिसेंट किया था तो फेयर इनफ. गुंडोगन, मुसियाला, किमिक, गोरेट्स्का, मुलर और साने हैज कम इन. साने स्टार्टिंग ब्रो. तो साने शुरू कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो. सो मुसियाला, तो आई एम सिस्टम क्या होगा यार? तो आई एम गेसिंग फुल क्रूग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शुरू करेंगे लेकिन नहीं कर रहे. डिस्पाइट मिरोस्लाव क्लोजा आके बोले थे यार शुरू करना चाहिए, यू शुड गो ऑन द फ्रंट फुट, स्कोर गोल्स, ही इज अ नेचुरल गोल स्कोरर. लेकिन नहीं. आई थिंक यहाँ पर फॉल्स 9 देखने को मिल सकता है अपना. अगर पॉसिबली गनाब्री या मुलर will be the false 9 and behind them will be Goretzka. Again Muller or Gnabry kind of rotate in a false 9 position or right winger. और लेफ्ट आपकी ऑब्वियसली साने हैं. तो ठीक है, तो दे आर प्लेइंग विद दैट काइंड ऑफ फॉर्मेशन विद अ किमिक एंड अ गोरेट्स्का बिहाइंड देम एज वेल एज गुंडोगन. तो दे आर गोइंग 3 द बैक यार. दे आर गोइंग 3 द बैक. इज इट? एक सेकंड, एम आई मिसिंग समथिंग भाई? और इज किमिक प्लेइंग राइट बैक? ये हो सकता है किमिक राइट बैक खेल सकता आज. क्या बोलते हो, किमिक शुड प्ले राइट बैक? आई डोंट अग्री विद दैट, बट ही माइट जस्ट बी प्लेइंग राइट बैक यार. देखते हैं आप लोग क्या बोल रहे हो. व्हाट अबाउट क्रोएशियाज परफॉर्मेंस? भाई क्रोएशियाज परफॉर्मेंस वाज ऑफ वन जहां पर लग रहा था कि या दे वर बहुत अटैक कर रहे थे सेकंड हाफ में, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक दे वर एबल टू काइंड ऑफ जस्ट कीप होल्ड ऑफ दैट पोजीशन और कीप होल्ड ऑफ दैट एक शॉट. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्रोएशिया में भी मिसिंग यार लॉट ऑफ गोल्स. आई नो क्रमारिच काफी गोल स्कोर किए थे लास्ट मैच में, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है गोल्स मिसिंग है. एंड अगेन टीबो कोर्टवा डिड वेल. ओके बिल्कुल यार, उदय को शाउट आउट एब्सोल्युटली. रॉबर्ट मार्टिनेज, तो ये तो पढ़ लिया था मैं. लकाका वी लव यू. अरे मोइन गेमिंग इन द हाउस, हाय यार कैसे हो, नाइस टू सी यू ऑलवेज. लुकाकू इज फॉल्स फुटबॉलर. वाओ, किमिक शुड प्ले ब्रो राइट बैक. या मतलब हाँ राइट बैक ही खेलेगा लगता है गोइंग बाय दैट लाइनअप. लेकिन मैं अग्री नहीं करता यार मोहित. मुझे लगता है ना, आई नो गोरेट्स का काफी शील लाते हैं, काफी बेसिकली पासेस लाते हैं गुंडोगन, बट आई थिंक किमिक इज अ मेन गाय मिडफील्ड.
कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस मैच में नॉट स्टार्टिंग और नॉट टेकिंग रिस्क ऑफ टीमो केरर थोड़ा सा अननेसेसरी था यार, थोड़ा सा अननेसेसरी था। आई डोंट नो, कोस्टारिका है, उनके विंग्स इंपॉर्टेंट, रिमेंबर आई थिंक दे हैव विंगर्स हु आर स्ट्रांग मोर देन एनीथिंग। तो राइट बैक लेफ्ट बैक काफी इंपॉर्टेंट है, आई एग्री, लेकिन पता नहीं यार, आई थिंक दैट किमिक इन मिडफील्ड गिव्स यू एक एक्स्ट्रा क्वालिटी जो बेसिकली अदर्स कैन नॉट। दैट्स जस्ट मी। जर्मनी हैज टू स्कोर मोर गोल्स टुडे। बिल्कुल यार, जर्मनी का आप सिचुएशन हम देखे थे क्या है। आप देखिए अगेन जर्मनी और मैं जो लाइनअप डाला था ना, हु आर योर गोल स्कोरर्स? आप किसको एक्सपेक्ट करोगे आज गोल स्कोर? आप प्रेडिक्शन डालिए सब लोग। कोस्टारिका जर्मनी कितने गोल से जीतेगी? जर्मनी अगर जीतेगी तो क्या कोस्टारिका कैन डू द अनथिंकेबल, विन 2 गेम्स ऑन द ट्रॉट एंड गो टू द राउंड ऑफ 16? याद रखिए वो डायरेक्टली हो सकता है, दैट इज पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन आप प्रोबेबल नहीं है। मैं तो अभी भी बोलता हूं दैट आई हैव अ फीलिंग दैट सेट पीस से गोल आएगा जर्मनी का। एक तो वो होगा एंटोनियो रूडिगर, लास्ट मैच में भी ऑलमोस्ट हो गया था, एंड द गाय इज एक्चुअली गुड सेट पीसेस में, हम जानते हैं। एंड आई फेल्ट दैट अगर किमिक होता ना मिडफील्ड में ज्यादा गोल्स आते, तो अभी मैं बोलूंगा ज्यादा गोल्स नहीं है, आई विल गो विद मे बी 3-0, 3-0 जाऊंगा। आई कैन नॉट सी कोस्टारिका स्कोरिंग विद किमिक एक्चुअली बीइंग अ राइट बैक, वो एक प्लस पॉइंट है जर्मनी के लिए। लेकिन मुझे लगता है दैट आई थिंक 3-0 विल बी अ गुड इनफ रिजल्ट। अगेन मैं बोल रहा हूँ 3-0 बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेंच से आएंगे लोग। अगर बेंच से आपको याद है तो भाई वी हैव फुल क्रू, वी आर टॉकिंग अबाउट हैवर्ट्स, पॉसिबली लास्ट गेम में नहीं आए थे, वो आ सकते हैं, मे बी फ्रेश हो। तो दीज आर योर ऑप्शंस बेंच से। तो डेफिनेटली मुझे लगता है मुसियाला एक गोल दे देते यार बंदे को, भाई ही डिजर्व्स इट, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। स्पेन और जापान का भी आप दीजिए यार, स्पेन और जापान का, गिव मी योर प्रेडिक्शंस एवरीवन, who will score and of course who's going to win, and फिर हम आएंगे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस टुवर्ड्स द एंड बेस्ड ऑन दोस प्रेडिक्शंस, ठीक है। तो जापान स्पेन का अगेन लाइनअप ये है फॉर पीपल वाचिंग। यस, थोड़ा सा रोटेशन किया है, अभी भी रॉड्री खेल रहे हैं सेंटर हाफ में, बट बाल्डे कमिंग इन, एस्पिलिकुएटा कमिंग बैक, निको विलियम्स स्टार्टिंग, मोराटा स्टार्टिंग, तो काफी काफी कपल ऑफ सरप्राइजेस है। बट जापान ऑन द अदर हैंड भाई वो गए हैं फ्रॉम विद द ट्राइड एंड टेस्टेड। जापान ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे इसमें, रिमेंबर दे कुड हैव प्लेड अ टोमियासु, दे कुड हैव प्लेड अ मोटीमा, दे कुड हैव मिटोमा, सॉरी मोटीमा बोलो, सॉरी मिटोमा, मिटोमा है ना, मैं आई होप आई एम नॉट, मिनो तो है, मिनो भी है, टोमियासु मिटोमा है ना, मिटोमा हाँ, जो है ब्राइटन के प्लेयर। तो दे कुड हैव, लेकिन वही है, दे आर गोइंग विद द ट्राइड एंड टेस्टेड। माइडा एक्चुअली उनका एक अच्छा वर्ल्ड कप नहीं गया है सच में बोलूं तो, आई एम बहुत सरप्राइज हूं मैं, तो मैं बोलूंगा माइडा इज स्टार्टिंग। रिमेंबर जर्मनी के साथ ऑल्सो ही गॉट अ गोल, लेकिन ऑफसाइड था, नहीं होना चाहिए था ऑफसाइड उनको। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक ही हैज समथिंग टू प्रूव एज वेल। बट स्पेन के पास भाई आंसू फाटी, फरान टोरेस, मार्को एसेंसियो, इतने सारे ऑप्शंस है यार, आप देख सकते हो ऑलरेडी। पिनियो ही इज अ गुड प्लेयर सच में बोलूं तो, मतलब काफी ऑप्शंस है। तो आई एम गोइंग विद, पता नहीं यार, जापान एशियन टीम है, आई नो अफ्रीकन ने बवाल किया है, आई वुड गो विद जापान स्कोरिंग फर्स्ट, लेकिन मुझे लगता है स्पेन आ जाएगी, दे विल विन 2-1। आई एम गोइंग विद 2-1 इसमें, आई नो 3-1 उसमें गया हूं, 3-0 उसमें गया हूं जर्मनी वाले में, इसमें जा रहा हूं 2-1। आपका मैं आ रहा हूं कमेंट्स में आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। यस, प्रॉब्ली डिजर्व्ड इट, ही नोज दैट इज कमिंग एनीवे। जर्मनी आर डिफेंसिवली डाइसी, हाँ राइट बैक सिचुएशन स्पेशली गौरव, इसलिए शायद किमिक आज खेलेंगे, पता नहीं। I'm still not convinced about that, but let's see. Midfield काफी अच्छी, लेकिन मुसियाला गोल मारेगा, रोबर्टो मार्टिनेज लीविंग, yes, मुसियाला for sure. Germany formation 4-2-3-1, हाँ 4-2-3-1 with Goretzka or Gundogan kind of in front of that back four with Kimmich playing right back, Raum playing left back. राउम अच्छे प्लेयर है एब्सोल्युटली, जैसे सोजा थे भाई क्रोएशिया के लिए, दो अच्छे लेफ्ट बैक मिल रहे हैं अपने को स्काउटिंग के लिए। जर्मनी 4-0, ओके, 3-2 स्पेन, ये अच्छा मैच होगा यार, 3-1 स्पेन, मैं जा रहा हूँ 2-1। Let's see. Musiala 1, Muller 2. You never know. I think Havertz will come आज. I feel Havertz will come. I know big game है because I think Germany को जीतना ही है, ऑप्शन है ही नहीं, इनफैक्ट ज्यादा गोल्स के साथ जीतना है। लेकिन मुझे लगता है Havertz फ्रेश होंगे कंपेयर टू लास्ट मैच, तो he might just come on, maybe both come on, quite possibly. अभी के लिए I think Füllkrug definitely has to come on अगर गोल्स नहीं आ रहे इनफ। मुकुकू, बहुत सारे ऑप्शन यार जर्मनी के बाद, लेकिन इतने क्वालिटी ऑप्शन नहीं है जो 90 मिनट्स खेल सकते। दैट्स द मेन प्रॉब्लम विद जर्मनी। मैं हाफ टाइम पे सो गया, अरे भाई आपने बहुत मिस कर लिया यार, लकाका भाई, मतलब हाउ नॉट टू बेसिकली बी अ स्ट्राइकर और हाउ नॉट टू एक्चुअली ओपन योर माउथ
व्हेन यू एक्चुअली कैन नॉट प्ले फुटबॉल। आई नो जनरली मैं इतना हार्श हूँ नहीं कोई भी प्लेयर के लिए, मैं चाहता भी नहीं इतना हेट मिले भाई, लेकिन लकाका इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, स्पेशली फॉर चेल्सी फैन, आप जानते हो, तो मैं तो निकालूंगा भाई। और बंदा इतना बोलता है आज के दिन में भी यार, कितना बॉडी लैंग्वेज देखो उसका, इज नॉट इवन 1/8 ऑफ दैट। आई होप आई हैव द कॉन्फिडेंस यार जो लुकाकू में हूँ कहीं ना कहीं। यस मुझे हमने देखा एब्सोल्युटली। कोई नहीं, मोइन गेमिंग, आई एम नॉट ओपनिंग द स्ट्रीम फॉर पीपल हु डू नॉट क्रिएट कंटेंट येट। अगेन मोइन गेमिंग, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फॉलोइंग मी भाई, हम 1.5 साल से चैनल कर रहे हैं, मच लव टू यू भाई। भाई मोइन गेमिंग बहुत अच्छा थंबनेल बनाते हैं यार, एवरीवन आउट देयर, everyone wants can contact Moin Gaming, और हमने शाउट आउट दिया था उन्हें फॉर अ कपल ऑफ थंबनेल्स दैट ही हेल्प्ड अस मेक, बट अभी के लिए मैं खुद कर रहा हूँ। द रीजन बीइंग दैट अगेन व्हाइल आई टोटली ट्रस्ट यू, इट्स नॉट अबाउट यू, एक को करेंगे तो भाई दूसरे को भी करना पड़ेगा, और सबको करेंगे तो भाई थोड़ा रिस्क फैक्टर बनता है। तो माय चैनल गॉट क्लोज बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन। आप देखिए आपको पता लग जाएगा क्या हुआ था बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल। आई वुड लव टू गेट टू दैट लेवल। मैं तो बोलता हूँ इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। और मैं, इफ यू ऑल रिमेंबर, आई वाज, लेट्स बी ऑनेस्ट, one of the first content creators in India, at least that I know of, who actually opened the stream for everyone. That is what it is. The member stream, man, exactly. That is pending उससे भी पहले। तो सबसे पहले वो करना है मेंबर्स। अगेन बिग अप टू ऑल द मेंबर्स यार, करना है एब्सोल्युटली यार। मैं ऑनेस्टली मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन करेंगे यार अभी तो यार। ऑनेस्टली आई शुडंट बी इवन स्ट्रीमिंग नाउ, बट आई एम स्ट्रीमिंग तो इमेजिन करिए मुझे, दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज व्हाट आई एम, माय शील्ड इज दिस राइट नाउ। बट नॉट जस्ट दैट, पैर में भी लगा हुआ है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, प्लस 6 मेडिसिन थे, बट एनीवे द फैक्ट दैट आई कम एंड टॉक टू यू ऑल, brings up my energy, whatever it is, होता है भाई, certain things happen, but at the end of the day it is football which unites us all, इसलिए I love it। लेकिन talking about unite, क्या लगता है यार भाई, एशिया, कैन जापान डू इट? व्हाट इज योर प्रेडिक्शन पीपल? कैन जापान डू इट अगेंस्ट स्पेन? कितना परसेंटेज चांस दे रहे हो जापान को? मतलब आई वुड से जापान हैज अबाउट, लुकिंग एट द लाइनअप जो हमने दिखाया था फॉर स्पेन, आई फील स्पेन जा रहे हैं ऑन द फ्रंट फुट। यस प्रेडिक्शन तो दे दी मैंने, लेकिन मुझे लगता है देयर इज ऑलवेज अ चांस। तो मैं दे रहा हूँ भाई 25% चांस दे रहा हूँ जापान को, क्योंकि उन्हें भी मालूम है दैट दे नीड टू विन, अ ड्रॉ विल नॉट बी इनफ, क्योंकि जर्मनी विल बीट कोस्टा, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है? तो दैट्स व्हाट इट इज। और यस मैं परमिटेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्यों मैं बोल रहा हूँ वो चीज, क्योंकि देखिए क्विकली, Spain 4 points. All they need to do is they have to avoid the loss. Sorry, तब वो क्वालिफाइड है, बट दे वांट टू टॉप, तो इसलिए वो जीतना चाहेंगे डेफिनेटली अगेंस्ट जापान। जर्मनी 4 पॉइंट्स हो सकती है, इसीलिए जापान नीड्स टू गेट मिनिमम 1 पॉइंट। लेकिन अगर जर्मनी जीते, से दे गो टू 4 पॉइंट्स एंड जापान बेसिकली ड्रॉ, देन व्हाट हैपेंस? जर्मनी कैन गो ओवर जापान, क्योंकि गोल डिफरेंस आ जाता है यार सबसे पहले, इट इज नॉट हेड टू हेड पहले। देन जर्मनी विल गो ओवर जापान, बिकॉज अगर जर्मनी स्कोर करती है 2 गोल से ज्यादा, देन आई थिंक दे गो ओवर जापान। अगर जापान को होता है 0-0 ड्रॉ, या कोई भी ड्रॉ तो गोल डिफरेंस तो सेम रहेगा, राइट? तो हाँ, तो दैट्स व्हाट इट इज। तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया। मीनवाइल कोस्टा रिका बोले भाई हम सरप्राइज किए थे जापान को, तो हम अगर जर्मनी को भी सरप्राइज कर दे, हम जीत जाए कहीं ना कहीं से। हाँ, ड्रॉ इनफ नहीं रहेगा बिकॉज उनका गोल डिफरेंस काफी मतलब बदतर है बिकॉज ऑफ स्पेन, लेकिन दे नीड अ विक्ट्री टू क्वालिफाई। बट अगेन इंटरेस्टिंग रहेगा दैट स्पेन कुड पॉसिबली मीट क्रोएशिया, बिकॉज ये ग्रुप एफ कंप्लीट हो गया है, क्रोएशिया सेकंड ऑफ ग्रुप एफ, और मोरक्को माइट मीट द सेकंड टीम इन ग्रुप ई। तो वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा, हम बात करेंगे उसके बारे में। ऑफकोर्स सैटरडे और भी है, हम उसके बारे में काफी बात करना है, हमने करेंगे ही है। बेस्ट फीफा वर्ल्ड कप मेमोरी, मोहित मैंने काफी बार शेयर किया है। इनफैक्ट मोहित और सब लोग जो देख रहे हैं ना, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू ऑल, हमारे प्लेलिस्ट चेक करिए, हमारे कुछ सीरीज है विच इज वेरी यूनिक। यू कैन, आई कैन क्लेम दैट आप नहीं शायद आपको मिल सकता है इन अ सिंगल वीडियो फॉर पर्टिकुलर टीम इन होल ऑफ इंटरनेट। तो वो है ऐसा ना, आप देखिए, से फॉर एग्जांपल फ्रांस चुनिए, तो फ्रांस में आई थिंक सादिक भाई वाज इन द हाउस, सादिक भाई, फतेह वाज देयर, बिग अप टू फतेह भी, ही नोज हिज स्टफ, 2 अल्ट्रास अलोंग इन मी, हम साथ में जोड़कर हमने 8 वर्ल्ड कप देखा है। तो वी स्पोक अबाउट द बेस्ट मेमोरीज ऑफ फ्रांस, व्हाट फ्रांस हैज डन and what they have not done, what they can do, best 11 ever of France, best squad of France, हमने सब बात किया इन वेरी शॉर्ट वीडियो। तो आप देखिए बहुत अच्छा वीडियो है, इट्स नॉस्टैल्जिक सीरीज हमने जो किया था प्रीव्यू फॉर द वर्ल्ड कप, दैट इज देयर वेरी मच, वर्ल्ड कप सीरीज में आपको मिल जाएगा इन द प्लेलिस्ट। इट इज जस्ट एन एग्जांपल। सेम चीज मैंने शेयर किया अबाउट नेदरलैंड्स, सेम चीज मैंने शेयर किया विद बेसिकली गेस्ट अगेन
नेदरलैंड्स तो खुद किया बिकॉज बीइंग अ नेदरलैंड्स फैन, इंग्लैंड बाबा के साथ किया है, देन आई रिमेंबर स्पेन धेनुका के साथ किया है, तो काफी सारे अच्छे मेमोरीज है वहां पर। तो उनमें से ही मैं बोलूंगा मोहित, मेरे लिए बेस्ट मेमोरी, देखिए द वन विच स्टैंड्स आउट इज लाइक वर्ल्ड कप, यू नो आई एम नॉट से बेस्ट, लेकिन 94 वर्ल्ड कप जो मैंने देखा था ना, माय फर्स्ट वर्ल्ड कप, जहां पर मैं फुटबॉल समझता नहीं था एकदम भी, ऑब्वियसली बच्चा था बिल्कुल, बहुत छोटा, लेकिन रोबर्टो बाजियो का जो मिस था ना पेनल्टी, दैट इज समथिंग दैट आई कैन नेवर फॉरगेट। ठीक है, बहुत ज्यादा हेट मिला था बंदे को। उससे भी पहले उसी टूर्नामेंट में ऑफ कोर्स नेदरलैंड्स को मैंने पहली बार देखा था, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली मैराडोना दी गोट, वो 2 मैच के बाद he failed the drug test and he went back. That was a huge news in itself. He was the GOAT. Remember, he is one of the GOATs अभी भी। बट एज अ नेदरलैंड्स फैन मैं बोल सकूं तो यार इट हैज टू बी 2010 वर्ल्ड कप, बिकॉज दैट वाज द फर्दरेस्ट जो मैंने देखा है अपने आंखों से। तो 2010 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जहां पर वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स काका को एक्चुअली बीट की थी नेदरलैंड्स टीम, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ अदर्स जो थे उस टीम में, काफी अच्छे प्लेयर्स थे। और क्वार्टर फाइनल का मैच था, दैट इज व्हाट आई वुड से, अलोंग विद ऑब्वियसली लिटिल बिट बदला जो बोलते हैं ना, स्पेन, टॉकिंग अबाउट स्पेन जो आज खेलने वाली है अभी, 2014 पहला मैच, ग्रुप मैच जो था, फ्लाइंग डचमैन, वैन पर्सी और रॉबिन। रॉबिन इज माय ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर, जस्ट टू लेट यू ऑल नो। डोकू शुड हैव प्लेड फॉर मोर मिनट्स, मैंने बोला था टॉर्गन हजार्ड बाद में आने चाहिए थे, अगर आने चाहिए थे, पहले आने चाहिए डोकू, पहले आने चाहिए ईडन हजार्ड, वो रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन था। 100% अग्रीड विद दिस। अगर आज जीती तो प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट विंस इन द हिस्ट्री। हाँ यार, जापान right up there. In fact, remember this is a Spain side which has beaten a team 7-0 in this particular tournament. और जो स्पेन साइड जो है नेशंस लीग के सेमीफाइनल्स में, स्पेन साइड which was their last यूरोस के सेमीफाइनल्स में, so somewhere down the line I think you have to say that yes, जापान it has to be one of the best. In fact 2002 का वर्ल्ड कप भी मुझे याद आता है काफी, क्योंकि Premier League really became bigger after 2002 World Cup. People got noticed football a lot more एशिया में। तो 2002 वर्ल्ड कप में एशियन एंड अफ्रीकन टीम्स डिड वेल। साउथ कोरिया, टर्की, आई नॉट से एशिया बट टर्की, वही एशिया यूरोप के बॉर्डर में। देन यू हैव व्हाट एल्स, सेनेगल डिड वेल। हेल्थ कैसी ध्यान रखो, बिल्कुल यार। और यहाँ पर मैं शेयर भी कर सकता हूँ कुछ यार। क्या है ना, मेरा प्लान एक्चुअली था बाहर जाने का, मैं जा नहीं पाया और मेरी फैमिली बाहर गई, मैं अकेला हूँ। थिंक अबाउट इट यार। मैं तो बोले क्या करूँ यार, आकर बात करूँ तो बेटर है आप लोग से, जी हल्का हो जाएगा एटलीस्ट, और एटलीस्ट फुटबॉल इज माई पैशन एनी वे यार। तो अगेन मच लव टू एवरी वन वॉचिंग, आई कैन नॉट थैंक यू ऑल इनफ ऑलवेज। अगेन वी हैव रीच्ड अ सर्टेन टारगेट होपफुली, और बियॉन्ड, आई डोंट नो, टारगेट भी मैंने कम रखा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो भाई लेट्स गेट टू 250 लाइक्स एंड होपफुली भाई 6.5 के सब्सक्राइबर्स तो कर दो यार, बहुत कम है। वर्ल्ड कप के एंड में वी शुड बी हैविंग 10K सब्सक्राइबर्स, व्हाट आई हैड रिक्वेस्टेड और अदर प्लान्ड, और जस्ट टारगेटेड, होपफुली हो जाए। विच टीम यू सपोर्ट इन दिस वर्ल्ड कप? नेदरलैंड्स, आई थिंक जो मैंने स्टोरी बोला इट वाज क्वाइट एविडेंट। लेकिन हाँ, मैं इतना भी बोलूंगा दैट सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बोलूंगा, बट एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ना कि यू फॉलो सर्टन टीम्स ज्यादा। तो ऐसे तो मैंने काफी वर्ल्ड कप देखा है, लेकिन सर्टन टीम विच आई फॉलोड लिटिल बिट मोर देन से सर्टन अदर टीम्स वाज आई थिंक इंग्लैंड बिकॉज एक होता है बहुत सारे चेल्सी प्लेयर्स वहां थे। ऑफ कोर्स इटली भी होती अगर वो होती वर्ल्ड कप में बिकॉज ऑफ मिलान, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मेरा मिलान का। लेकिन हाँ, आई थिंक इंग्लैंड हैज बिन देयर राइट अप, लेकिन मैं बोलूंगा नेदरलैंड्स यार, इट हैज टू बी माय टीम। हाँ, थोड़ा सा कनाडा का के होप था, क्योंकि मैं कनाडा में कुछ साल बिता चुका हूँ पहले, तो आई वाज होपिंग कि कनाडा डज वेल, आल्सो दैट दे आर होस्टिंग नेक्स्ट टूर्नामेंट। लेकिन हाँ, डेफिनेटली नेदरलैंड्स। आई वांट टू स्टार्ट द फुटबॉल चैनल, व्हाट एडवाइस विल यू गिव? मोइन, जस्ट स्टार्ट ब्रो, जस्ट स्टार्ट, दैट्स व्हाट आई वुड से, जस्ट स्टार्ट। मतलब ऑनेस्टली, मतलब मैं अभी बोलता हूँ, मतलब आई नो पीपल विल हाइड योर फर्स्ट वीडियो। आप अगर देखो ना, पहला वीडियो इस चैनल में, पहला वीडियो आप स्क्रॉल करके देखो, हमने कितने, यही नहीं, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, आप नीचे स्क्रॉल बार जा रहा है, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस हमारा दूसरा चैनल है, इन केस यू डोंट नो, एंड डू सब्सक्राइब टू दैट, आई वुड हाईली रेकमेंड, मींस अ लॉट। तो पहला वीडियो देखो वर्सेस अभी, यू विल सी द डिफरेंस। तो ऑटोमेटिकली विद मिस्टेक्स यू लर्न ब्रो, एंड साथ साथ में मोइन आई एम देयर, डोंट वरी, मैसेज मी, व्हाटएवर इट इज, डू इट। थोड़ा सा साथ दीजिए यार सब लोग जो देख रहे हो, टू ऑल द क्रिएटर्स आई वुड से, don't worry about it, it'll come through eventually. It's a long run, by the way. Is Argentina going to quarters without much difficulties? I think yes. I think Indrajit, let's be honest, Australia has already overachieved. कितने लोग बोले थे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, मतलब आई नो
Football is funny. Morocco, Australia. Did you expect Morocco topping the group? I didn't expect. Morocco मैं बोल रहा था थर्ड या फोर्थ आएगी ग्रुप में. ऑस्ट्रेलिया सेम चीज थर्ड या फोर्थ आएगी, लेकिन दे हैव क्वालिफाइड विद सेकंड प्लेस. इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का सेम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स है देखा जाए तो. उस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पहले स्कोर किया था, रिमेंबर दैट. बट अर्जेंटीना डिफेंसिवली स्ट्रॉन्गर है एज मच एज फ्रांस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. डिफेंसिवली बोल रहा हूँ, ऑफेंसिवली फ्रांस इज स्ट्रॉन्गर एनी डे ऑफ द वीक, लेकिन डिफेंसिवली अर्जेंटीना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो मुझे लगता है अर्जेंटीना विल कम थ्रू. प्लस अर्जेंटीना का एक मोमेंटम है ना, काफी अच्छा मोमेंटम है. आई थिंक दैट विल बी ब्रिलियंट फॉर ऑस्ट्रेलिया टू इवन काइंड ऑफ गेट अ गोल. तो मुझे नहीं लगता वहां पर कुछ डिफिकल्टी होने वाली है. बट जज्बात हो यार, ऑस्ट्रेलिया में देना पड़ेगा. वकीम लो कहां तक जाता इस जर्मनी के साथ अंकित भाई? आई डेंट रेट हिम देवेश. सरप्राइज्ड? आई डेंट रेट हिम. पता नहीं, इट्स द वे दैट आई लाइक फुटबॉल. यस, द गाय वन द वर्ल्ड कप और मैं बोल रहा हूँ आई डेंट रेट हिम. देखिए वर्ल्ड कप का जो टीम था ना, दैट टीम वाज एब्सोल्युटली सुपर्ब टीम एंड आई एम नॉट सेइंग ही डिड बैडली. व्हेन आई से आई डेंट रेट हिम, डोंट टेक इट रॉन्ग पीपल. मैं बोल रहा हूँ दैट देयर वाज अ टाइम जहां पर वो असिस्टेंट थे टू यर्गन क्लिंसमैन. क्लिंसमैन को इतना नहीं मिलता था यार. आई डोंट नो व्हाई ही नेवर गॉट सो मच. आई नो रिसेंटली कंट्रोवर्सी में थे क्लिंसमैन, लेकिन ही नेवर गॉट इतना क्रेडिट. 2006 में जो फुटबॉल खेली थी ना जर्मनी, आई एक्चुअली फेल्ट दैट दे वर द बेस्ट फुटबॉलिंग टीम इन दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट 2006 में. बिल्कुल. तो मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल है और अगेन जो मैन मैनेजमेंट है, एंड करना दैट नॉट हैविंग सो मेनी पीपल रिटायरिंग टुगेदर, वो एक इश्यू है कहीं ना कहीं. वकीम लो विद दिस टीम आई डिडंट सी ये. यहाँ पर्सनल की प्रॉब्लम है देवेश. दे डोंट हैव सो मेनी ऑप्शंस सच में बोले तो. बिल्कुल मोइन, बिल्कुल. योर थॉट्स ऑन रोबर्टो मार्टिनेज रिजाइनिंग एज बेल्जियम कोच? ही शुड हैव डन इट बेटर बिफोर. क्योंकि उनको अगर खिलाना ही था विद दिस रिजिडिटी, उनको अगर लाना ही था डोकू को इन द लास्ट फ्यू मिनट्स, एडन हज़ार्ड को इन द लास्ट फ्यू मिनट्स, देन व्हाई टेक हिम, व्हाई टेक देम अलोंग? तो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, लेकिन देयर समथिंग रॉन्ग फॉर श्योर. इतने ऑफ फील्ड इश्यूज हो रहे थे. अगर आप अपने प्लेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आई नो इजी है मुझे बोलना, बट जस्ट टू शेयर विद यू ऑल, भाई मैं भी मैन मैनेजर रहा हूँ. आई हैव मैनेज टीम्स डिफरेंट फील्ड में भी, बट साथ में मैं सर्टेन टीम का कैप्टन रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू लाइक एट सम पॉइंट मैन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर कोच मैन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई फील दैट इट्स अ मेजर इश्यू दैट मार्टिनेज स्टेट इज सो लॉन्ग. क्योंकि क्या होता है ना, विद द गोल्डन जनरेशन, सो कॉल्ड गोल्डन जनरेशन, यू नीड टू अचीव बेस्ट विद ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स एज वेल. अगर एक चीज नहीं काम चल रही तो नहीं बेसिकली चल रहा था, तो दे हैव टू डू समथिंग एल्स यहाँ पर. भाई मोइन गेमिंग ऑफलाइन बात करेंगे जब भी फ्री हो, कोई नहीं. मार्टिनेज शुड हैव लेफ्ट अर्ली. व्हाट्स डेरेन? एग्जैक्टली. नहीं यार कोई नहीं, मतलब डेरेन इससे अच्छा कि यार मैं खाकर मेडिसिन लेकर सो जाओ यार. मैं एटलीस्ट आपके साथ मैच और लाइनअप्स देखूंगा, टैक्टिक्स बात करूंगा. मतलब फॉर मी ना, मतलब सच में बोलो डेरेन, एवरीवन हैज देयर थिंग ना. मतलब आई नो दवाइयाँ अपने अपने जगह डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. मैं यहाँ पर ओवरडू नहीं कर रहा. लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कहीं ना कहीं पता नहीं मेरा एनर्जी हमेशा हाई होता है यार. मतलब आई एम हाई विद स्पोर्ट्स. आई डोंट नीड एनीथिंग टू बी हाई. ये आज का लाइन है यार, ले लो आप लोग. आई डोंट नीड एनीथिंग टू बी हाई. दैट्स मी एंड जेन्युइनली दैट्स मी. एंड पीपल हु नो मी यार नो दैट आई एम, मतलब आप जाकर देख सकते हो मेरे एकदम जो बचपन के दोस्त है ना. पता नहीं ऑर्कुट आजकल एग्जिस्ट होता है कि नहीं, इज इट टेकन ऑफ? सो ऑर्कुट में हुआ करते थे क्या होते थे, टेस्टिमोनियल्स. ऑर्कुट और लिंक्डइन में टेस्टिमोनियल्स हुआ करते थे. तो ऑर्कुट में बेसिकली इफ यू कैन, आई एम जस्ट शेयरिंग समथिंग यहाँ पर. देयर हैव बीन मल्टीपल पीपल हु हैव सेड दैट दिस गाय कैन जस्ट लिव ऑन क्रिकेट एंड फुटबॉल. उसको बेसिकली और कुछ दो नहीं दुनिया में, खाली क्रिकेट एंड फुटबॉल. लेकिन इतना भी बोलता हूँ, आई एम ऑल्सो फूडी. मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ. जो आपको दिख रहा होगा लास्ट एक साल में जो गेन हुआ है, जो मैं एक्चुअली काफी फिट था, लेकिन हाँ थोड़ा सा कोविड के बाद में थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया. लेकिन हाँ सर्टेनली आई वुड से दैट क्रिकेट फुटबॉल फूड मुझे दे दो. दैट्स व्हाट आई नीड, सिंपल एज दैट. अभी के लिए दवाइयाँ है लेकिन चलता है यार. बेल्जियम डेनमार्क सो मच. हाँ यार मैं तो आर्ग्यू करूंगा डेनमार्क से ज्यादा बेल्जियम ने डिसअपॉइंट किया है. क्योंकि डेनमार्क, पीपल हाइप्ड अप डेनमार्क लाइक एनीथिंग. मैं बोल रहा हूँ ना, क्रिश्चियन एरिक्सन का जो मोमेंट था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड आई होप कि वो ठीक हो जाए 100% और खेले सालों के लिए.
बहुत रेगुलरली बहुत अच्छा खेले भाई। वो एक पुश था उनके लिए, मेंटली एक पुश था। डेनमार्क ओवर परफॉर्म्ड, यू नो, बेल्जियम ऑन द अदर हैंड अंडर परफॉर्म, वो डिफरेंस था। हाँ, देर आर लॉट ऑफ एजिंग प्लेयर्स, लेकिन इट्स इन द माइंड, इट्स इन द माइंड। हजार्ड इतना बूढ़ा नहीं है, लुकाकू बूढ़ा नहीं है, वर्तोंगन स्लो है लेकिन बूढ़ा नहीं है भाई, 34 साल का है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ऑल्डरवेरेल तो शायद 33 साल का है। इट्स नॉट द एंड ऑफ, त्यागो सिल्वा 37 तक खेल रहा है, और क्या लेवल का खेल रहा है। तो I think somewhere down the line, it's in the mind as well. I think it's about Belgium, off-field issues, rigidity management में, plus basically बोल बच्चन बहुत ज्यादा है वहां पर, सिंपल सा है बात। फुटबॉल एनी डे ऑफ द वीक, एनी डे ऑफ द वीक ब्रो। लेकिन हाँ, साथ साथ में खाना मिले तो बढ़िया है। अरे नहीं यार, हम्बल तो क्या ही तो बोलूं यार। मतलब लीडर, यू हैव सीन अदर साइड ऑफ मी, आई हैव अदर साइड ऑफ मी अगेन। आई डोंट टेक शिट, दैट्स अ फैक्ट। मैं, मेरा जो मन में होता है वो बोलता हूँ, दैट्स सिंपल एज दैट। आई नो काफी लोगों को बुरा भी लगता है और काफी लोग जताते ही नहीं है, बट आई नो दैट अगेन एज एम स्पीकिंग, लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई माइट हैव सेड दैट पीपल माइट नॉट हैव लाइक्ड, बहुत लोग अज्यूम भी करते हैं। लेकिन यार मैं खोला ही था ना यूट्यूब इसके लिए, यार मेरे मन में काफी चीजें थे, क्योंकि मैं एक्चुअली फॉर अ फ्यू इयर्स आई वाज अब्रॉड। मैं एक्चुअली एक और चैनल खोल चुका हूँ, इंडियन चेल्सी फैन, आप देख सकते हो चाहे, बहुत ही मासूम से वीडियोस है उसमें। तो इंडियन चेल्सी फैन में बेसिकली ये मैं खोला था, मैं बोलता हूँ कब, 2015-16 की बात है, 2015-16 से मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो 2015, एंड आई नो उस समय शायद ही आप लोग ने देखा होगा इंडियन यूट्यूबर डूइंग फुटबॉल। तो यस, आई हैड अ चैनल, लेकिन वो एक था अपना भड़ास निकालने के लिए था बस, ठीक है, काइंड ऑफ थिंग। तो इट वाज ओनली चेल्सी कंटेंट उस समय। लेकिन हाँ, देन आई स्टार्टेड दिस, I took a break from YouTube and I, focused on my other career, and then I came back इसमें with COVID helping as well, और यहाँ पर आया मैं, I started with the RCB and Chelsea fan TV because मैं क्रिकेट भी खेलता था at a certain level, I've shared lot of times, तो मैं RCB फैन भी हूँ। तो थोड़ा सा RCB और चेल्सी का स्पेसिफिक था, बट देन आई नोटिस्ड एंड रियलाइज, जब मैं बातें करता था ना आप लोग से और सब पैनल से और सब सब्सक्राइबर्स से, जितने भी थे, ज्यादा नहीं थे लेकिन बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स थे, और बातें काफी होती थी हमेशा, बिकॉज वी हैड ऑलवेज इन इंटरेक्टिव स्ट्रीम। एंड जब यूरोज किया था, आई रियलाइज ओके मैन ब्रो, एज इन यूरोज, बाय द वे डू चेक आउट दैट सीरीज भी यार। मतलब पीपल टेल मी, नॉट मी, लॉट ऑफ पीपल हु वॉच्ड माय चैनल फ्रॉम द इनिशियल डेज टेल मी दैट योर यूरोज कंटेंट वाज वन अमंग द बेस्ट इन यूट्यूब, and that's something great that I like. Who am I? You would not find the Who Am I season 1 in entire YouTube. It was a pioneering thing. Hopefully हम और seasons करें उसके बारे में, and we have improvised. तो ये सब करके मैं realize किया कि यार, it's just not Chelsea. I've been watching Barcelona, Real Madrid, AC Milan, of course, Inter Milan. I've been watching, not only Netherlands but England, Brazil, Argentina, Germany. All these teams, yeah, from late 90s. So I can give more, and I can share more, and I'll probably like that more. वो हमें is what something I'm doing. इसलिए I called it Almighty Blues FC because वो Chelsea वाला, come on, I'm a fan at the end of the day, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में वो कंटेंट करता हूँ, साथ साथ में मैं बोलता हूँ कि यार इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। आई जनरली वांट अ स्पेस जहां पर सब लोग आए बात करें, इसलिए इन द मंथ ऑफ February मैंने शुरू भी किया था प्लेटफॉर्म, अगेन आई वुड से दैट आई वाज वन ऑफ द पायनियर्स। यस, मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ यहाँ पर, दैट पीपल केम ऑन टू माई स्ट्रीम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, रैंडमली मैं लिंक शेयर करता था और आते थे, हम बात करते थे, और वो चीज मिसयूज किया गया, बिकॉज विच यू ऑल नो व्हाट हैपेंड, और मेनी ऑफ यू ऑल नो, with the help of the community, with the help of everyone, I got the channel back with that motivation. मैं give up नहीं किया, and then I'm still doing अभी तक, लेकिन coming back, same thing. Almighty Sports Plus, again, it's a fan channel for all to see. Almighty Blues FC fan channel for all to see. Idea was Almighty Sports Plus पे हम करेंगे international content, international sports content along with IPL content. वो हमारा था, क्रिकेट एंड फुटबॉल, इंटरनेशनल कंटेंट, आईपीएल कंटेंट। वो वाला चैनल, इतना इस चैनल जितना प्यार नहीं मिला, तो आई लाइक ओके चलो वर्ल्ड कप इसी चैनल में ज्यादा करते हैं, वो चैनल में बाद में वापस आएंगे। वी डिड द क्रिकेट वर्ल्ड कप वहां पर डेफिनेटली, और हम फुटबॉल का काफी करते भी, वॉच अलोंग वहां पर। अलग ही था बिल्कुल यार। भाई कुछ नहीं, एक रॉबरी थी, तो दे रॉब्ड माय फोन, टू बाइकर्स केम एंड रॉब्ड माय फोन एंड आई गॉट ड्रैग्ड अलोंग विद द बाइक। वो कुछ नहीं तो लगता है, तो नीज और एल्बो, हैंड, पाम्स, सब सब जगह है ना, ब्रूजेस थे, और लिगामेंट टेयर बोल रहे, एंड हैंड में तो जस्ट बैंडेजेस अभी, वो तो चल जाएगा एक हफ्ते में।
नहीं यार, है ना, डेफिनेटली है, कैसे नहीं है, बिल्कुल है। बिल्कुल है यार। अरे थैंक्स यार, मच मच लव। ये लीडा, आप सीजन 3 का बोल रहे हो? पर्सनल चॉइस में बोलूं तो सीजन 2 वाज द बेस्ट। बहुत छोटा सा सीजन था, लेकिन सीजन 3 ज्यादा एंटरटेनिंग है, एब्सोल्युटली। तो I live in Bangalore, bro. I live in Bangalore. I've traveled the world, though. I do basically a lot of traveling as well when working. So यहाँ पर पुणे में रहा हूँ, टोरंटो में रहा हूँ, लेकिन बैंगलोर, नॉर्थ इंडियन who was born Bangalore, brought up in Bangalore. सब्सक्राइबर्स इन अ चैनल, वाई फोन कॉल और डिस्कॉर्ड वॉइस चैनल, जस्ट अ सजेशन। हाँ, ये वाला चीज आई थिंक बाबा ऑल्सो वाज सजेस्टिंग ही, उन्होंने ट्राई किया था शायद ना, दैट डिडंट करेक्ट मी फ्रॉम, उन्होंने शायद ट्राई किया था। यार डिस्कॉर्ड मुझे आता नहीं यार यूज करना, कोई सिखा दो भाई डिस्कॉर्ड। भाई श्रेय पाटिल अगर आप हो, प्लीज यार आप मुझे मैसेज करिए, वील ट्राई एंड फाइंड आउट द टाइम। ही हैड सेट अप डिस्कॉर्ड, बिग अप टू श्रेय पाटिल, प्रथमेश भाई, आप अगर देख रहे हो भाई, डिस्कॉर्ड जिसको भी आता है, अगर आपके पास फ्री टाइम है, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए और साथ में करते हैं, सिखा दो मुझे थोड़ा बहुत, और मैं आता हूँ डेफिनेटली भाई। एवरीडे वी आर लर्निंग, ऑल ऑफ अस। लेकिन लेट्स गेट बैक टू द फुटबॉल यार। तो फाइनली यार मैं तो बोलता हूँ, आई डोंट नो, स्पेन स्पेन कर लेगी यार, आई थिंक कर लेगी, मतलब आई डोंट थिंक इट विल बी अ सरप्राइज। लेकिन अगेन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, एज मच एज स्पेन हैज बिन द फॉर्म टीम, आप बोल सकते हो, अभी क्या सोच रहे होंगे यार वो सेंटर बैक जो है ना स्पेन के स्क्वाड में। हाँ, टीम, इट्स अ टीम स्पोर्ट एंड ऑल दैट, लेकिन व्हाट विल द सेंटर बैक्स बी थिंकिंग? एरिक गार्सिया, क्या सोच रहे होंगे? उनको एक मौका भी नहीं मिला यार, सरप्राइजिंग, आई डोंट नो। मेरे लिए सरप्राइजिंग है, सच में बोलूं तो इट इज सरप्राइजिंग। हाँ, अगेन पाउ टोरेस एंड लपोर्ट का रोटेशन इज फाइन, बट आई डोंट नो, समवेयर डाउन द लाइन मुझे लगता है दैट दे हैव मिस्ड आउट ऑन एरिक गार्सिया। लगता है कि रॉड्री ही कैन ऑफर यू मोर इन मिडफील्ड, और अगर कोई बेटर स्ट्राइकिंग फोर्स आती है, रॉड्री इन डिफेंस, आई स्टिल हैव माय डाउट्स, स्पेशली जब एस्पिलिक्वेटा आपके नेक्स्ट खेल रहे हैं, या हो सकता है एस्पिलिक्वेटा अभी खेल रहे हैं, राउंड ऑफ 16 में डेफिनेटली कारवाल आ जाए वापस, वो हो सकता है, आई डोंट नो। आप लोग बोलिए, वीडियो अग्री, लेकिन आई थिंक दे शुड गेट इट। कमाडा बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है यार फॉर जापान। आई थिंक अगर कमाडा अच्छा खेलते हैं, अगर उनके सब्स्टिट्यूट इम्पैक्ट देते हैं जो हुआ था अगेंस्ट जर्मनी, देन अ सरप्राइज कैन हैपन, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं। डोआन है, आपके असानो आए थे, फिर रिमेंबर राइट, मिनामिनो कैन कम, मिटोमा कैन कम। भाई काफी ऑप्शंस है जापान के पास भी, ऐसे नहीं है, लेकिन स्पेन ऑब्वियसली हैज मोर ऑप्शंस। लेकिन जर्मनी, फॉर पीपल जॉइनिंग लेट, लेट मी नो। meanwhile let me take a couple of comments more. Rodri सेंटर बैक, हाँ यार वही है। अच्छा, एक ही जी भी किए थे क्या? चलो बात करते हैं, उनसे भी करते हैं। डू यू थिंक अर्जेंटीना पाथ टू सेमी इज कंपैरेटिवली इजियर? यार ऑस्ट्रेलिया है, आई नो, देन इजी कैसे बोले यार लीडा, मेरी टीम है नेदरलैंड्स। भाई नेदरलैंड्स देखो बहुत हगी है यार, इतना बोल देता हूँ, अलॉन्ग विद अर्जेंटीना खुद, ब्राजील, या अलॉन्ग विद ब्राजील, अर्जेंटीना, नेदरलैंड्स हैव बीन द फॉर्म टीम कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप। आप देखो, प्रॉपर मैं बोल रहा हूँ, अलॉन्ग विद अर्जेंटीना एंड ब्राजील, दे हैव बीन द फॉर्म टीम। कनाडा बोल सकते हो आर्ग्यूबली, लेकिन अगेन कनाडा डिडंट डू वेल, लेकिन वो, कम ऑन, दे वर प्लेइंग फर्स्ट वर्ल्ड कप इतने सालों बाद में, तो यू कैन अंडरस्टैंड। आई फील इट विल नॉट बी इजी नेदरलैंड्स, लेकिन हाँ, अगर वो टर्न अप नहीं होते तो इट बी इजी, सिंपल एज दैट, अज्यूमिंग कि अर्जेंटीना जीते अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। फेवरेट फॉर्मेशन एंड वाई? विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट, विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट, अनमोलदीप सिंह, बढ़िया पूछा आपने। भाई हम जब भी सोचते हैं ना अबाउट प्लेयर्स, अबाउट फुटबॉल, मेरा सबसे पहले चीज मैं बोलता हूँ, मैं कहीं भी होता हूँ, आप लोग मानोगे नहीं मानोगे, आप लोग भी बहुत करते होंगे, मैं जब बस स्टॉप में होता था, मैं जब बेसिकली जस्ट वॉकिंग करता था, मैं अकेला जब भी होता था ना, सबसे पहले मेरे मन में क्या चलती रहती थी? मेरे मन में चलती रहती थी मेरी जो फेवरेट टीम ना, उसकी बेसिकली नेक्स्ट फॉर्मेशन क्या होगी, मेरे कौन से प्लेयर्स कहाँ खेलेंगे। और मैं हमेशा देखता था बाय डिफॉल्ट 4-3-3, 4-3-3 मेरा है यार। क्यों? वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स रॉबिन हैज प्लेज इन दैट फॉर्मेशन, मेरे लिए ही वाज अ फैंटास्टिक प्लेयर इन दैट फॉर्मेशन। और नॉट जस्ट हिम, जनरली प्राइम मोरिनियो के एरा में वी प्लेड अ 4-3-3, आल्सो आर्गुएबली अ 4-4-2 डायमंड, आई डोंट माइंड, विद मे बी एक एंचेलोटी काइंड ऑफ सिस्टम, वो भी अच्छा था काफी। बट हाँ, थर्ड में जाऊंगा क्रिसमस ट्री फॉर्मेशन, बहुत सरप्राइजिंगली, वो है 4-3-2-1,
4-3-2-1, जो आर्ग्युबली अर्जेंटीना खेल सकती है यार, अर्जेंटीना रॉकी बट अर्जेंटीना खेल सकती है 4-3-2-1। यहाँ पर आई थिंक मिलान, आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मिलान, फॉर पीपल नो काका फैन हूँ, तो मिलान जो खेलती थी अंडर एंचेलोटी, दैट इज वन थिंग। लेकिन हाँ, क्विकली जर्मनी के मैच के बारे में अगर मैं एंड करने से पहले मैं बोलूं, तो अगेन रिमेंबर, जर्मनी हैज टू विन, जर्मनी हैज टू विन। भाई उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज जापान कोस्टारिका 3-3 पॉइंट्स है, याद रखिए दोनों। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोस्टारिका के साथ दे विल बी लिटिल बिट मोर अटैकिंग, बट गोइंग बाय दिस, आर दे अटैकिंग? प्रॉब्ली यस, बिकॉज किमिक मतलब हाँ, ही प्लेड एज अ राइट बैक, भाई लेकिन आप सब जानते हो उसका प्राइमरी ट्रेड आज के दिन में मिडफील्डर, तो वो खेल रहे हैं राइट बैक, ठीक है, यू नॉट गोइंग विद द केरर, बट एट द सेम टाइम आप जा रहे हो मुलर, यू नॉट गोइंग फुल क्रूग, थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। हो सकता है बिकॉज साने, मुलर, मुसियाला, गनाबरी, गोरेट्स्का साथ में खेलते हैं, इसलिए ही स्टार्टिंग विद दैट, थोड़ा सरप्राइज हूं। लेकिन अगेन जर्मनी विल बीट कोस्टा रिका, लेट्स बी ऑनेस्ट। 3-0 मैं गया हूं, आई थिंक विद दिस फॉर्मेशन दैट्स व्हाट आई विल गो। आई एम नॉट सीइंग भाई कोस्टा रिका स्कोरिंग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आई नो रूइज है उनके ब्रायन रूइज द एक्सपीरियंस गाय, जोएल कैम्बल स्टार्ट कर रहे हैं, बट नो, जर्मनी के पास है ज्यादा लोग यार, या वो मुकुकू, या वो फुल क्रूग, हो जाएगा यार। आई होप मारियो गोट से नहीं आया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम एज वेल। आपको क्या लगता है जर्मनी डिजर्व करती है क्वालिफाई? डिजर्व श्रेयस, व्हाट इज डिजर्व? व्हाट इज डिजर्व? मतलब आप अगर सेक्सी फुटबॉल खेलो तो आप डिजर्व करते हो? आई डोंट अग्री विद दैट लॉजिक इटसेल्फ। मतलब विद ऑल क्या बोलते हैं, मतलब आप हर एक ऑप्शन रख सकते हो कि आपको ऐसा फुटबॉल अच्छा लगता है दिखना, फेयर इनफ, लेकिन जर्मनी, आप अगर देखो उनका डिफेंस, जापान के साथ 2 मोमेंट्स थे उनके, उसके अलावा पहले 6 मिनट 60 मिनट्स में दे डिड वेल। एंड फिर स्पेन, भाई आर्गुबली द टीम ऑफ द टूर्नामेंट आप बोल सकते थे आफ्टर दैट कोस्टा रिका परफॉर्मेंस, तो दे गॉट अ ड्रॉ यार, तो आई थिंक दे डिजर्व इट बेस्ड ऑन दैट इटसेल्फ। नहीं, साने एक्स फैक्टर हो सकता है आज, बिल्कुल। Yes, Timo Werner, I saw that. Timo Werner, what do you think about that? नहीं, I think he'll be fine. I feel he'll be fine. काफी रेस्ट हो गया है, hopefully for Germany's sake. So back three, किमिक मिड में आएगा ना बाद में? हाँ यार, देखते हैं, मतलब it's a possibility, but I would not say that it's a surety. लेकिन it's a possibility. अभी अभी के लिए देखते हैं, मतलब I feel that Kimmich will be at right back itself, because Raum, I don't see him kind of playing a back three or a wing back formation really. तो मुझे वो लगता है दैट्स ऑन लेफ्ट बैक, दैट इज। अंकित भाई, आपको क्या लगता है? ये तो ले लिए थे हम, बुलर विल बी बेटर अगेंस्ट लो ब्लॉक, आई गेस। डू यू थिंक सो? नहीं यार, आई एक्चुअली डोंट थिंक सो। हाँ, व्हाट आई वुड से इज मुलर होल्ड्स द बॉल बेटर, तो इसलिए इज देयर, तो दैट विल हेल्प सर्टेनली, विद मुसियाला बीइंग देयर, इट हेल्प्स। डिफेंसिवली वर्स्ट टीम, ओके, या व्हाट्स हैपेंड टू कमाडा, ही हैजंट परफॉर्म्ड एट अप टू द मार्क। नहीं यार, सॉलिड वर्क तो किया है, ऐसा नहीं है, मतलब याद रखिए दैट अ लॉट ऑफ इट डजंट गो थ्रू कमाडा, जापान का विंग्स आर द मेन। आप देखिए इवन इन जर्मनी उनका आउटलेट था राइट बैक, रिमेंबर, इवन जो गोल आया था, सेकंड गोल, इट केम फ्रॉम दैट साइड। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट विंग्स आर मेन फॉर जापान। तो अगेन मिटोमा कमिंग ऑन, मिनोमिनो कमिंग ऑन, टोमियासु कमिंग ऑन, दोज आर योर अटैक्स। कमाडा इज लिटिल बिट मोर सेंट्रल इन द अटैकिंग स्पेस, तो वो इज समवन दैट ही इज लाइक, हाउ डू एक्सप्लेन, ही इज लाइक अ De Bruyne ऑफ बेल्जियम, बट ही डजंट डू दैट लेवल ऑफ प्ले, उनका उनका गेम प्ले अलग है। यार क्रिकेट का तो अभी बात नहीं करेंगे, टीम ओनर, हम आएंगे क्रिकेट में। आई नो लॉट ऑफ थिंग्स बीन पेंडिंग ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट प्लस, डोंट वरी अबाउट इट। वहां पर हम फुटबॉल भी करते हैं, फॉर पीपल वंडरिंग, यस, जर्मनी लैक्स स्पेस इन विंग, स्पेशली विंग बैक, दे डोंट हैव विंग बैक्स, दैट्स अ प्रॉब्लम, है ही नहीं यार। वुड यू से क्लॉस्टरमैन, केरर, किमिक, मे बी, यस, हु इज दैट राइट विंग बैक ब्रो, हु इज दैट इन द जर्मनी स्क्वाड? वो प्रॉब्लम है, that they are getting only 2 days before round of 16। हाँ, ये मैंने सुना है लीडा, ये मैंने सुना है, पता नहीं यार, मतलब they say it balances out, if the team goes further it balances out, अब पता नहीं क्या होगा, I don't know, it's like आपको अगर अभी मेहनत नहीं करनी यार, तो बेसिकली बाद में क्या करोगे टाइप ऑफ थिंग, बट हाँ, मतलब अनफेयर बोल सकते हो, समटाइम्स यू कैन आल्सो से दैट इट्स गुड, क्योंकि यार आपके पास एक मोमेंटम है, यू हैव गॉट अ ब्रिलियंट विक्ट्री अगेंस्ट पोलैंड, तो व्हाई नॉट?
बिल्कुल श्रेयस, मैं देखा और क्वाइट डिजर्विंगली सो यार, ही शुड हैव डन दैट मच बिफोर, सच में बोलूं तो। भाई अगेन काफी लोग जुड़ गए, 12 बज गए आज के, तो मेरे 12 भी बजने वाले बिकॉज लाइक आई सेड, मैं 6 मेडिसिन ले रहा हूँ दिन का, एंड आई नीड टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट, तो मैं रेस्ट लेकर मैच देखूंगा। आप लोग भी देखना, लेकिन मैं जाते जाते एक चीज मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, फ्री जर्सी यार, फ्री जर्सी भूलना मत। सब लोग भाई, काफी लोग ने स्टोरी नहीं डाला यार, स्टोरी डाल दो मुझे टैग करके, क्या हो रहा है, स्टोरी डाल दो, बहुत ही सिंपल सा है। आप लोग को सब एलिजिबिलिटी है भाई, सब लोग को, इट्स नॉट जस्ट फॉर मेंबर्स, दिस वन इज फॉर एवरीवन, एवरी ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर ऑफ ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, ठीक है। ये है, मैं अभी पोस्ट किया हूँ 3 घंटे पहले ऑन माई इंस्टाग्राम, उसका है हैंडल ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, आप चेक कर सकते हो। वहां पर स्पेशल गिव अवे की इंस्ट्रक्शन है, आपको खाली प्रेडिक्ट करना है हु इज योर विनर ऑफ द वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन, runner up as well as third. Put a story with this photo and tag sportshub.in and Almighty Blues FC. All the correct entries on December 19th will go into a draw and the correct one will get a free jersey. ठीक है, और ये फ्री जर्सी होगा बढ़िया क्वालिटी फ्रॉम sportshub.in, और आप मेरे पीछे देख रहे हो नेदरलैंड्स का जर्सी, ब्रांड न्यू वन, वो लोग ने दिया है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है, लेट मी टेल यू। एंड शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ये वाला स्ट्रीम भी, एब्सोल्युटली। हाँ, मैं भी काफी सरप्राइज हूँ यार, लेकिन कोई नहीं, देखते यू नो लुइस एनरिके हाउ इज। हबिन हाय यार, मैं तो जा रहा हूँ, वी वर डूइंग द अर्लियर मैच, प्री मैच वॉच अलोंग किया है, इसका प्री मैच कर लिया हमने। और यस, मेरे प्रेडिक्शंस फॉर पीपल जॉइनिंग लेट, अगेन जर्मनी टू बीट कोस्टा 3-0, जापान अनफॉर्चुनेटली लूज अगेंस्ट स्पेन 2-1, क्लोज में बोल रहा हूँ वाला, बट विद दैट क्या होगा, ये होगा कि जर्मनी विल गो सेकंड, स्पेन विल गो फर्स्ट, और वो है ही फर्स्ट, एंड दैट मींस दैट अगर वो होता है तो स्पेन खेलेगी क्रोएशिया, रिपीट ऑफ द यूरोज राउंड ऑफ 16, जहां तक मुझे याद है, राइट। एंड जापान, सॉरी मोरक्को, मोरक्को जो फर्स्ट चाहिए, वाओ, दैट विल प्ले द सेकंड टीम विच आई एम प्रेडिक्टिंग जर्मनी। आप लोग भी अपना बोलिए, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हाँ, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा, मोरक्को माजरावी प्लेइंग अगेंस्ट जर्मनी, वाओ, इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, 2-1 एंड 3-0, इंटरेस्टिंग। जर्सी किसका मिलेगा, जो आप चाहोगे मिलेगा यार, मतलब जो भी अवेलेबिलिटी है बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। तो आप डेफिनेटली जाइए यार, इट कैन बी एनी क्लब जर्सी, इट कैन बी इंटरनेशनल जर्सी, इंटरनेशनली कर रहे हैं अभी अभी के लिए, लेकिन दैट्स हाउ इट इज। हाँ बिल्कुल यार, श्रेयस रेस्ट ही कर रहे हैं अभी। चलो यार, अभी के लिए इतना ही है। अगेन आई होप कि 250 लाइक्स हो गए हो, 6500 सब्सक्राइबर्स हो गए हो, कितने हो यार देखते हैं। भाई जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, मैं बोलता हूँ भाई सब्सक्रिप्शन फ्री है, मेंबरशिप डेफिनेटली इज समथिंग दैट यू कैन चूज वेदर यू हैव इट और नॉट, लेकिन हाँ मेंबरशिप के लिए काफी पर्क्स है, उस पर भी हम आएंगे इन फ्यूचर स्ट्रीम्स। यू ऑल नो दैट मेंबर्स, वी ऑल लव यू एज वेल एज एवरी मॉड एज वेल, एंड ऑफ कोर्स एवरीवन एल्स एज वेल। तो भाई सब लोग कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, टू ऑलमाइटी स्पोर्ट प्लस एंड ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। खाली 168 लाइक्स हुए, ओके मैन, दैट्स एम्बैरसिंग भाई। 420 420 वोट्स आ गए, लेकिन भाई 170 लाइक्स भी नहीं आए, ये कैसे हो सकता है भाई। कोई नहीं, कोई नहीं, hopefully we'll get many. Nice to see you all. दानिश है भाई, I'll just take this last comment before going. दानिश भाई 3.25 घंटे से लाइव हो यार, अभी तबीयत भी 100% नहीं है बिकॉज ऑफ इंजरीज I've had, लेकिन हाँ, साने इज देयर बट किमिक नॉट स्टार्टिंग, व्हाट इज द रीजन। किमिक स्टार्ट कर रहा है यार, क्या बोल रहे हो, ही इज स्टार्टिंग एट राइट बैक दो, एक सेकेंड। हाँ किमिक स्टार्ट कर रहा है यार, मैं आप पता नहीं आप कौन सा वेबसाइट फॉलो कर रहे हो यार, मैं तो देख रहा हूँ कि स्टार्टिंग, बड़ी स्टार्टिंग एट राइट बैक लुक्स लाइक, अनलेस दे गो बैक 3। भाई मैं बोल रहा हूँ अटैकिंग लाइनअप है, विद किमिक प्रॉब्ली पुटिंग क्रॉसेस फॉर मुल्लर, साने प्रॉब्ली क्रिएटिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड विद मुसियाला, तो दैट्स हाउ इट इज फॉर रनिंग ग्नाब्री। तो अच्छा है, अटैकिंग लाइनअप है, लेकिन वही है, इट कैन बैकफायर अगर जोएल कैम्बल हैज हिज डे, यू नेवर नो। चांसेस कम है, इसलिए मैंने बोला है दे विल विन जर्मनी। चलो गुड नाइट यार, एब्सोल्युटली, कल मिलते हैं। और हाँ मैं रिव्यू करूंगा यार डेफिनेटली, वॉच आउट फॉर आवर रिव्यूज इन द मॉर्निंग, डोंट मिस आउट दैट पीपल, आई ब्रिंग ऑलवेज समथिंग इंटरेस्टिंग। चलो भाई, ऑल द बेस्ट टू स्पैन बोलो, स्पेन फैंस, जर्मनी फैंस, एंड ऑफ कोर्स आई होप फेलो एशियंस भाई, जापान, कोस्टारिका, क्या ही तो बोलो यार, लेट्स सी, मतलब ऑलरेडी उनको एक विन मिल गया है, बट भाई ग्रेट स्टफ बाय मोरक्को, ग्रेट स्टफ बाय मोरक्को, एब्सोल्युटली ग्रेट स्टफ मैं बोलता हूँ। क्रोएशिया वेल डन, कुड डू बेटर। बेल्जियम भाई सॉरी लुकाकू, दैट्स अ प्रॉब्लम। मोइन मैं डिनर कर रहा हूँ भाई, खाली करीबन 4 घंटे से लाइव हूँ,
Plus, I'm on medicines, bro. I need to take medicines after dinner. I'll be talking to you. Don't worry about it. आप पिंग करिए, मैं as soon as free हो मैं बात करता हूँ, ठीक है? No problem. And yes, we'll be watching the match as well. Absolutely. Chalo, see you tomorrow and see you in the videos. Bye.